and researcher. Basically, sir is Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery and Masters of Science in Yoga Therapy and PG Certificate in Acupuncture, Ayurveda Yoga Medicine. Under his guidance, Haryana YOG AAYOG organized 75 crore Surya Namaskar project, which has number of world records specifically to this particular project. Sir is also honored with state award in the field of yoga by Government of Rajasthan, and is also honored by eye donation services by the Government of Haryana, and also honored with the Haryana Gaurav Award. Again, number of honors sir has to his credit related particularly to yoga, and it's really a very, in fact, it's an honor for us to have such a dynamic personality with us, and we know that yoga is very important in today's life. The kind of stress we people are undergoing, yoga is really helpful in preventing number of disorders. So we are very privileged to have such dignitaries with us on this day, on the inaugural function of this international conference. Once again, thank you very much, and I welcome all the speakers who have spared their valuable time from various states of India, and also the local representative of various colleges. And a special thanks to all my students. I know they are undergoing a high level of stress because of their upcoming final examinations, and I'm sure you are going to learn many things which will really be helpful in preparing for your examination, final examinations. Thank you once again very much. Thank you, ma'am, for the great introduction of our dignitaries. Now, I would like to request Yogasana students to present a Yogasana demo. I would like to request Dr. Sukhpal ji to please join the dignitaries on the stage. Kindly play the music. तो बोलो हर हर हे
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते। Thank you, students, for the great performance. Now, I would like to request Dr. Jaideep Arya ji, Honorable Chairman of Haryana YOG AAYOG, to kindly share his views with us. Thank you, Dr. Jaspreet. We heartily welcome our Honorable Health Secretary and Additional Chief Secretary of Haryana Government, Dr. G. Nirupama ji. She is basically MBBS doctor, and she is having very keen interest in medical promotion and the promotion of the health, promotion of immunity activities, and she is a guiding force of health policies. She is the guiding force of our Ayush policies, and we are thankful. हरियाणा और पूरे देश से लगभग 500 लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम अपने साथ, क्योंकि आप जो कैमरास देख रहे हैं सब लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ ये मिलेट ईयर जो है, इसके पीछे एक बड़ा भाव ये था कि जो गट हेल्थ है इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। आज हम एक ही भोजन करते हैं, हम केवल या तो गेहूँ ही ले रहे हैं, तो गेहूं ही ले रहे हैं पूरी ज़िंदगी, और साउथ में बहुत ज़्यादा लोग राइस लेते हैं तो केवल राइस लेते हैं। आजकल श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज इस बात पर बहुत बल दिया उन्होंने पिछले 10 सालों में कि हमें मिला जुला खाना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। मिला जुला मतलब कि हमें कभी कभी मकई खानी चाहिए, बाजरा खाना चाहिए, जौ खाना चाहिए, ज्वार का प्रयोग करना चाहिए, परंतु हम उसका प्रयोग नहीं करते, और ये हमारे भारत की परंपरा रही है मिला जुला खाने की। तो हमने आज इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और गट हेल्थ को लेकर जो हमारी आंतों की हेल्थ है इसको लेकर हम क्या काम कर सकते हैं। मैं 2 बच्चों को आपके साथ शेयर करने के लिए बुलाऊंगा। ये हम योग इसमें क्या कर सकता है, नेचुरोपैथी इसमें क्या कर सकती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज की बात करते हैं, जो हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं, वो सब तो करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु हम ये ध्यान में रखें कि पानी की वजह से हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, भोजन की वजह से गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन का क्या मायने हैं, और वो डाइजेशन में हमारी योग क्या बेनिफिट कर सकता है। मैं 3 आसन आपको बताऊंगा, वो 3 आसन ये आपकी गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओनली 3 पोस्चर्स। हम बैठेंगे वज्रासन में, वज्रासन में बैठकर बैठो बैठो बैठो, वज्रासन जल्दी फास्ट, मंडूक आसन करेंगे। स्मिता जी हमारे साथ हैं, ये मंडूक आसन। अब ये मंडूक आसन करते हुए आपको दिखाई देता है छोटा सा आसन, परंतु आज नाउ अ डेज इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल, और इसमें रामबाण औषधि है। ये पहले हमारे पूर्वजों को भी पता था कि यहाँ पेनक्रियाज है। आज लोगों को लगता है पेनक्रियाज 200 साल पहले पता चला, 200 साल पहले नहीं पता चला पेनक्रियाज यहाँ पर है। हमारे फॉर फादर्स को मैं यूँ कह सकता हूँ कि कम से कम 20,000 साल पहले पता था कि पेनक्रियाज यहाँ है, और यहाँ पर यदि हम प्रेशर देंगे और इसकी मसाज करेंगे, इस ग्लैंड की मसाज करेंगे, इसकी सिक्रेशन होगी, तो आपकी डायबिटीज नहीं होने वाली। ये तब से इंडिकेटेड है, आज का ये आसन नहीं है। इसकी मतलब 10,000 साल पहले से टेक्स्ट में अवेलेबल है कि इस आसन को करने से मधुमेह नहीं होता, मधुमेह की प्रोटेक्शन होती है। वापिस एक आसन है जो हम खाना खाने की बात कर सकते हैं, वो है वज्रासन। यही आसन जो हम खाना खाने के तुरंत बात कर सकते हैं, जो आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, लेट जाएं। उत्तान पादासन, केवल 30 डिग्री पर हम अपने पाँव को उठा दें तो पेट के सारे रोग हम ठीक 30 डिग्री और कम करेंगे बेटा, और नीचे करेंगे गुड़िया पाँव का, और कम और कम और कम और कम, और बस। ये आसन यदि आपने कर लिया तो आपकी गट हेल्थ, ये अब आप हमारे नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी बहनें बैठी हैं, आपकी गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इरेगुलर डाइट लेती हैं, आपकी कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी इवनिंग शिफ्ट होती है, टाइमली भोजन नहीं कर पाती, और आपके पेशेंट्स को आप कैसे सर्व कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, और ये करने के बाद आपकी आंत की कोई समस्या नहीं हो सकती।
कितनी इफेक्टिव है ये आप करके देख सकते हैं, है ना। ये मतलब कुछ छोटे से आसन, वापस दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। अब ये इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। अब हम यदि गट हेल्थ की बात करें तो इसमें डिजीजेज कौन सी होती हैं, हम बात करेंगे तो हम गैस होना, ये लक्षण है गट हेल्थ का डिस्टर्ब होना। आपके माइक्रोब्स डिस्टर्ब हैं, वायरस से डिस्टर्ब हो गया, आपका बैक्टीरिया डिस्टर्ब है, तो आपको एसिडिटी हो रही है, ये शुरुआत है उसकी। और उसके बाद यदि आपको डायसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ये आपके लक्षण है। परंतु स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आपकी एसिडिटी से, गैस से, और उसमें हाईली इफेक्टिव ये आसन है, इसे हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। तो मैंने 3 आसन अभी आपको करके दिखाए। और यदि हम इसमें बात करें तो कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हम इसमें बहुत इफेक्टिव मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे बहुत से विद्वान वक्ता हमारे बीच में हैं, आज के लिए मैं इतना ही समय ले पाऊंगा, फिर शाम को हम आपके साथ फिर बात करेंगे। और मैडम सुखपाल जी से निवेदन है कि थोड़ा सा स्थान वो आपके लिए, हमें पता है, परंतु आपका प्रेम ऐसा है कि सब लोग आपके एक बुलावे पर आए हैं, तो ये आपका तो ऑनर होना चाहिए, आप साथ रहें तो बहुत अच्छा है। एक बार हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि आज हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और अचीव किया है, उसके आदमी भानु जी भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और लास्ट में हम उनसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लेंगे। थैंक यू। Thank you, sir, for your divine words. Now, I would like to request Dr. Sapna Nandaji, Principal of Government College of Education, to share her views. Thank you, Dr. Jasprit. Our very distinguished chief guest, Madam Anupma ji, a very respected chief guest, sir, Dr. Dhawan ji, respected Madam Vandana ji, our very own Bhrata ji, Jaydeep Arya sir, Professor, very respected Professor Dr. Thakur ji, Dr. Mahinder Singh ji, and Madam Sukhpal ji, and very esteemed dignitaries and very lovely students. A very blessed morning to all present here. Sir, my heartful gratitude for such an honor on this international workshop. I am really indebted, and I would like to congratulate the organizers, both Haryana YOG AAYOG as well as National Institute of Nursing Education, for organizing such a wonderful workshop, such a wonderful conference on the theme Integrated Approach to Gut Health. Everyone speaks about cardiovascular health, renal health, neural health, skeletal health, but nobody talks about poor gut. Gut, our gastrointestinal tract, is responsible for overall health of the body. The whole process of starting from ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion, resulting in overall health of the body by providing energy for both voluntary and involuntary activities, by bodybuilding and maintenance, for regulating the various bodily functions of the body, and providing protection against various deficiency diseases, is accomplished through this poor gut. And no one talks about this. Is, I think, first conference which is talking about the gut health. इतने सारे सेमिनार्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस पे बात होती है। अभी 2 कॉन्फ्रेंसेस हमने रिसेंटली योग कॉलेज में की, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को लेके, डायबिटीज को लेके, कोविड को लेके, पर गट की बात बहुत कम होती है। सर, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर चूजिंग दिस वंडरफुल थीम ऑन गट हेल्थ. So gut, as you know, gastrointestinal tract, there are so many digestive disorders related to our gut, like जैसे सर ने बताया कि एसिड रिफ्लक्स है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, ऑल दीज लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक एसिड रिफ्लक्स है, एब्डोमिनल पेन है, देन ब्लीडिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं और साथ में मेंटल माइंड की हेल्थ से भी रिलेटेड हैं. ज़रा सा भी स्ट्रेस हो जाए, एंजाइटी हो जाए, नर्वसनेस है, टेंशन है, गट अपने आप बता देती है कि पेट लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, भूख मर गई है, एनोरेक्सिया है. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स गट से रिलेटेड हैं, नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल बट साइकोलॉजिकल.
So this is very apt topic, and to take care of our health, my only message is love your gut. How to love? Take balanced diet. मिला जुला आहार, जैसे सर ने बताया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वी आर सेलिब्रेटिंग एंड नोइंग द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, rich in fiber, antioxidants and many other nutrients. So we should take mixed diet, eat fresh, eat healthy, freshly cooked food. अगर योग की भाषा में कहा जाए तो सात्विक आहार लें. हमारा जो गट है और हमारे जो टीथ हैं वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि वो प्लांट फूड को बड़ी इजीली एक्सेप्ट करते हैं, एनिमल फूड के लिए नहीं बने. तो सात्विक आहार हो, ताज़ा पका हो, जो आपको प्राण शक्ति दे, जो आपको ऊर्जा दे, जो आपकी बॉडी को नरिश करे, सिर्फ शरीर को नहीं मन को भी नरिश करे, आपकी आत्मा को भी नरिश करे, ऐसा आहार लें. और जंक फूड से परहेज करें. आज यंग बच्चे बैठे हैं, सो जितने भी 3 पॉइजन्स जो हैं, वाइट पॉइजन, मैदा, शुगर एंड सॉल्ट. सो टेक दीज फूड्स इन मॉडरेशन. रेगुलर मील्स लें. अवॉइड स्किपिंग योर मील्स. मील पैटर्न आपका रेगुलर हो और संतुलित, पौष्टिक, सादा, ताज़ा और मिला जुला आहार लें. सो विद दीज वर्ड्स आई विश द ऑर्गेनाइजर्स a very successful conference and wish you all the best. Stay happy, stay healthy and stay blessed. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your valuable words. Now, I would like to request Dr. Mahinder, Principal of Government College of Yoga Education and Health, to share his views. Honorable Dr. G. Anupma, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Health, Haryana Government. Honorable Sri Sunil Kumar Ji, Honorable Sri Kumar Gaurav Ji, Deputy Director PGI, Professor Thakur Ji, HOD Department, Community Health, Principal Ma'am, Ma'am Sapna and Ma'am Vandana Ji, all the respected speakers from various places and delegates, a very good morning. I am really honored to be here today, a part of this international conference that is on theme Integrative Approach to Gut Health on the particular occasion of World Digestive Day. I also express my heartiest thanks to Ma'am Principal of this college, as well as Dr. Jaideep Arya Ji, Chairman Haryana YOG AAYOG. I think I have very little knowledge regarding particular this gut health, because all the speakers as well as our today chief guest is also from science background, I should say from medical side. But one thing, and all the speaker will also say something regarding guts. Dr. Jaideep Arya also told you the what kind of asana we have to adopt to maintain our gut health. Dr. Sapna also said what kind of diet we should intake. But I want to share one thing. Regarding this program, I congratulate to Ma'am Vardi Principal as well as Dr. S. Arya. Dr. Jaideep Arya, इनके बारे में 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा. I think there is 2 personalities in the field of yoga who promote the yoga education. One is Baba Ramdev, जो सभी जानते हैं, and second one is Dr. Jaideep Arya. Why I am saying this one? No doubt yoga was
already in our society, but बाबा रामदेव जी ने जो काम किया शायद वो किसी ने नहीं किया। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए डॉक्टर जयदीप आर्या, I think few years back a national body was constituted. I think Dr. Jaydeep Arya ji, secretary of particular this National Yogasan Federation. Or can you believe that now yoga is a part of sports, and every facility is given to the yoga player which are given to the other sports person. That credit goes to Dr. Jaydeep Arya. No doubt, you have already observed that by the PPT, what he did under the umbrella of Haryana YOG AAYOG. I think everybody observed. But I want to say, now Yogasan also part of sports. Number 2, now Yogasan include in every sports tournament, that may be at district level, that may be at national level, that may be at Khelo India. The coming 1st to 3rd May, the Khelo India will be organized in the Uttar Pradesh. Now Yogasan is also part of this tournament. One more thing, recently the Chandigarh Sports Department has announced the sports policy, and I am sharing with you that Yogasan is also part of that gradation policy. Now the students who adopt particular this Yogasan, they will also get a certificate from the Sports Department of Chandigarh administration. So all these events, all these activities or such kind of seminar or conference which was organized, there is a instrumental role of Dr. Jaydeep Arya. So I congratulate you, sir. Second thing, being a sports person, I am also basically a sports person. I want to urge the sitting audience, we should also adopt a sports activity in our routine life. That may be jogging, that may be cycling, or that may be yoga. जो आप योगा बोलते हो, योग, yogasans. Through these activities, one more example, sir, I will take 1 minutes more. I was sitting with a PGI doctor, he is my close friend. एक डिस्कशन के दौरान उन्होंने कहा कि बहुत से पेशेंट हैं जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, तो मैं उनको, जो पेशेंट है उनको सुजेस्ट करता हूं कि वो अपनी रूटीन, स्ट्रेसफुल रूटीन लाइफ में से 1 घंटा 2 घंटा निकाल के फिल्म देखने जाएं. Then I request to particular doctor, my dear friend, I want to correct you. If my suggestion is right, then you kindly adopt this suggestion. बोले what? इवेंट पे होगा, वो भी आपका एक स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट काइंडली नेक्स्ट टाइम एडवाइज adopt a particular sports or yogasan, not go to the theater. Apart from this, I should say some components. No doubt, sir has spoken regarding gut health, that is related some scientific components, microbiota, prebiotic, probiotic. I am not familiar particular these scientific term, but I should say some components if we adopt in our life, then 100% your gut health also improve. And these are fiber food, already millets food के बारे में बता दिया,
eat less sugar, do regular exercise, avoid unnecessary antibiotics, vegetarian diet, maximum जो मोटा अनाज जिसको कहते हैं, and do regular yogic exercise. Through these components, we can maintain our gut health. In the last, again I am thankful to principal of this college as well as Dr. Jaideep Arya ji, who provide me such opportunity to say something in front of learned person. Thank you very much. Jai Hind, Om. Thank you, sir, for your kind words. Now, I would like to request Dr. J.S. Thakurji, Head of Department of Public Health, PGI, to say a few words. डॉक्टर जी अनुपमा जी, श्री कुमार धवन, डॉक्टर जयदीप आर्या जी, डॉक्टर सुखपाल कौर, डॉक्टर सपना जी and Dr. Mahendra Singh, faculty and the students. At the outset, I am really thankful to Dr. Jaideep Arya for inviting me to this very important meeting on a very important topic on gut health. And the topic which has been chosen is very relevant, that is integrated approaches to gut health. We have been working with the Haryana YOG AAYOG for a couple of years, and the recent event which was shown here was on lifestyle diseases, which we had at Sector 17 with the Haryana YOG AAYOG on the occasion of International NCD Days. Now, coming to the gist of the problem, why we are having the problem of this gut health. So we need to think in terms of not only of health sector, but of three critical sectors, that is agriculture, food sciences, and this gut health. And if you see this agriculture, what has happened over a period of time. In fact, we are working on the problem of health effects of pesticide for the last 25 years. And based on our work, and right now we are doing a big study which is monitored by Supreme Court and funded by Indian Council of Medical Research, that is exposure and health effects of pesticide on Indian population. Now, what we have found that are all natural resources, air, water, soil, they has become toxic. And this is based on our work, and we are finalizing the report of this pan-India study. और ये शरीर जो था पंचभूतों से बना हुआ है, पंच तत्व की बात करते हैं. उन पंच तत्वों में एयर, वाटर, अर्थ, आकाश, अग्नि, इन सभी को हमने पोल्यूट कर दिया. और जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो ये कहाँ से आएगा? ये हॉस्पिटल से तो आएगा नहीं, ये आपके जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं उन्हीं से ही आया. और क्या हुआ कि ये जब हमारे हवा, पानी, धरती जब टॉक्सिक हो गए तो ऑल दीज टॉक्सिन्स आर एंटरिंग इनटू आवर फूड चेन. और जब फूड आपका टॉक्सिक हो गया, माताओं का दूध टॉक्सिक हो गया, पशुओं का दूध टॉक्सिक हो गया, and all these toxins are entering into our body, you will find a cocktail of chemicals, pesticides in your blood, in your serum, urine metabolites, and the evidence of genotoxicity. And if you see the gut problems, along with the lifestyle diseases, they are rising. If you take the example of, say, Haryana, 35% of the people are either overweight or obese, if we take the BMI of 25. Almost 26% are hypertensive. Every 6th person is diabetic.
Why all these problems are increasing? And if you see the gut health, this peptic ulcer, the stomach ulcer, the inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, celiac disease, right? All these diseases and related cancers, gallbladder cancer, liver cancer, and even colon cancer, which used to be very rare, they are all increasing. This is based on our work which we have done under our 4 cancer registries which we are running in the state of Punjab and Chandigarh. Now, if we have to think in terms of, so what has happened because of these things? We have disturbed 3 things. One is that glucose imbalance. Second is the hormonal imbalance. हमारे जो हार्मोन से many of these pesticides are endocrine disruptors. वो लेवल हमारा हो गया. आप 5 या 6 साल की बच्चियों को आप सुनोगे कि उनको महामारी शुरू हो गई. Precocious poverty, hirsutism, many common problems. Infertility is increasing among. And you know, all these problems based on some of the health effect studies which we have done, spontaneous abortion rates are very high, congenital defects are very high, right? And among children, their development is being affected. And the third thing which has happened, why our gut health has disturbed, the third element is of this microbiome which was there responsible for our gut has been disturbed. And there is a imbalance. So we have glucose imbalance, we have hormonal imbalance, and we have the microbiome which is there in the gut that has been imbalanced. Now, if we want to restore this health, we have to go to our traditions. And I am very thankful to our Prime Minister launching this year as the International Year of Millet. And if you see southern states, most of the millets is being produced in Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and most of this is coming. I was very surprised to know that 200 tons of millet every month is coming to Punjab from the southern states, despite being a agrarian state. So, I think we really need to see that what food we are taking is of what type, and उसके लिए what we can do to promote the gut health. हो सके तो एक अपना किचन गार्डन तैयार कीजिए, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कीजिए. या ज़मीन है आपके पास तो अपने आप किचन गार्डन लगाइए और उसमें नेचुरल और प्राकृतिक खेती करिए. मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होगी कि एक हमारा डॉक्टर्स का ग्रुप ने कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं. पिछले 3 सालों से हम उस खेती में बिल्कुल केमिकल यूज़ नहीं करते. दूसरी चीज़, ये जो आपके फास्ट फूड कल्चर है, इसने काफ़ी हमारे गट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाला है. तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका हमारे जो पुराने उपवास रखने का था, गट को तो रेस्ट देते ही नहीं, हम पूरा दिन खाते रहते हैं कुछ ना कुछ. आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं वो उनका लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है, खाना बहुत टाइम का खाते हैं. और पुराने लोग जो थे वो सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे. उसका एक साइंटिफिक बेसिस था कि आपकी गट को एक, आप जितने सोएंगे 2 घंटे का समय होना चाहिए आपके सोने और आपकी उसमें, है ना. सो ये जो कुछ एक चीज़ें हैं ये हमें करनी होगी. और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वी शुड कैच आर पॉपुलेशन यंग. स्कूल के जो बच्चे, अब आपकी आदतें तो बन गई. So school health is very important, and I am happy to share that we have a school health accreditation program where we have developed our standards, and schools are categorized into bronze, silver, gold and platinum. All Chandigarh schools are accredited as health promoting school. Madam is here. I will request you to consider this program in the Haryana school, and last year we make the presentation to the Chief Minister of Haryana, but this is not included. I am also very happy to say that under the leadership of Dr. Jaideep Arya, the yoga is now the part of the curriculum, school education curriculum. I think this is the first state in the country which is there. The last point which I would like to highlight, there is an old saying
जैसा अन्न वैसा मन। खुशी खुशी खाना खाओ जो आपको खुशी खुशी खिलाए, क्योंकि उसकी सारी रिफ्लेक्शन आपके मन पे है, उसकी आपके दिनचर्या के ऊपर है। और ऐसे घर में मत खाना खाओ जो आपको खुशी से ना खिलाए। आपकी बीवी यदि गुस्से में है तो अपने आप खाना बना लो, बट खुशी से बनाओ, वो आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करेगा। अदरवाइज ये जो गट की प्रॉब्लम है और गट माइक्रोबायोम को हमने डिस्टर्ब कर दिया हुआ है, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। और एक जो हमारी दही खाने की कंसेप्ट थी, फर्मेंटेड फूड, दे आर वेरी गुड। जो लोगों को थोड़ा मिलेट्स का पता है, मिलेट्स में एक अमली होती है, अमली एक फर्मेंटेड मिलेट्स खाने का जो तरीका है वो आपके बहुत अच्छा है। आपके 3 मेजर मिलेट्स हैं, 5 माइनर मिलेट्स हैं। इंसिडेंटली आज मुझे जो है एक नेशनल मिलेट मिशन बना हुआ है, उसी के रिलेशन में मैसूर जाना है और कौन कौन सी प्रोजेक्ट को करना है। ये एक पुराने फूड थे, ये हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, हम भूल गए, अब इनको पशुओं को खिला रहे हैं, हम अपने आप नहीं खा रहे। ये जो बाजरा था, ज्वार था, ठीक है, रागी थी, जो आपके मेजर मिलेट्स में आते हैं, और जो दूसरे हैं आपके लिटिल मिलेट है, फॉक्सटेल है, बर्नियार्ड मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम है, ये ग्लूटेन फ्री हैं, फाइबर कंटेंट बहुत है। और अब आपके देखे जो आपके हरियाणा में कुश्ती लड़ते हैं वो बाजरे की रोटी खाते थे, क्योंकि वो ताकत देता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं। तो हमें थोड़ा सा हमें पुरानी संस्कृति की तरफ और पुराने फूड हैबिट्स की तरफ जाना होगा, वो बहुत अच्छे हैं यदि आप अपनी गट हेल्थ को रिस्टोर करना चाहें। और मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि ये जो चावल और गेहूँ है, इसने हमारी गट हेल्थ को ख़राब कर दिया, और यदि आप छोड़ दो इसको तो बड़ी अच्छी बात है। पिछले 4-5 दिनों से मैंने इनको छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल में ये कुछ चंद चीज़ें। Thank you, sir, for sharing your theme-related knowledge. Now, I would like to request Vanna Disodia ji, Additional Director of Ayush Haryana, to say a few words. Good morning, everyone. Respected Madam G. Anupama ji, Jaideep Arya ji, other dignitaries on the dais, dear participants, media personnel. As we all know, the Department of Yoga, especially the Yoga AAYOG and the Department of Ayush, we are especially concerned about the health of the people, especially the students in general. We are making efforts to propagate the activities pertaining to yoga in the state of Haryana. It's a pleasure to let you all know that the Department of Ayush is spreading its activities by leaps and bounds, right from the upgradation in the infrastructure, that is the hospitals, dispensaries, PHCs. We are heading in number 1 in upgradation of the Panchkarma centers in the state. Also, the National Institute of Ayurveda, which is the 3rd in the country, is upcoming at Panchkula. It is a matter of great pride to share that. The first, it was in Jaipur, the second in Goa, and the 3rd at Panchkula. With these few words, I
once again thank the Chairman Yoga Ayog, Jaideep Arya ji, for giving me an opportunity to share my few thoughts. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your kind words. Now, I would like to request Shri Kumar Gaurav Dhawanji, IRS, Deputy Director, PGI Chandigarh, to say a few words. A round of applause for sir, please. किसी भी कॉन्फ्रेंस के ऑलमोस्ट एंड में जब आपको इनवाइट किया जाता है बुलाने के लिए, तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज ये है कि आई कैन ईजीली से कि अभी तक जो सबने कहा मैं उसको डिटो करता हूँ, एंड डिसएडवांटेज इज देयर इज़ हार्डली एनीथिंग लेफ्ट फॉर यू टू से। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ऑफ द डे मैडम जी अनुपमा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डॉक्टर जयदीप आर्या जी, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग, Professor J.S. Thakur from the Department of Community Medicine and School of Public Health, PGIMER, Mrs. Vandana, Additional Director Ayush, Dr. Sapna Nanda, Principal Government College of Education, Dr. Mahendra Singh, Principal Yoga College Sector 23, and of course Dr. Sukhpal Kaur, Principal 9. It's my proud privilege to be present here today, and I thank मैडम जसपाल कौर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे तो आज की थीम के बारे में, योग के बारे में डॉक्टर जयदीप आर्या जी ने, गट के बारे में डॉक्टर नंदा ने, डॉक्टर ठाकुर ने, डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बोल दिया है, और वैसे भी मैं दोनों चीज़ों के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए। तो मैं तो अपनी तरफ से आप सबको, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो हैं बेस्ट विशेस देता हूँ। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू learn a lot and benefit yourself from the experiences of these learned speakers who are going to share the dais after a short while. I would be missing listening to you, sirs, because I have some other commitments in the institute. My best wishes are always with the National Institute of Nursing Education, Dr. Sukhpal Kaur, and whenever you think we can be of any help from the administration side, you're most welcome. And my best wishes once again, and congratulations to you all. Thank you, sir, for your valuable thoughts. Now, I would like to request our Honorable Chief Guest, Dr. G. Anupama ji, to please share your words of wisdom with us. Shri Jaideep Arya ji, Chairman Haryana YOG AAYOG, Kumar Gaurav, the very dynamic Deputy Director of PGIMER, Dr. Sukhpal Kaur, the host, Dr. Thakur, Dr. Mahendra Singh, Vandana, and Dr. Sapna, distinguished academicians in the audience, students, and ladies and gentlemen. I'm very happy to be here today on this very contextual and relevant topic that we have chosen, gut health and an integrated approach to gut health. I must compliment the Yoga Ayog of Haryana for organizing this kind of a workshop and combining it with an academic institution of great excellence in the allopathic field, combining the Yoga Ayog, which is from the Ayush, and co-hosting with the allopathic institution itself shows how committed we are towards an integrated approach to health of community. As a medical doctor myself, as a practitioner of alternate healing, I have so much to say on this subject, but my predecessors have spoken a lot, and for paucity of time, I will not talk too much about importance of gut health and the integrated approach. But as the administrator, as the secretary of the department, I have few thoughts to share
Um, basically, India, Bharat rather, Indian, Bharat, our ancient knowledge, Ayurveda, we all know it is ancient knowledge. It is accepted as ancient knowledge. But it is a tragedy of modernization that we have begun to debunk our own ancient knowledge. Now a time has come, we are questioning what is the scientific evidence for that knowledge. The scientific evidence and empirical data and experimental research based methodologies are very recent phenomenon of modern science. But as we move in the timeline, so we have to live according to the days in which we are present. So the present day scientific context demands scientific research, empirically valid studies, and hypotheses which are concluded and brought to a conclusion. Therefore, the ancient study that we already have, the knowledge of Ayurveda, it's not that they would not have studied, but it is also a fact that all the yoga acharyas and siddhas and vaidyas of the ancient time had very high mind power. They had very high intuitive power. They had very high subtle knowledge, sukshma buddhi jo kehte hain, which we don't have at the moment. And it's unfortunate that we have substituted scientific, empirically valid research to that great knowledge of the mind. Whatever it is, we must move with the contextual times and the contemporary times, and therefore, all the knowledge, the ancient knowledge that we are practicing in the modern times must be valid through modern scientific research methodologies also. I'm very happy to inform you our Yoga Ayog has commissioned certain studies in the scientific methodologies, with the scientific methodologies, and I'll be happy if they commission more and more such research with this institution and other institutions and position this science, this ancient science of India, to the world as a contemporary science. It's not just in India, in many other countries in the world, several high-end researches are happening in all major universities across the world because they're aware of our knowledge but want to prove it, for want of a better word, that this is established, accept knowledge of the universe. Our ancient sciences, Ayurveda or any other science, or in fact our ancient sciences, what is it? It's talking about harmony between man and nature. Gut health, like all our predecessors have spoken, is harmony between man and nature, Purusha and Prakriti. We are not different. Prakriti is inside us, you are a part of Prakriti. It's just a beautiful, symbiotic, confluential relationship. And to keep that in harmony is what Ayurveda talks about, or rather Ayush talks about. For a human body to be in sync with nature, to move in sync with nature, so that the body is healthy and therefore the mind is very, very sound. Healthy body, sound mind is what we say. Dr. Thakur had just spoken about the modern day stress and how it is causing depletion of gut health. It is established, scientifically established. Why is it happening? Because we've disturbed basic symbiotic relationship, a harmonious relationship between body and nature. जब सूरज चुपता है, विश्राम करने का समय है. But we have opened these 24/7 call centers, multilateral timings. We work on global timing, so all our youngsters are working in the night when they should be resting. Obviously, the circadian rhythm is disturbed. It will cause hormonal disturbances. Young girls are subjected to so much of stress, they have to compete in a man's world, for want of a better word. There will be hormonal disturbances. Because what is the difference between man and woman? Just one hormone, by the way. We all have all other hormones equally, just one hormone is different between man and woman. That is what defines all the differences. A woman is supposed to compete in a man's world.
she is subjected to so much stress. Do we in our workspaces realize that women should be respected as women? They need their space, they need their respect. And why are youngsters or even most of us consuming fast food? Somebody mentioned fast food. That is again a result of the stressful life we lead, the pressure for time. Most women are working, they have to go to work, they have to cook for the family, they have to look after the household and then cater to everything. The easiest option is fast food. Order kar lo. Everything is a result of the way of life we are defining for ourselves. We have forgotten millets, we've taken to processed foods, we are eating polished rice. There is unpolished rice as well, which is much better than polished rice. But we are all eating polished rice, we are all eating polished wheat. Why? Because it fulfills commercial criteria. It is much faster, you mill them, it is much faster, it yields greater returns, it is better to sell them in the market. So the economic factors have compromised the health factors of the community. So for everything it is a cycle. Man and nature. If we start with that, someone, I think Dr. Thakur mentioned about domestic gardens, kitchen gardens. Start it small, it will grow big. You have to restore this nature between man and nature. In a recent conference in January, there was this national conference of chief secretaries in Delhi, all chief secretaries, where Prime Minister, I was also part of the delegation with our chief secretary. Prime Minister sat through the deliberations 2 full days on all the subjects, including health. On health, of course, there was deliberation about communicable diseases, maternal child health, and so on and so forth. But for me, the most important takeaway for health were 3 words. They said we must restore into our daily life, into our curriculum, into our thinking. हमारे जहन में बैठना चाहिए कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्तता. Daily routine. Good exercise, healthy food, healthy diet, good thoughts. Ritucharya, be in sync with the season. Now it is summer. In summer there are certain foods which are very cooling. Eat only those vegetables. Don't go for cabbage and cauliflower, which are off-season vegetables. They don't suit the body during this time. But we just forget. We have this commercial production. We go to the market, we just pick up stuff which is just not suited to that month. There are certain monthly kriyas, very simple kriyas. Ayush teaches us that in accordance with the season, the body must be taken to go through these kriyas so that there is balance. Sadvrittata, good thoughts, positive vibrations, be spiritual, be physically fit, mentally alert, and spiritually high. Connect yourself to the universe and the cosmic power. Draw and be aware that whatever you're doing, you are a reflection of the cosmic power. It's all there within you. And if I talk of gut, in Telugu we have a saying, it is called Annam Parabrahma Swarupam. Anna is food, Parabrahma Swarupam. So be conscious of what you're eating. Don't eat overcooked, stale, processed, fried, deep fried, those kind of foods. Be very conscious because what you're putting in is like taking in divine energy. At the same time, the importance of Ekadasi fasting or fasting in the name of several vratas and so on and so forth, which we do, it's all about conditioning the body and giving it rest, giving the gut a little bit of rest. Again another saying, Lankanam Paramaushadam. Lankanam is fasting. Paramaushadam. If you fast, that is the best medicine. Give rest to the gut. That's about it. It's all about, these are all things, knowledge which are there, which is within the families. Our grandparents, our elders, our ancestors are telling us, but we are not listening. We are not listening because we are busy with Netflix and YouTube and WhatsApp and Instagram and fast food and all artificially created pressures of life. We have to slow down. We have to slow down, think, look within,
and try to reprioritize my life, my health, my body, my soul. Your body is healthy, your mind is healthy. Your mind is healthy, the soul is healthy. The soul is healthy, you are in touch directly with the cosmic power. Draw that energy. That infinite cosmic energy is what drives all of us. But we tend to forget in this modern day rush. So I am very grateful that the School of Nursing Education has taken this initiative instead of any medical college. In fact, nurses, the greatest symbols of service, more than doctors. I so truly value what nurses do. Day, night, 24 hours, whatever pain, anything. The doctors come, prescribe and go. It is the nurse who's giving the care, the highest form of caregivers. I'm really so very pleased, Dr. Kaur, that you have taken this initiative, and I wish the very best to your students. And I do hope that you also commission certain scientific studies and take Indian medicine forward. As a doctor, I was also secretary of medical education department till very recently. And I used to tell in all my medical colleges in the hospital kitchen, I would say start the day with ash gourd juice, petha ka juice. The healthiest form of gut cleanser. The healthiest form. ज़्यादा सोचना ही नहीं है. हर पेशेंट को सुबह जो है पेठे का जूस पिलाओ. उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. क्यों आर्या जी, यू विल बेयर मी आउट, यू विल बेयर मी आउट. ये किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा. सेकेंड, सुबह सुबह उठ के वार्ड में डॉक्टर के लिए हम वेट कर रहे हैं. डॉक्टर साहब थिएटर में हैं या ओपीडी करके फिर राउंड्स में आएंगे. पेशेंट एंड अटेंडेंट ऑल जस्ट सिटिंग आइडल. या तो कोई फोन देख रहे हैं या सिटिंग आइडल. कोई एक इंस्ट्रक्टर को वार्ड में ही खड़ा कर दो, प्राणायाम कराओ, और कुछ नहीं, नथिंग. पेशेंट को भी अटेंडेंट को भी ये इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, हानि तो है ही नहीं. दिस इज रियल इंटीग्रेशन. डाइट, पेशेंट को हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट. जस्ट ऐड an Ayush consultant to add foods which are in sync with the nature of the body of that patient. Individual bodies are different ना, भगवान ने हम सभी को अलग अलग तरीके से बनाए हैं. So what suits the body of that patient should be added. That is all. They are small modifications. They are all there in the universe with us. वही सब्जी है. जिसको बीन सूट करता है, हो सकता है अगले को नहीं सूट करता हो. जिनको चना सूट करता है अगले को नहीं करता हो. That an Ayush specialist, Ayush dietitian will be able to very easily tell. उनके जस्ट सिम्टम्स हिस्ट्री लेकर के वो बता देंगे उनको जो खाना सूट करता है. हमारे डाइट चार्ट में वो इंक्लूड करना है. एज सिंपल एज दैट. Not only in hospitals, these things I'm saying everywhere it is possible. Just खड़े खड़े simple breathing exercise कर लिया. Why waste time? Just do that, no? That's all. Simple meditation. You're sitting, somebody should be there, put some light commentary, put them, lead them through a small little of, even शवासन कर लो. हम लोग स्कूल कॉलेज में जब थे शवासन बड़े शौक करते थे. But आज के तारीख के स्ट्रेस के लिए, the amount of stress youngsters are, they are all having sleep disturbances. Now there is a specialization, super specialization called sleep medicine. लो, तो आप उनको जस्ट शवासन ही करा दो. Instant stress release. So this is where integration of our own knowledge contextualized to modern day problems in sync with the modern medicine. That is all we have to do. We have to sit together, we have to think together, and we have to move together. I have a lot more to say, but I do have some other appointments and I don't want to keep you all waiting too much. I once again congratulate all of you, the participants here and the organizers, for this very well thought of, very relevant contemporary topic on which you've organized this workshop today. I do hope the rest of the lectures will be very, very meaningful, all of you, and you will have wonderful takeaways which you will put into practice in your life. Thank you very much for making me a part of this day. Grateful. Thank you, ma'am. We are so grateful to you for sharing your divine thoughts.
Now, let's proceed with the felicitation ceremony. I would like to request Mr. Alok Kumar ji from Golden Book of World Record to present a world record made during the 75 lakh Surya Namaskar project by Haryana YOG AAYOG. Now, I would like to request Dr. Jaideep Arya ji and Dr. Sukhpal Kaur ji to please present the award to our honorable chief guest. A round of applause for the guest, please. Dr. Harish Chandra ji and Dr. Naresh sir ji, please join the dignitaries on the stage. One representative from Patanjali and Bharati Yoga Sansthan, please join us on the stage. Isha Arya ji from Patanjali, please join us on the stage. आज की कॉन्फ्रेंस का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो सेशन था वो मैडम जी निरुपमा जी का लेक्चर था। और एक बार आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टैंड अप एंड गिव हर ए स्टैंडिंग ओवेशन फॉर सच ए स्पिरिचुअल वाइब्रेंट विजडमफुल स्पीच। तो डॉक्टर जी निरुपमा जी, शी इज ए स्पिरिचुअल सोल। आई ऑलरेडी सेड दैट I always feel a very positive vibrations with her. Give her a good round of applause again from 9 Yoga department, from Akshay ji and Dr. Sukhpal ji and our director sir and our deputy director sir along with Haryana YOG AAYOG. So, I would like to request Dr. Jaideep Arya ji and Dr. Sukhpal ji to felicitate our honorable chief guest. Now, I would like to request Dr. Jaideep Arya ji and Dr. Sukhpal ji to felicitate our honorable chief guest. Now, I would like to request Dr. Jaideep Arya ji to please felicitate Shri Kumar Gaurav Dhawan ji. Then I would like to request Dr. Sukhpal Kaur ji to please felicitate Dr. Vandana Desodia ji, Additional Director of Ayush. Then I would like to request Dr. Harish Chandra ji to felicitate Dr. J.S. Thakur ji. Now I would like to request Dr. Harish Chandra ji to felicitate Dr. J.S. Thakur ji.
Now, I would like to request Harish sir to please felicitate Dr. J.S. Thakur. Now, I would like to request Dr. Jyoti Arya ji and Neena ji to felicitate Dr. Sapna Nanda. Now, I would like to request member of Haryana YOG AAYOG, Shri Naresh ji, to felicitate Mohinder sir. Now, I would like to request Naresh ji to felicitate Mohinder sir. Okay. Thank you everyone. Now we'll have 10 minutes tea break, and after 10 minutes our session will be start.
अभिवादन अभिवादन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन ओम ओम ओम
Hello. Sir, just a moment, we'll be starting. Just a moment. So we'll be starting with the speaker of the first session, and we have Dr. Anurag Varshne with us, and sir is going to be online with us. Right? So just talking a bit about the speaker, Dr. Anurag Varshne is currently leading Patanjali Research Institute as Vice President of Discovery and Development. Let's give him a big hand of applause. So he's a seasoned drug discovery and development professional with 22 years of research and managerial experience. He is PhD from the National Center of Biological Sciences, Bengaluru, and postdoctorate from Yale University of Medicine, USA, and MBA from हाँ शुरू तो कराइए अब मैं कर देता हूँ बाइंड अप आई एम वेटिंग देयर Over to you, sir. Dr. Anurag. For the sake of chairing this first session, I request Dr. Mahinder ji, Mr. Desraj ji, Krishna Goyal ji, Ish ji, Dr. Vinay ji, Dr. Atul ji to please join us on the dais. Please. And assistant Om ji, editor, you are not audible. Dainik Tribune, Arun Nethani ji is also with us. Please join us as a panelist also. From Delhi Doordarshan, this whole program is being covered, and we are thankful that the Tribune and all other press correspondents, those who are here, we are thankful to you for sparing this very, very precious time. And with us now, आपके पास आवाज आ रही है वार्ष्णे जी? Anurag Varshne ji, he is the one of the senior scientists of the world, and he is the pioneer of our research here in India, especially gut health is concerned, and he represents Patanjali Research Foundation from Haridwar, and he remained in USA for approximately 10 years and did studies and researches over there. Later on he came back and is serving the mother India. Over to Dr. Neena. Sir, I think we can ask Dr. Anurag to start his work, whatever he wants to talk to us. So over to you, please. ओके तो मैं शुरू करूं फिर
Yes, sir, please. यस सर शुरू कीजिए मैं कुछ अपनी स्लाइड शो कर रहा हूँ, क्या वो दिख रही हैं आपको? हाँ जी सर, दिख रही हैं. Are my slides visible to you? Yes. Om. Om. Om ji. Sir. ओम जी भाई. So, good noon, everyone. Thank you very much for this opportunity, and I appreciate the invite from Haryana YOG AAYOG, led by Dr. Jaideep Aryaji and the PGIMER Chandigarh, which has done a fantastic job of connecting this conference, which is focused more on integrated approach of gut health. So what I'll do, and I'm going to go very quickly about the efforts that we are putting it on for looking at the integration of various systems, and then trying to see how that can be taken it up for a holistic health, including the gut health. I work at Patanjali Research Foundation, and I'll take first 5 minutes to introduce the center and the institute where I work. So we are very blessed to be blessed by Param Shraddha Swamiji and Param Puj Acharji, whose blessings are there for us on a daily basis to guide the science that we have been focusing it on. So Patanjali Research Foundation was inaugurated in 2017, and these are the laboratories which have been set up to bridge the gap between the modern practice and our ancient medicinal knowledge, Ayurveda. These are probably one of the only kind state-of-the-art facilities to conduct the research on Ayurveda and yoga, top-of-the-line equipments, globally trained workforce, energize the research operations on daily basis. The mission of our center, the mission of our foundation is to improve the health and quality of life through research and innovation, and we do it by funneling the unstructured Ayurvedic and herbal information and the rich history of medicinal plant through a variety of filters, and our final target is to actually reach towards scientifically validated evidence-based medicinal system, and we would aim to get a very well characterized Ayurvedic herbal medicine, which would have an acceptability across the national boundaries of India and go beyond that as well. So our theme for reaching that target, our strategy has been based on 4 places: initiation, transition, actualization, and excellence. Right now we are at the stage of actualization, and we are aiming to go towards excellence, where there would be a universal acceptance of Ayurveda as a treatment modalities. Now, when we talk about research, research strength and accreditations become the core component. So Patanjali Research Foundation has pretty much everything which is required to conduct the research. We have NABL accreditations, the laboratories are certified by DSIR, there is a full-fledged animal house with CPC compliance. We have an herbarium which take care of all the documentation of the various plants that we work with. Our laboratories are biosafety level 2 compliance. We have institutional ethics committee for conducting clinical trials. Most of our trials are approved by that committee and also registered as CTRI. In addition, we have 250-bed Ayurvedic hospital with NABH accreditation and an attached approved Ayurvedic medical college with PG approval in 8 subjects. 2,500 medical doctors are on the rosters with Patanjali, and the daily footfall of close to 30,000 patients happen across the India. Now, when we talk about the foundation that we work with, it has multiple segments, and for the interest of time, I will skip this, but I want to just make you see that the one we're going to talk today is drug discovery and development. We have a dedicated herbal research and painting and herbarium section as well that we can talk on some other opportunity. Now, what we do at drug discovery and development. So we have basically 5 major themes within there.
in vivo biology, in vitro biology, herbal chemistry, and microbiology and clinical research. And what you see are just a glimpse of our infrastructure. And these are very well loaded and equipped laboratories where the research are being done on a daily basis at a really cutting edge. Now, our approach for the disease, our approach to look at the science have been driven by the disease-driven approach. For example, we are focusing more on the various diseases and trying to find out the number of test articles, number of Ayurvedic drugs, number of medicines that we can try there. So what you see, those numbers on the screen are actually the number of medicines that we have tested for those areas. For example, we have, let me get a cursor here. So we work on inflammation. We have close to 32 drugs that have been tested for these kind of diseases, metabolic disorders, cancer, neuroscience, and infectious diseases. So we have been working on that. The theme of the conference today is on gut. So I'm going to talk about how we can integrate the modern medical science with Ayurveda and how we can learn from each other to get things forward. So today I will talk about the gut disease that we have been focusing for the last 3.5 years or so. And the disease I'm going to talk today is ulcerative colitis. So ulcerative colitis is actually defined as a chronic inflammation of the colon that produces ulcers in the lining, and the condition is marked by cramps, loose discharge of pus, blood, and mucus. And this also has a linkage with the alternation of gut microbiota, which affects the immunity, and it plays a significant role on the etiology of the disease. What I have been seeing that ulcerative colitis is affected at the age close to 30 to 40 years in common, and there is a lot of relapse and remission that happens in the same disease too. If I see the epidemiology of ulcerative colitis, and there is a data for up to 2016, that it shows that it's very highly prevalent in Americas, in some part of Europe, Australia, and also now coming up very strongly in India as well. So this disease is universally spread out, largely linked with the basic inflammation, and sometimes also linked with the dietary habit of the people. And what types of ulcerative colitis we have. So depending what part of the colon is being affected, where you have more inflammation, you can classify them in the 5 major sections. And what are the symptoms? The major symptoms of ulcerative colitis are bloody stool, diarrhea, pain in the rectal areas, abdominal pain, constant urgency to go for defecation, weight loss, and fatigue. Generally, the reason that happens is actually linked with the variety of symptoms, but when you look for it, it also linked with the frequent fevers, dehydration, canker sores, eye pain, joint pain, anemia, because most of the time the food is not food is not reaching to the site as it should be. So general weakness happens. Nutritional deficiency comes up, and that comes in form of having a different kind of anemias, liver diseases, and the symptom, as we discussed earlier, mucus and pus in the stool. What are the current treatment options for ulcerative colitis? The first line is giving aminosalicylates, which are very common ones and given as a first line of defense in allopathic system. Sulfasalazine is the first one given. And then if that doesn't work, then we go towards corticosteroid, we go for immunomodulator later, and last line, if nothing works, then we go for colectomy. But those again has its own issues. Sometimes we have side effects, sometimes cancer, sometimes surgery is not so well tolerated. So these are the basic side effects or adverse effects, as we say, are being linked with the drugs which are being given for ulcerative colitis. And the list is not very exhaustive and is not very exclusive. These are the general things that have been seen, as you would see for most of the drugs that is going to affect the inflammation. So what we have there in Ayurveda. So that's where I'm start to come for it. So what happens that most of the drugs in Ayurveda which are given orally doesn't reach really into the final form to the part of the gut. That means the colon is the lower part of our gut where the drug has to reach in a right way. So most of the time the enemas are giving. That means there is a rectal delivery of the drugs, which sometimes has a patient compliance issue as well, and it cannot be done easily at home too. So the idea there was that we actually took a leaf out of the drug development divisions, drug development process at allopathic system, where there is a possibility of coating the tablets with a specific compound that will make it entry coated.
That would mean that we can coat the tablets that we have in Ayurveda, the extract that we have, and generate an entry-coated herbal medicine. And that has happened at the first time at Patanjali Research Foundation, where we have developed and well-characterized an entry-coated colograte tablet. So this tablet has polyherbal extract, total 7 of them, and which has a very well-defined anti-inflammatory capabilities. But what more important is that this tablet is very stable at the upper gut, that means at stomach, but it only dissolves when we go towards lower gut, specifically at the colon. So what we did, we actually combined the wisdom of Ayurveda with the modern science to get a modified release technology, which can become a proper case of taking a technology and integrating it together. And when I heard that this is the theme of the conference, I felt very excited because this seems like a nice case study to show that the integration of the technology also is as important as the pathy that we talk about it. So these are the components of colograte. As you can see, these 7 main plants which have been very well described in Ayurveda for taking care of the gut inflammation. First 2 are very well known. One is called Kutaj and second called Bale, which are the main component for the enema that has been given into the patients who have ulcerative colitis or IBD. Now, whenever we make any drug, any formulation, we actually prefer doing a very detailed chemistry. So the data you see on the screen right now, it's a ultra high performance liquid chromatography, UHPLC. And you can see that this drug, colograte, is loaded with the really good compounds. And we use those compounds and generated them as a signature marker that can be then taken up later for looking for various batches of the same drug and see whether same are present throughout or not. Now comes about that what is the whole theme about it. And so colograte has been formulated as an acid resistant, in other words, entry-coated tablet. So we all know that we have different pH system in our whole gut. In whole alimentary canal has a different pH system. So we start from pH 7, go up to pH 2 in the stomach, and later go back to pH and sometimes pH 7.5 in our small intestine and the large intestine. So if we make a tablet, for example, the blue part here, which is the main herbal component of a drug, and then coat them with an entry-coating material which will not dissolve at pH 2, which will remain stable here, we might be able to deliver the content of this drug towards the area where it should be reaching it first. With this hypothesis, we did the experiment, and the data is here on the screen. So this is a sort of a simulation experiment we did, where we generated various biological fluids at a very specific pH. And we capped these tablets, for example, this is a mouth phase, we capped the tablets at the simulated saliva, which has the right amount of mucin and amylase, and pH was 7. Since we keep the food in the mouth not more than 15 seconds, we kept it there for 15 seconds. And after 15 seconds, this is a photograph. That means the tablets were as intact as they should be. And from there, we pass them into a simulated gastric fluid, which has the right amount of hydrochloric acid, pepsin, and salts, and pH was 2.5. And as you can see, this was kept there for 2 hours, 120 minutes, which is the normal time for drug to pass through the gut, through the stomach. And there you can see the tablet did not dissolve at all. It remained stable there. And then later we pass the same tablets into a simulated small intestine fluid, which has the right amount of bile salts, lipases, and other salts. pH was 7.0. And as you can see, at the end of 120th minute, the whole tablet gets dissolved very well. And then what you could see very easily, that the availability of the components inside the tablets were there for whole cells to see. So we were very happy to see that the hypothesis we started with, where we integrated the drug formulation method from a modern science and complemented the science of Ayurveda, and we could generate something like that. Now, once we have that delivery, we got very excited. But can we then see a biological response for it? What you see on the right hand side is just the data to show that, what is the release time and how much was there and what was the time kinetics for the same release. So we could see that from the 60 minutes onwards, the release start to happen. Now here we see the biological response. In the next slide, if I can move. Now, once we found that we can get the colograte
release very well, then we start to see what are the biological response we can look into it. And the easy thing to do is to first look at the human macrophages, because these are the basic immune cells and they respond very well to any invasion of bacteria or virus. So we took LPS, which is the compound present on the coat of the bacteria, and then we actually hit them with these cells, THP cells, we hit them with LPS and also then co-treated with Colograte. And as you can see, if we measure the level of TNF-alpha, which is a very well-known cytokine, we can see that with LPS alone, there is a right amount of TNF-alpha release, but when we treat with Colograte, these start to decrease, and at 100 microgram per ml, there is a significant decay in the total amount of TNF-alpha released by THP cells. Similarly, we look for IL-6, which is one more cytokine that's like a master controller. There we saw a much stronger response. In addition, we also look for NF-kappa B, which is a transcription factor that controls the secretion of other cytokines, and we could see that in that case too, Colograte could actually reduce this and could actually show that yes, indeed, the components of Colograte are sufficient enough to have a basic anti-inflammatory response. So we could showcase, yes, indeed, what we saw is in the immune cells, but what happened in the intestinal cells. So we then moved towards a cell biology intestine and started to look in a human colorectal cells, ST29, and we did a very fancy experiment where we took the monocytes, which are there in the blood circulation, and see if those monocytes can adhere to the human colorectal cells. And we labeled those monocytes with some dye. By measuring the fluorescence, we could see it yes, indeed, the adhesion happened. And if that adhesion, which is a hallmark of cytokine-induced inflammation, can be controlled, that by using Colograte. So this experiment, I would like you to focus it here, where we are just looking for the adhesion of U937 cells, which are the monocyte, which are attached with human colorectal cells in presence of TNF-alpha. You could see there's a nice amount of adhesion happen from untreated control versus just the TNF-alpha. But when these are co-treated with Colograte, you could see the adhesion was going down in a dose-dependent manner. So that was a good marker. And from there, then we moved ahead and looked for various gene expression. One is being IL-8, which is interleukin, and we could show that indeed, yes, IL-8 level was also decreased by Colograte. Similarly, IL-1 beta also got decreased there too. And we also look for CXCL5, which is the gatekeeper protein for these kind of adhesion, and we could find, yes, indeed, the addition of Colograte decreased that expression too. Now, when we're looking into the other models which we do in our animal systems, we look for DSS, which is dextrose disodium sulfate, that causes a lot of huge damage to the human colon epithelial cells. So we then use the same insult to the cells. We took DSS and hit those CACO2 cells by DSS. And you see that addition of DSS caused a huge drop in the cell viability. The cells start to die. And then when these cells were co-treated with the intestinal phase digest of Colograte, we could see very nice recovery. That means the Colograte, which was digested in a simulated intestinal fluid, we could see that yes, indeed, the cell viability can be restituted. And that is linked very well with the ROS level, which is reactive oxygen species level, which is very well linked with the cell viability. So we could see in the situation when there was a lesser amount of viability, there was a more amount of reactive oxygen species. So we could see this rise in ROS can be decreased by Colograte, and which in turn get translated very well in the residue of the cell viability. So we could see together, yes, indeed, Colograte does what it's supposed to do in a various cells of a human system, which can be linked very well with the gut biology. And this is just a valuation of the drug when we make it. Let's see what's the diameter, thickness. This is more of a formulation parameter, but sometimes we have to show that. And this is the design of Colograte box that shows that this is probably the first Ayurvedic drug which has been entry-coated for a human use. So once we complete all this data, as usual, with the blessings of Acharya and Swamiji, we actually send it out for publications, and we are very happy to report that Colograte have been published in a very nice journal,
pharmaceuticals, where we could see that in this tablet indeed has an anti-inflammatory response in ulcerative colitis like in vitro models, and that modulate NF-kappa B centric signaling axis. So what I believe that this is actually a pretty good, strong case to show that integrations are possible for different pathies, different therapies, and combining the Ayurveda with allopathic systems, yoga with Ayurveda, and all crisscross things are possible. But at the same time, integration of evolving technologies, learning from each other also becomes very critical. So this is the small little case study I try to show that we strongly believe here at PRF that integration is a need of hour, which will take care of various chronic diseases. Gut diseases is one of them. So amalgamation of this ancient knowledge with the modern pharmaceutical technologies would be the right step in that direction. So with that, I would like to thank all of the people who are there in audience and the organizers again for giving me this opportunity to talk about the work that we have been doing at PRF. Thank you very much once more. Om. So if there are any questions, I would be happy to take those. I see a hand raised from Dr. Piyush Kant Mishra ji from Lucknow. If that's a question, I would be very happy to answer. Okay, right. Thank you, Dr. Sab. Your session is very good, but I want to know the symptoms of the ulcerative colitis and the remedies. What we will prefer in Ayurvedic, in terms of Ayurvedic medicines. I think that's a very relevant question. The symptoms are very well defined. I think in my earlier part of the presentation, I discussed about those. There is the first thing is that one sees a bloody stool, and which linked with the pain and the constant urge to defecate. And those symptoms, if for longer duration, lead to the inflammation of the gut. Now, the treatment that we go for is generally bale and kutaj. What we have done is we have taken the good component of those two herbs and combined with 5 more and generated a tablet which will deliver these herbs and their extract at the right place, at the site of action. So Cologrid, I believe, is a very strong option for taking care of the ulcerative colitis and other gut diseases like that. Okay. In preliminary stages, can we cure by Ayurvedic, or we have to go for English medicine? I think when we talk about integration, that means the option exists for both. So in integrated approach, I think the option should lie in the hand of the patient that what therapy they would like to do. Being an Ayurvedic researcher, I believe that the power of Ayurveda exists to actually take care of these diseases too. And if it is a starting of the disease, I'm sure that taking this medication to a given patient would have a therapeutic benefits. Okay. Thank you, Dr. Thank you very much. Pranam. Thank you very much, sir. Do we have any questions from the students? Yes. Yeah, sure. Sir, we have certain questions. Yes, you're audible. Now, yes. Suppose one patient is on
herbal diet, completely vegetarian diet, and the patient doesn't know that he is having this ulcerative colitis. Already he is on very soft and simple diet, the fruit diet, the salad diet, and the boiled veg diet, and not the harsh rajma chawal, kadi chawal and all these things and puri and chole. After 3 months, he complains about some blood in the in that fecal material, because he is under, or he or she is observing herself that there is some blood. Then she goes for the test, one proctoscopy, then endoscopy, and the third is again some cholesteroscopy, which takes a lot of time in itself in PGI, because the patient will be taking, the process will be taking maybe more than 1 month in getting the number, in getting the date done, whatever. Till then, how can we treat the patient? I think that's a very nice description of a case, and I'm sure most of the clinicians of Ayurveda and other field too would get benefit by such a good detailed explanation of the case. But what we have seen here at Patanjali, we get a lot of patients with the ulcerative colitis, IBDs, and Crohn's disease. There, the treatment starts from the point the first event is detected. That means when the first blood or the mucus is spotted in the feces, I think at that time treatment startment would be a very good idea. But again, I am a researcher. The clinician would be able to better judge this and advise what treatment should be given at what time. But thank you. It was a very nice question. Right. Should I repeat the question? Okay. Thank you, sir. Maybe I will be taking up the question in my. Sir. But whenever you talk about bleeding from any part of the body, now one of the slides that I have shown in my presentation is that for the colon there are about 13 reasons which that slide shows. But if we really go into the theory, there could be even more reasons for the cause of the bleeding from anywhere, from intestine, from your mouth, from your nose, from your urine. So whenever the bleeding occurs, it simply means there is something which is injuring our mucosa. It could be colon or any part of the body, maybe vagina or whatever is it. So what we as a clinician will be interested to know that what is causing bleeding. There is no treatment of bleeding. The treatment is of the underlying cause of the, for example, in hemorrhoids, which maybe majority of the population suffers, the cause may be constipation, which ultimately leads to collection of the blood in the hemorrhoidal pouches and the bleeding. Or it could be as serious a disease as a malignancy. So as a clinician, first of all, I have to, now you see, here is the importance of the history of the person when we examine the person. So we try to find out that what is the likely cause. So commonly people develop common infective diarrhea which have got bleeding, you give common medicines to them and it disappears, you do not need a colonoscopy. But whenever we are talking about ulcerative colitis or Crohn's disease or any, first of all, we need to establish the diagnosis. So unless you look at the mucosa, you take a biopsy from them, it's not possible at all to say what disease you are dealing, because I said you 13 की तो list मैंने वैसे दिखाई है, be 23 or 33 also. So now secondly, now I am dealing with lot of clients online consultation. In most of the developed countries, it takes 9 months, 1 year to even meet a super specialist. It's a wonderful country of India where you can go and meet a super specialist within hours and minutes. And if I clinically feel I need a colonoscopy, I'll do it tomorrow morning. Why 2 months or why 3 months? Tomorrow morning we'll do colonoscopy, we'll have a look, and at least we'll have an empirical impression whether it is ulcerative colitis, hemorrhoid, fissure, or it is a malignancy, or it is a simple amoebiasis. And we'll take a biopsy and within 2, 3, 4 days, we'll get the final diagnosis. Empirical treatment we will start tomorrow morning, and at least now we will start whatever we feel is now. Now patient is so severely anemic, his hemoglobin has fallen down, maybe he requires hospitalization, or there's nothing, he just had apprehension and anxiety. We'll reassure him, because he drink a lot of fluids, plenty of fluids, go कल सुबह देख लेंगे. So the things are not difficult. There's a very systematic way, and it can be diagnosed now very easily, and they can be
treated also very easily. I have a question to Dr. Anurag, please. Sir, you have talked about the ulcerative colitis and your research work is very good. My question is there any Ayurvedic approach towards the Crohn's disease? Kindly elaborate, please. We have done a similar research for the Crohn's disease as well, and the data is still under analysis. But I can tell you that colograte component has a good impact on that disease as well. The clinical investigations are going on, and we are also conducting clinical trial at 2 places. And of course, it will take almost a year to conclude. But the first preclinical data shows it really works very well there too. Okay, thank you, sir. I think any more questions we can take in the end, maybe the other speakers would cover in their content. So you can keep your questions and prepare for your exam, ulcerative colitis, right? Okay. We welcome our next speaker, Dr. Manjeet Singh, Trehan. इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्पीकर लें, किसी का फ़ोन रह गया कहीं पे, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो वी कैन ऑलवेज सी. द फोन इज़ विद मी. So, sir is presently the Additional Director, Internal Medicine, Physician and Gastrointestinal Endoscopist at Fortis Medicenter, Sector 11D, Chandigarh. And he is a consultant of Diet Insight Wellness Center. And he's done his MBBS from IGMC Shimla in 1987, MD Medicine from PGIMER Chandigarh, and senior residency also in internal medicine, rheumatology, hepatology at PGIMER Chandigarh. And sir has got so many publications, textbooks in neurosciences, chapters in books related to geriatrics and neurosciences, publications in national and international journals, and editor of a module on management of common conditions and emergencies, including first aid for IGNOU School of Health Sciences. And sir had been formerly the senior consultant, SMO, and teacher and guide for DNB medicine department at GMS Sector 16 Hospital, and nodal officer for district immunization officer, National Viral Hepatitis Control Program at Chandigarh, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, the main NCDs which we have, and National Tobacco Control Program. And sir has worked a lot during COVID period, so was quite on his toes running around. So he is the General Secretary at Chandigarh Physician Forum, former, and Chandigarh Panchkula Physician Forum Vice President, IMA Panchkula. And sir, we welcome you for your talk, and we would limit the time to 20 minutes, please. So thank you very much for inviting me for today's wonderful activity. So my topic is gut health, and I'll request the organizers that kindly point me out when my time is over. So regarding gut, I'll say that let us try to simplify the subject, making it complicated. Now somebody who's got a car needs to know the driving of the car, otherwise he will be leading to the accident. The same way, by God's gift, by default, at birth we get our gut, heart and liver and everything else. So it's better to understand in a simplified way, because for everybody, if you want to teach him a gastroenterology level of book, I think it will be very difficult. Life will become very difficult.
And indeed, the things are in fact simple. They are not very difficult also. So, but if we just go by the definition that good gut health is defined as the effective digestion and absorption of food, the absence of gastrointestinal illness, normal and stable intestinal microbiota, effective immune status, and a state of well-being with a normal quality of life. Now you see, in order to prove anything which is right or wrong, it takes years and sometimes decades and sometimes centuries. That is how the science evolves. It doesn't happen overnight. Something which I want to promote, which I have produced today, I can promote it as a business product, but in order to prove its worthfulness or its utility or in a scientific way, it may take years and years together. In the meantime, I can do a lot of business and I can make a lot of money also. So why I'm saying so is that now somehow we don't need to require to sort of sit into government buses, but when we were young, that was the only source of transportation. तो बस के अंदर लिखा होता था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. There's a lot of information and there's a huge amount of disinformation. So it's up to us that from where do we want to collect it and from where we want to restrict it and where do you want to see it with the eye of suspicion. And I also understand that majority of the friends sitting here are from the nursing profession, so my focus will be all of them. And you see, when we are in the medical profession, everybody in the society, for a good reason, they listen to us. Whether they follow us or not, it is up to them, but at least they take our opinion, they want to discuss. So sometimes our opinion value a lot. So thereby meaning that our value, our opinion should always be backed by a scientific information, educational component of it, not ki suni sunai baatein. So that is very important. And for that, what we are taught when you start your career in the first year professional student, we are taught the anatomy. Hum gut ki baat kare, what is esophagus, what is stomach, what is small intestine, how do they look like, how they are made, how do they work, how do the diseases come in pathology, we learn. How do we investigate, how do we reach at a conclusion, and how do we treat, and how they are likely. So that is what we have been taught, and the science is an ever-growing phenomena. So at one time MRI was not there, prior to that CT was not there, endoscopies were not there. So yes, we used to think something else 30 years, 40 years back. Now we understand, we have learnt more. So as the science involves, we also understand. So it is best for we people to learn the best possible. And if a question I do not know today, it will be very nice to honestly say कि कल मैं पढ़ के आऊँगा, कल दोबारा बात करेंगे. There's nothing wrong in that. Nobody knows everything on this earth. So going with that information, so as I said, there's a lot of misinformation is also. So this is a very common saying. I think we learned this story कि अगर कुछ अंधे लोगों के सामने हाथी आ जाए तो how will they explain the elephant? And that happens, and sometimes the person may be too confident that somebody who's seen the tummy, he will explain you that elephant is nothing like but is a wall. Because he has seen only the wall, he doesn't know the subject beyond that. And another person, depending upon whether he is at the leg or he is looking at the rope. So sometimes the little information or incomplete information, especially if the teacher is very authentic and very strong, that becomes a problem for all of us. So in fact, it is important. And when you want to talk about this elephant's knowledge, you see this is available when we talk about corporates, when we talk about very hard-working, intelligent villagers, where these various global citizens, they have shown from the Mongoloid look, from our religious preachers, and even the modern generation also. So if our information is incomplete, obviously, in order to keep our sort of whatever I have said, my ego should be set right. So whatever I will be saying, I'll be sticking to it. So, but it is important for all of us to go to the real cause of it, that what is, so if you see this, one of the things, that what all things can affect your gut health. So in fact, gut health is not a separate component or entity when we talk about health. Health, in fact, if your gut is okay, your tummy will be, your liver also has to be okay, your heart has to be okay, your body's other structures have to be okay, and your mind also has to be okay. अकेली esophagus बहुत बढ़िया और बाकी सबका बेड़ा गर्क हो गया, तो what is the purpose of that healthy esophagus? So gut health per se is not a very sort of compartmentalized or a single entity. So but all these things when you talk about sleep, probiotics, diets,
Now here I come that especially when you talk about, you go to literature, or these days the easily available literature is in your net. So when you talk about gut health, everybody will start talking about probiotics, or somebody else, whatever the product has to be sold. I don't say that probiotics are wrong or they are right, or everything has got a limit. Everything has got certain beauties, and there will be certain limitations. So yes, beauties of everything must be utilized, but if we think that one thing can do all the things, I think probably that may not be really true. So again, so much components. They talk about anxiety, they point out IBD, IBS, and various other diseases, and somebody may have a beautiful thing for. So this is another thing what I was finding, a lot of wellness people are there now these days in the market, because as one of our questions was कि PGI में तो 3 महीने लग जाएंगे. It's okay if there's a rush, a lot of rush is there, and investigation sometimes they may take time. So there will be a lot of people. So a lot of literature on this, lot of treatments for this. Yes, we do know, we had the previous lecture, there is an inflammation in the gut, certain diseases we know there can be leakage also, but sort of syndromes and leaky gut syndrome and all, lot of treatment. That's why I thought that all those chapters which are not written in our book should always be looked at with the suspicion, unless that are medical literature. So this is something to be written off. So very commonly used subjects in my home, in my friend circle, in all circles, आपका जी जिगर कमजोर है, आपका मैदा कमजोर है ना, और आपका मैदा ठीक से काम नहीं कर रहा, आपको मैं लिवर टॉनिक देता हूँ, हाजमा खराब हो गया, हाजमे की दवाई ले लो, धर्म पड़ गई है, ठीक है, नाभि हिलना अगेन, एंड इट इज इवन इन द यूरोपियन एंड वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो नेवल डिस्प्लेसमेंट. हम धर्म की बात करते हैं, दे टॉक अबाउट नेवल डिस्प्लेसमेंट, कॉडी गिर गई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गिव ए वंडरफुल मसाज टू सेट ऑल योर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सर्जरी किए बिना सारे ऑर्गन को सेट कर देते हैं, वो लिवर को भी सेट कर देते हैं, आपकी अम्बलाइकस को पता नहीं कहाँ से सेट करते हैं, जो कि सो लॉट ऑफ सच थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल in the market which are not the true medicine. Actually that is not the gut health, but yes, soda based thing. And there's a structure which I never found in my anatomy book, so this was one of the very different way to explain the anatomy which none of our anatomy professors could understand. So they will be having all sorts of things, but then it is important. So then another topic, gluten intolerance. It has become a रिवाज now. गेहूं बंद कर दो, दूध बंद कर दो. अगर उनसे if you ask that person, have you stopped your gluten? No, he would have not stopped it. And especially I'm saying that during last few years, I've come across so many people who sincerely agreed to the advice of गेहूं बंद कर दो without any reason, and they were really crying कि जी मैं तो चपाती और परोठा खाए मेरे को मुद्दतें हो गई हैं. And when we evaluated, there was no scientific reason to say that you have. Yes, gluten sensitivity is a known disease. It is a very well known disease, and we go to the extent to tell to the people कि अब जिंदगी भर आप गेहूं नहीं खाओगे. Yes, that entity exists, and we also tell them to go to the diet experts so that you get 100 alternatives also. अब गेहूं नहीं खाएंगे तो suicide थोड़ी करेंगे, but nature has given us so many other things also, so that does exist. But telling everybody, किसी को स्किन पे खारिश हो रही है, तेरी ये ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को छींके आ रही हैं, तो दिस सॉर्ट्स ऑफ मिसइंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर. व्हाई आई एम टॉकिंग सो इज कि दीज थिंग्स आर प्रेवलेंट. आई कम अक्रॉस एवरी डे in my practice. So when we talk about the common people, so will be there. So that is about this thing. So just coming a bit to a few of the organs when we talk about gut. So esophagus. So what are the risk factors? सबसे बड़ी बात जो definitely proven है worldwide is cancer, because it's a life threatening. Everybody is scared of it. A lot of data we have got over last decades or maybe centuries. So these are few of the things which we scientifically know. There is a cause and effect relationship. World over they have been studied. Any of you can start a data collection. You can work upon your people and you can prove it 100 times and 1000 times, the results come same. So that is what calls is the reproducibility. If you do the study, results are same. If I do the study, the results will be similar. So tobacco, alcohol, opium, hot drinks. Hot drinks means anything which is hot. ठीक है, which is burning your esophagus. Hot means it burns, so obviously irritation we know is a cause. Carbonated soft drinks which are so lovable to all of us, and even to the extent they say pickled vegetables. What is there wrong in the pickles? It is an irritation. But सारी दुनिया pickle खाती है, क्या सबको कैंसर हो गया? No. So it means there's a lot of biological predisposition also. We all are genetically different people. Somebody gets the diseases and somebody doesn't get the diseases. When we talk about the data, it is about how the society is behaving. क्या 100 esophagus खाने वालों में से
एक का ही पिक्कल की इशू थी, लेकिन 100 में से 99 की तो पिक्कल की हिस्ट्री थी, लेकिन जो 100 को नहीं था उनकी पिक्कल की, तो देन प्रोबेबली इट बिकम, इट डजंट मीन कि कल से अचार खाना बंद कर दो, दैट डजंट मीन, बट दीज आर द रिलेटिव रिस्पेक्ट। कोई एक आदमी है वो हल्की सी मिर्च खाता है ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है, एक बंदा 10 मिर्चें भी खा जाता है तो उसको कुछ भी नहीं होता। सो individual differences may be there, but these are the entities which have been so then very important part, low intake of fresh fruit and vegetables. This is related to almost most of the cancers, vitamins and mineral deficiencies. And then various medications like non-steroidal anti-inflammatory drugs, हम पेन किलर सारे ही लेते हैं, तो डज इट मीन पेन किलर बुरी होगी, वो तो मार्केट में बिकने नहीं चाहिए। सो सम मेनी टाइम पीपल विल से कि जी मेरे घुटने में दर्द हो रही, मेरे को क्या दोगे, पेन किलर तो नहीं दोगे। भैया पेन के लिए पेन की दवाई देंगे ना यार, मलेरिया के लिए मलेरिया की दवाई देंगे। सो पेन किलर्स आर नॉट बैड, इट इज समथिंग आई ऑलवेज से लाइक न्यूक्लियर एनर्जी। आप न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी चला सकते हो और न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो, इट इज द वे यू हैंडल इट। बट इन बियॉन्ड अ लिमिट और मे बी इन ए प्रीडिस्पोजन H2 receptor, the ranitidine, famotidine that we so commonly know, even they have been attributed, if you go back into literature, there's a scientific reasons to understand, but it doesn't mean you stop taking ranitidine, it is a life-saving drug wherever you need to take. So then various infections and various other chemical carcinogens and chronic gastroesophageal reflux, such a common problem, achalasia and gastric atrophy, medical people know these words, and certain occupation like silica and asbestosis. So how can we prevent? Obviously, we know the things which are bad. We know smoking is bad, tobacco is bad. They say alcohol can cause Sankadev very hot. Even there's a data from PGI regarding C esophagus that drinking very hot coffee or very hot tea can cause these types of issues. So again we come to liver because such commonly used कि आपका liver खराब है ना, such a wonderful and a beautiful organ 100 साल तक चलता है, इतनी जल्दी खराब भी नहीं होता। 2 बोतल दारू की पीने वाले पी जाते हैं, but it doesn't mean that is the right thing. So these organs have got a lot of reservoir with them, lot of reserve is there, even up to 80-90% function. So every now and then doesn't happen कि जी आपका जिगर खराब हो गया, आपका liver खराब हो गया, मैं liver tonic देता हूँ। So that is something very important to understand. And when we talk about risk factors, it is hepatitis B. It's about 100 times more common if you have got hepatitis B versus you don't. Hepatitis C, non-alcoholic fatty liver disease, that is obesity and diabetes, alcohol, certain fungal toxins, glycogen storage diseases, and certain other diseases also, including smoking. So how can you get prevention? So whatever the known viruses there, I think everybody in society in 2023 must be protected against hepatitis B because of vaccination. And anybody who's got these viruses, B or C chronic infection, they should immediately, they should be getting treatment from it. So again, when we talk about the colon, old age is a risk factor for the cancer. Yes, the more older we get, the more cancers we are likely to get. So that is a known factor with each and every cancer, most of the cancer I'll say, and so equally true with the colon. And certain, those people who have got a past history in them or family histories, inflammatory conditions, we were talking about ulcerative colitis, Crohn's disease. Yes, one of the reasons we want to treat ulcerative colitis very effectively is the prevention of the cancer. And then certain inherited syndromes, family history of colon cancers, and very important factors in day-to-day life. Okay, people may not be smoking, they may not be drinking alcohol, but not taking enough fruit, vegetable, salad itself is a risk factor. A sedentary lifestyle. Now, present scenario, IT jobs, various jobs, sitting for 10 hours, 12 hours, computer and all, yes, we have to do it for our bread and butter, for our profession. But in addition to that, we need a good amount of physical activity of diabetes per se, obesity, smoking, alcohol, various radiations, and how you can prevent. Again, the incriminating factors we need to avoid, the various preventable viral infections, vaccination should be taken, healthy life can be, we all should be leading healthy life. Today we are in a group from the yoga, and that is something beautiful thing we have inherited for centuries with us and excellently promoted in the last few decades. So that's a wonderful way to prevent all diseases, including these type of cancers. So symptoms of the colon cancer may be anything which is wrong with the colon. There's a bleeding, there's a constipation, there could be diarrhea. So whenever symptoms are going towards these organs and they are not responding to the usual day-to-day treatment, I think they must be investigated. So just last, I think maybe the slide I was talking about the GA bleed.
blood coming from the anus. So this is at least of a list of 13 diseases, which I said you probably still is incomplete list. And so unless you have looked into it, how do you know that what is causing bleeding? It's a very common saying, गर्मी हो गई, कल राती अंब खाया सी, मूंगफली खाई सी, नेजल ब्लीड है, कोई भी ब्लीड है, दे आर एट्रीब्यूटेड सो कॉल्ड गर्मी होगी. तो गर्मी का मेरे को तो पता है, जब थर्मामीटर में टेम्परेचर ज़्यादा दिखे वो मेरे को गर्म दिखता है, जब मैं फ्रिज में से चीज़ निकालता हूँ वो मेरे को ठंडी दिखती है. उससे ज़्यादा जो गर्मी और सर्दी है, दैट्स अगेन ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट समटाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड. So I will say that the things which are not scientifically validated. So when we come to gut health, ultimately what is important? Smoking, various form of tobacco, alcohol, various preventable virus like hepatitis B vaccination, exercise. Nothing can beat good exercise program. And I think everybody, right from the day a kid starts walking till the day he leaves this world, exercise should be part and parcel of our life. It could be yoga or it could be anything which you love or you do. And weight management is important. Then diet, I think our basic Indian diets, all Indian diets, और धार्मिक सभाओं में जाओ तो रूखे सूखे सिंपल भोजन की बात होती है. That's really the beauty of the health. And food hygiene. So means it should be, the commonly people go to शादी और a party जब क्या होता है तो क्या होता है कि उस दिन पनीर खा लिया था, नहीं कुछ नहीं, components are not important. It is the hygiene which is important. चाहे शादी में है चाहे 5 स्टार में, पता नहीं at the back end क्या हो रहा है. तो food hygiene then becomes important so that we can be prevented from this thing. So I think this is the last slide. मेरी वो thanks वाली कहीं चलेगी, but thank you very much everybody. So any quick question I can take. With all due regards to all existing, present and alternative system of medicine, we are here to learn from everybody. Anybody who's got good things must be shared. We all must learn from each other. हमें भी आज ये बातें कैसे पता चली, क्योंकि हमारे सारे टीचर्स ने सिखाई, सब लोग बताते थे, हम लोग यहाँ पे बैठ के सुनते थे, आज भी सुनते हैं. तो दैट इज द ब्यूटी. ऑल सिस्टम्स आर ग्रेट, बट वी ऑल मस्ट बी नोइंग आवर लिमिटेशंस ऑल्सो. जब हम भगवान बन जाते हैं ना, फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है. तो वी आर ह्यूमन बींग्स, यस वी हैव वाटर कैपेसिटीज, हमसे ऊपर कोई और भी होंगे, उनकी भी मदद लेंगे. रेफरल सिस्टम इज एन एक्सीलेंट सिस्टम. आई एम नॉट द एंड ऑफ द सिस्टम. So that all beauty should be investigated. But whenever the disease looks ferocious, it's a sort of troublesome, we should not be delaying in taking. When we talk about various cancer, the earliest we diagnose, the better is it. जल्दी पकड़ेंगे, क्योर हो जाएगा, जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी. थैंक यू. Heartiest thank to our Honorable Dr. Manjeet Singh जी. जितने अच्छे से आपने उसको कवर किया गट हेल्थ को, मुझे लगता है कि आनंद की स्थिति है. सब लोग बहुत आनंद में थे, समय रुक गया था. एक बार आप सबकी ओर से पुनः डॉक्टर मंजीत जी का बहुत बहुत अभिनंदन. और उन्होंने साइंटिफिक बेस्ड बात की है, और जो बात कही है वो बहुत गहरे तक है. चाहे वो स्मोकिंग और टोबैको की बात करते करते उन्होंने पूरे भोजन की पद्धति की बात की है, वेट की, और सबसे अच्छी बात कि हर रोज जीवन से लेकर अंतिम श्वास आपको अपनी मेंटेन करनी है, तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है. तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना, ये सबसे बड़ा एक पार्ट है जो गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है. और ये आप लोगों को पता है, जो व्यक्ति एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, और कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है उसकी गट हेल्थ. तो मुझे लगता है आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत अभिनंदन. और जो उन्होंने बात की तासीर की, कि तासीर कैसे, वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि कई बार आम गर्म होते हैं तो बिना गर्म पानी में रखे खाए जाते हैं तो हो जाती है नक्सीर. आ जाता है ये विषय, क्योंकि हमने देखा कि हम बचपन में माताएं सिर पे पानी की तो थोड़ा सा या बर्फ रख देती थी तो इफेक्ट होता था. बेल का भी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर वार्षिनी ने बात की, कुटज घनवटी की बात कर रहे थे, तो बेल बहुत इफेक्टिव है पेट के लिए. और दूसरी आपने बात की जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात है, तो जो हमारी गट है, जो स्टमक है, वो एक जैसा लगता है जैसे हमारी लौकी होती है. तो लौकी का उसका बड़ा इफेक्ट है, हाईली इफेक्टिव है लौकी. और उसका जूस, पेठा की बात आई कि पेठा गट हेल्थ को फिल्टर करता है, साफ करता है, बहुत हाईली इफेक्टिव है. और लीवर के लिए अभी डॉक्टर ज्योति हैं आपके साथ, अभी बात शेयर करेंगी. तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय त्रेहन जी. वैसे बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर त्रेहन का नाम. यदि हार्ट की बात की जाए तो हम डॉक्टर नरेश त्रेहन की बात सुना करते थे. तो अब मुझे लगता है कि हम गैस्ट्रो की जब बात करेंगे तो डॉक्टर मंजीत त्रेहन का नाम सबसे पहले आएगा. तो एक बार जोरदार अभिनंदन पुनः. थैंक यू सर. जो आपने बात कही एक्चुअली ना, क्योंकि
कुछ भाषाएं हमारी 500 साल पहले आई, फिर 10,000 साल, तो कई सारी चीज़ें ऐसे कि हम बात तो सेम ही कर रहे हैं, शायद हमें इंटीग्रेशन का सिर्फ इशू है. इट्स द लैंग्वेज में भी डिफरेंट, द वर्ड में भी डिफरेंट, द वे टू एक्सप्लेन में भी डिफरेंट, बट अल्टीमेटली तो प्रोबेबली ऑल ऑफ अस आर वर्किंग एंड प्रोबेबली देर आर सो मेनी ब्यूटीज विद अस जिनको शायद हमें और बढ़िया करके डाटा ला के दुनिया के सामने रखने की जरूरत है कि हमारे पास है. अब बड़ी बारी मैं बात करता हूँ कि पैरासीटामोल की गोली जिसने बनाई उसने अपने तक उसको सीमित नहीं रखा, ये सारी दवाइयाँ ओपन में आ गई. अब अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू से कि हम कॉमनली कहते हैं कि जी मेरी इस चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं है. हम फिजिक्स में एक चैप्टर था 7वीं 8वीं, इफ आई रिमेंबर द से, द ग्रास हैज गॉट नो कलर व्हेन नोबडी इज लुकिंग एट इट. तो अब अगर मैं किसी चीज़ का साइड इफेक्ट स्टडी ही ना करूं और मैं बोल दूं साइड इफेक्ट नहीं है, वो गलत बात है. अब जब भी एक ड्रग मार्केट में कोई भी वट एवर मे बी सिस्टम, तो द रूल इज कि वो पहले उसके एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, फिर जब पब्लिक में भी जाती है एंटायर डाटा इज कलेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रग फॉर वेट रिडक्शन केम, एक्सीलेंट वेट रिडक्शन, विद इन अ ईयर और 2 वी गॉट इट हैज गॉट ए हायर सुसाइडल टेंडेंसीज, सो इट शुड बी स्टॉप्ड, इट वॉज मार्केटेड. अब अगर किसी ने उस सुसाइड को रिलेट करने की बात ही ना, ग्लोबली ये डाटा आया एंड देन इट वॉज रियलाइज कि जितने लोगों ने ये गोली शुरू की थी उनमें कंपैरेटिवली सुसाइड बहुत ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू दो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लगता नहीं था. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ अस कि हमें अपनी बात को 24 कैरेट कहने से पहले मैं खुद 24 कैरेट उसको प्रूव करता हूँ. सारे बंदे देखो यार, चेक करो मिलावट तो नहीं है. तो जब मेरी बात 24 कैरेट है तो फिर मैं दुनिया के सामने छाती ठोक के उसको लाऊंगा और उसके बाद लेट एवरीबडी एक्सेप्टेड. तो दैट्स द ब्यूटी. तो हमें अगर साइड इफेक्ट किसी भी चीज़ का, और हमारी देखो जो हम खाना खाते हैं घर में, अभी वीट एलर्जी की हम बात कर रहे हैं, लोगों को दूध से इशू है, घी से इशू है, तेल से इशू है, मीठा हम दुनिया का बंद करने पे उतरे हुए इस समय. तो वो ईटेबल्स हैं, अगर उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं. जितनी दवाइयाँ हम सीरियस साइड इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके खुद के साइड इफेक्ट हो सकते हैं. हमारी बॉडी अपने ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑटोइम्यून डिजीज. तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में जिसका साइड इफेक्ट ना हो, शायद ढूंढना वो बड़ा मुश्किल होगा वो. तो बट नोइंग द साइड इफेक्ट्स मेक्स अस बेटर प्रिपेयर्ड. मेरी कार का साइड इफेक्ट है अगर मैंने उसको अनकंट्रोल्ड स्पीड पे चलाया, वही कार है जो पिछले 20 साल से मेरे को चंडीगढ़ में घुमा रही है, पर मैंने पंगा ले लिया, मैं बिना हेलमेट के ट्रैवल किया, तो उसी स्कूटर का साइड इफेक्ट हेड इंजरी हो सकता है. द ओनली थिंग इज दैट स्टडिंग दैट, knowing that side effects help us in better utilizing that armamentarium. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर मंजीत जी. जैसे उन्होंने कहा कि दूध भी ज़्यादा पिया जाए तो वो लैक्सेटिव का काम कर जाता है, पेट को खराब कर देगा. कोई चीज़ यदि बहुत अमृत भी लिया जाए ज़्यादा मात्रा में तो वो जहर का काम करता है, और जहर भी यदि सीमित मात्रा में लिया जाए होम्योपैथी में तो वो अमृत का काम करती है. तो मात्रा भी बहुत, उसकी कंपोजिशन, उसकी डोज भी बहुत इफेक्टिव है. तो आदरणीय डॉक्टर मंजीत जी ने बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूँ. एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, और जब हम बात करें तो डोज बेस्ड भी होनी चाहिए, और वो एज बेस्ड और डोज बेस्ड जब हम बात करते हैं तब जाके वो इफेक्टिव होती है. तो अब आप पहले लंच करना चाहते हैं या सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं? ठीक है, ओके, डन. तो एक बार हम जरा ऑनर करते हैं स्टेज पर, उसके बाद आप लंच के लिए जाइएगा. और एक अच्छी बात यह है डॉक्टर मंजीत सिंह जी, आपकी कोई ज़्यादा परिचय के मोहताज नहीं है. आदरणीय हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर सुखपाल, उनके हस्बैंड हैं. इस नाते भी एक बार जोरदार अभिनंदन. ये मैंने इसलिए बाद में बताया कि जब आप लोगों का आज है ना रिस्पॉन्स, उसके बाद मैंने बताया, आपके साथ शेयर किया. और हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनसे लिया, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी कॉन्फ्रेंस का लेवल बढ़ जाएगा. सो नाइस ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट. डबल तालियां. थैंक यू वेरी मच सर. वी वुड लाइक टू हैव डॉक्टर सुखपाल ऑल्सो. हाँ, कोरम पूरा करना है. ये इत्तेफाक की बात है कि सर मैडम के साथ एसोसिएटेड है एज हस्बैंड एंड वाइफ, पर कोरम तो कोरम है. साक्षी, कुलदीप है ऊपर क्या? लाइट्स ऑन कर. कुलदीप.
कुलदीप का नंबर है? Thank you. Thank you very much, ma'am. So, as per your request, we are breaking for lunch, जो कि हमारे शेड्यूल से थोड़ा हटके हो रहा है. So, sir, we join back after 30 minutes, right? हेलो, आपके लिए, आप हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, हमें बड़ा आनंद होगा। आप इसको भोजन को हमने बस आपके प्रसाद के लिए लिया है और आपको अच्छा लगेगा। हमने पता कि आपकी रूटीन की जो डाइट है वो आप नॉर्थ इंडियन लेते हैं, इसलिए हमने साउथ इंडियन डाइट रखी है आपके लिए। और बहुत अच्छे से फिर आपके लिए एक फलूदा कुल्फी भी रखी है। ये फोन अगर किसी का है तो प्लीज ले लीजिए। अच्छा, फोन करके पूछ, ठीक है, राइट राइट। सो वी ट्राई एंड कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर. All the students enjoy your food and the Faluda kulfi also.
Good afternoon to all of you. We are all fresh. नहीं आ रही? Students भी नहीं? किसी को नहीं नींद आ रही? Okay, I would like to request all the speakers of our session to be on the dais, please. Having Dr. Jyoti, Dr. Vinoy, Dr. Nancy, Dr. Anupama, Dr. Atul, Dr. Aruna, Dr. Pramod, अच्छा ये बाद में आएंगे, Mrs. Harvinder ऑनलाइन होंगे, and I will also request Dr. Jaideep to be on the stage with us and Dr. Sukhpal. फोन कर देना. So I would like to request Jaideep sir, if you want. Shall we start? And we will start with Dr. Nancy. Okay. So the next speaker we have is Dr. Jyoti with us. Dr. Jyoti has completed her BMS from Ayurvedic unit from Haryana. She did her master's in medicine from Patanjali University, and she is deals with the nutrition and dietetics center also, and she has a deep knowledge about the holistic approach of all disorders. So I invite ma'am to please deliver her lecture. Okay. Hi. Om and namaste to all of you. खाना खा के नींद अच्छी आती है ना, और इतना अच्छा खाना हो तो और अच्छी नींद आती है. क्यों? क्योंकि मन खुश होता है. लेकिन अभी नींद से जाग जाएंगे. यू ऑल आर नर्सिंग स्टूडेंट्स, और नर्सिस को सोना तो मतलब मना है, वो भी अपनी लाइफ में जितना ज़रूरी है उतना ही सो पाते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इसमें पार्ट लेने का मौका मिला, आप लोगों को जानने का मौका मिला. हरियाणा योग आयोग का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इसका पार्ट बनाया उन्होंने. और 9 कॉलेज, मुझे नहीं पता था 9 का अर्थ क्या है, तो आज मैंने देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन. So many thanks and salutes to all the nurses and to this profession. You are one of the pillars. हमारे आयुर्वेद में 4 चतुष्पाद माने गए हैं चिकित्सा के. उसमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या अच्छा होना जरूरी है.
उसमें एक माना गया कि वैद्य डॉक्टर जो है वो आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। दूसरा मेडिसिन्स, जो आपके हथियार हैं जो यूज़ कर रहे हो आप, मेडिसन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब अच्छे होने जरूरी हैं। पेशेंट का अच्छा होना जरूरी है कि वो आपकी बात सुने। और उसके बाद एक पिलर है परिचारक, मतलब नर्सिस का अच्छा होना जरूरी है ताकि हम रिजल्ट दे पाए मेडिसिन्स के। और जैसे वो कहते हैं ना कि देश के सीमा पर वो जवान लड़ रहे हैं तो हम आराम से सिटीजन्स जो हैं वो सो पाते हैं, उसी तरह अगर हमारी नर्सेज अच्छी ड्यूटी कर रही हैं तो डॉक्टर्स जो है वो थोड़ा सा आराम कर पाते हैं। देन वंस अगेन सैल्यूट्स टू यू एंड योर सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिव अप्रोच टू गट हेल्थ। बहुत कुछ आपने इसके बारे में सुना अभी तक, गट हेल्थ के बारे में, और आप सब लोग, मुझे अभी पता लगा बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग, तो आप सब लोग तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ हर एक के लिए, हर एक से कंसर्न है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति। आप तो उसे माइक्रोबायोटा या गट हेल्थ कह रहे हैं, सारी दुनिया जो नहीं पढ़ी लिखी वो भी इसी के पीछे ही चल रही है, गट हेल्थ के पीछे ही चल रही है। सुबह उठ के वो चलती है कि हमने ये कमाना है, उससे रोटी खानी है और फिर स्वस्थ रहने हैं। वो भी सोचता है कि ये खाने से मुझे दिक्कत हो रही है, रोग हो रही है, तो कल से ये नहीं खाना है। उसको नहीं पता गट हेल्थ उसकी खराब हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जो भी अनपढ़ है वो भी इसके पीछे चल रहा है और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसके पीछे चल रहे हैं। ये कहाँ से होगा आगे? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है हिपोक्रेट्स, उन्होंने भी कहा ऑल डिजीजेस बिगिंस इन द गट। और हमारे आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी तरह से कहा गया कि जो मंदाग्नि है वो सभी रोगों का कारण है। कोई ये हमने अलग अलग पैथीज बना दी, लेकिन एम क्या है? मनुष्य को स्वस्थ रखना। और पेशेंट को मतलब नहीं है कि उसको किससे स्वस्थ, वो जिससे स्वस्थ रहेगा वो उसको ऑप्ट करेगा। थ्योरी है पेशेंट को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है पहले तो, कि वो रोगी ना हो, रोग हो गया तो उसको स्वस्थ करना है। तो कितने साल पहले ही कह दिया था कि ऑल डिजीजेस बिगिंस इन द गट। उसके बाद उससे भी पहले, हिपोक्रेट्स से भी पहले, हमारे भगवत गीता में इतना अच्छा वर्णन है आहार का, विस्तृत वर्णन किया गया है। कोई ये नहीं कि एक श्लोक में भगवान जी ने बात कह दी, कि हम श्री कृष्ण ने बात कह दी कि भगवत गीता में कि आहार ऐसा होना चाहिए। उन्होंने पर्टिकुलर बताया सात्विक आहार कैसा होता है, राजसिक आहार, तामसिक आहार कैसा होता है, सभी क्लासिफिकेशंस दी। एक उन्होंने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टय कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुखा। वो कह रहा है कि दुखों का नाश करता है योग, लेकिन सिद्ध कब होगा योग? जब आपका कार्य ठीक होंगे, चेष्टा ठीक होगी, जब आपका सोने जागने का समय ठीक होगा, मतलब कि आपकी बॉडी की रिदम ठीक होगी, और जब आपका आहार विहार ठीक होगा, तब जाके योग सिद्ध होगा। और कुछ भी हो, हम लोग किसी भी रूप में योग करें, लेकिन योग जरूर करते हैं सब। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? आनंद को प्राप्त करना। वो हर एक के व्यक्ति का लेवल अलग हो सकता है आनंद का। किसी को भोजन खाया, डिजीज नहीं हुई, उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया, अगले दिन वो काम पे चला गया, वो ही उसकी आनंद वाली लाइफ है। उसको आप कब प्राप्त कर सकते हो? जब आपकी ये सारी चीजें, आहार विहार, चेष्टा, कर्म, स्वपन, सोना जागना, सब जो है वो योग से युक्त हो। तो ये नहीं कह सकते कि गट हेल्थ के प्रति हमारा ध्यान अभी गया या अब शुरू हुआ। वो तो शुरू से कब से कहा है। भगवत गीता का प्रमाण आपके आगे है, उसके बाद हिपोक्रेट्स का प्रमाण आपके आगे है, चरक का प्रमाण आपके आगे है, उसके बाद गट माइक्रोबायोटा अभी तक हमने पढ़ा है। ये क्या है सारा? The gut microbiota is a complex community of microorganisms that live in the digestive tract of human and other animals.
सभी के गट में, गट मतलब जो ओरल कैविटी से जीआई ट्रैक्ट है हमारा पूरा एनस तक, वहाँ पर जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज रहती हैं उनको गट माइक्रोबायोटा बोला जाता है। हमारे अंदर भी इतने जीवाणुओं का, इतने बैक्टीरियाज का, इतने फंजाइज का जीवन चल रहा है। और शुरू कब होता है ये? जब बच्चा जन्म लेता है, तब से हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने शुरू हो गए, तब से कॉलोनीज बननी शुरू हो गई, तब से अंदर जीवन चल रहा है। और ना वो भी हमें हानि नहीं पहुंचा रहे और हम भी, मतलब उनका भी कार्य चल रहा है और हमारा भी कार्य चल रहा है। अब आपके मुंह में कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा कि अच्छे वाले बैक्टीरिया मेरे अंदर जाएं और बेकार वाले नहीं जाएं। है कोई फिल्टर ऐसा? आपने तो भोजन खाया है, आप क्या चीज सुनिश्चित कर सकते हैं? आप चाहेंगे तो यही कि सारे अच्छे अच्छे ही जाएं, अच्छे बैक्टीरियाज मेरे अंदर जाएं, लेकिन वो जाएंगे कैसे? उनका रास्ता क्या है? वो तो जा ही रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन पानी पी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उसका रास्ता है फूड। आप खाना कैसा खाते हैं? आगे अगर हम चलें, इसमें हेल्दी गट क्यों जरूरी है? योर गट इज होम टू ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विच मेक्स अप योर माइक्रोबायोम. These bacteria play important role in supporting a healthy immune system, digestive health, mental health and weight. केवल खाना ही नहीं पचाते ये आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं, ये मेंटल हेल्थ देते हैं हमें। गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। और आप खुद ही देखिए कि जब हम खुश होते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो भी हमें खुशी मिलती है। हमारा खाना अभी खाते भी नहीं, हम देखते हैं या कहीं बन रहा है बहुत अच्छा खाना, स्मेल आ रही है, तभी हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अभी तो खाना हमारे पास आया नहीं, अभी हमने खाया नहीं है उसको। तो गट और ब्रेन का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो अटैच्ड है आपस में। The gut primary function is breaking down food and absorbing nutrients such as complex carbohydrates, fibers, other indigestible components that our body needs to function correctly. जो भी हम खाना खाते हैं उसको शरीर पे किस स्तर पर एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, वो काम जो है वो गट के बैक्टीरिया कुछ हद तक वो करते हैं। बाकी सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं, हर जगह सिक्रीशंस हैं, हर जगह हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, अलग अलग तरह के सिक्रीशंस हैं, पैंक्रियाटिक जूस है, सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस है, सभी का मिलके कार्य होता है। लेकिन जो गट बैक्टीरियाज हैं, एंड में जब खाना पहुंच जाता है वहाँ पे, तो वो उसको देखते हैं कि वो कैसे उसको आगे फीसिस तक लेके जाना है, क्या उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है। A healthy gut microbiome also can help to regulate metabolism and the accumulation of body fat. Importance क्या है इसकी? अभी मैंने वैसे ही पढ़ा, वो आपको support digestion and nutrient absorption, enhance immune system, regulate metabolism and weight management, influences mental health and brain function, protect against harmful pathogens. ये तो सारे काम कर ही रहे हैं माइक्रोबायोटा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग गट माइक्रोबायोटा, क्या क्या फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? एक बार फिर से कह रही हूँ कि हमारे अंदर जो गया माइक्रोबायोटा, उसको हम कोई बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी पे उसका असर कैसा हो ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा फूड हाइजेनिक हो, हमारा फूड समय पर लिया हुआ हो, हमारा फूड सही मात्रा में लिया हुआ हो, हमारा फूड का पाचन सही हुआ हो, पाक सही हुआ हो, बना सही तरीके से हुआ हो, हमारा फूड हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग हो। सबसे बड़ी बात, किसी की पित्त प्रकृति है, आप उसको दे दीजिए कुछ अजवाइन डाल के दे दीजिए, अदरक डाल के, तो उसका रोग बढ़ जाएगा। चाय पिलाते हैं सब, चाय पिला दो उसको तेज अदरक वाली,
वो कहेगी मुझे बीमार कर दिया, हाइपर एसिडिटी कर दी, और आपकी कफ प्रकृति है और आपको अदरक वाली चाय पिला दी किसी ने, तो आप 2 दुआएं और दोगे कि बहुत अच्छा किया। तो हमने सुनिश्चित क्या करना है कि हमारा भोजन जो है वो कैसे हो, और ये कोई अभी नहीं शुरू हुआ, ये हमारा पहले से है कि संस्कारित होना चाहिए। संस्कार मतलब उसको तड़का लगाना चाहिए, तड़का जो आजकल अलग अलग चीज़ों का होता है वो नहीं। भोजन तो वही सीमित है ना, हमारे पास चीज़ें दाल है, रोटी है, मिलेट्स हैं, फाइबर डाइट है और ग्लूटेन फ्री डाइट है। उसको बनाना क्या है, हमने अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग बनाना है। और किससे कैसे बनाएंगे जी? कुछ खाया था और जी पेट में दर्द हो गया या हाइपर एसिडिटी हो गई, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जी ओमिप्राजोल दे दिया, उद्रामृत वटी दे दी, रेंटिडिन दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ठीक करने के लिए दिया आपको, आप ठीक हो गए उससे। फिर उन्होंने कहा कि 5 डेज़ के लिए ले लेना, एच पाइलोरी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है आपके स्टमक में, तो वो 5 डेज़ के लिए आप ये ले लेना। पेशेंट को लगा बहुत अच्छा कि हाँ ले लिया है, और वो 5 डेज़ के बाद डॉक्टर के पास नहीं आया पूछने कि मुझे आगे लेना है या नहीं लेना है। उसको लगा ये तो ठीक है, एक ऑसिड खाओ और काम पे चलो। और जब उसने सालों साल ऐसा किया और जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स आए, फिर वो लगा खोजने की ये तो मैं खा रहा हूँ तो इसके कारण ये इफ़ेक्ट हो गया, और अब मैं जाता हूँ कोई और डॉक्टर ढूंढता हूँ या कोई और मेडिसिन ढूंढता हूँ। दिक्कत यहाँ पे है, हम मेडिसिन को मेडिसिन की तरह नहीं खाते, हम उसको फूड बना लेते हैं। और कई बार क्या करते हैं, आजकल इतनी जागरूकता के कारण हम फूड को मेडिसिन बना लेते हैं कि रोज हमें इतना ही खाना खाना है और इसी तरह का ही खाना है। तो उसका क्या इफेक्ट होता है, जब हम एक मात्रा निश्चित कर देते हैं, एक नियमित कंपोनेंट्स निश्चित कर देते हैं अपनी डाइट के, तो उससे अलग डाइट कहीं जाके लेते हैं तो हमें दिक्कत करती है। पेशेंट कह रहा था जी मैंने जी अपनी डाइट जो है इतनी रिड्यूस कर दी और मैं 6 महीने से यही डाइट खा रहा हूँ और अब मेरा वेट लॉस होना रुक नहीं रहा है और अब मुझे वजन बढ़ाना है, मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है। अब वो कुछ और खाता है तो उसको गैस एसिडिटी होने लग जाती। क्यों? क्योंकि उसके गट को आपने उसी वे में ढाल लिया है। आयुर्वेद में भी बेस क्या माना गया धातुएं शरीर में, जो भोजन खाते हैं हम रस वो मानते हैं, रस से आगे रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातुएं मानी गई हैं। भोजन क्या खाया आपने? रस लिया, उससे आपका रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, भोजन से ही तो बन रहा है हमारा शरीर। तो हमारा मेन ध्यान देने वाली चीज क्या है? भोजन, बेस एलिमेंट, रस कैसा हो हमारा, इस पे ध्यान देना जरूरी है। जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन, ये कहा गया, लेकिन आज क्या करते हैं हम? जैसा होगा मन वैसा खाएंगे अन्न। ध्यान अन्न पे था, अब ध्यान मन पे हो गया हमारा कि आज मन अच्छा है तो जाके पिज्जा बर्गर हमने खाना है, और वो एक दिन अच्छा लगा तो फिर रोज ही खाना है। हम लोग ऐसी कम्युनिटी में हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को। अगर हम सही गाइडलाइन देंगे तो पेशेंट भी सही होगा, वो अपने घर में जाके भी सबको बताएगा कि ये गाइडलाइन फॉलो करो। तो इसीलिए हम लोग जो बोलें वो कम से कम ऐसे बोलें कि ये नहीं कि आपने इतने सारे एंटासिड लिए थे, इसका तो ये परिणाम हो गया, अब आप ये उद्रामृत वटी खा लो, अब ठीक हो जाओगे। नहीं, आप अपना आहार ठीक करो, आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग आहार लो, और फिर कोई ज़रूरत पड़ती है, आप बीमार होते हो तो उसके लिए दवा लो, और दवा लो, एंटीबायोटिक लो, एंटासिड लो। गांव में तो इतने लोग, मतलब सदियां हो गई उन्हें एंटासिड खाते खाते, जितना वो एंटासिड की मेडिसिन खाते हैं उतना वो कैप्सूल का खोल भी खा जाते हैं। उसमें तो दवाई है, वो तो खा रहे हो, और जो वो बाकी खा रहे हो
वो दवाई इफेक्ट करेगी, लेकिन वो घोल इफेक्ट नहीं करेगा कहीं पे जाके, वो भी तो लॉन्ग टाइम से ले रहे हो तुम। हम कहते हैं घर में अजवाइन नमक ले लो, चूर्ण नहीं लेंगे जी, कोई गोली बना दो वो ले लेंगे। अरे रस चूर्ण जूस जो लेते हैं सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है जल्दी, तो जो चीज जिस फॉर्म में उसमें लूं। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी चीजें जानें कि हमारा फूड कैसा है। फूड तो बहुत मतलब, वो मेरे सामने वो डाइटिशियन मैम बैठी हैं तो मैं क्या कहूँ, कहीं अंत ही नहीं है। अब मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, तो हम लोग तो भूल ही गए थे मिलेट्स को। और बोलो हमारे फास्ट में क्या खिलाया जाता था, भी एक दिन खाना बंद कर दो मिलेट्स खाएंगे, क्या वो फलाहार खाएंगे? वो तो एकादशी तो हमारे हर उसमें चलती ही थी, हर धर्म में चलती थी कि फास्ट रखना है तो फल, ये गेहूं और चावल नहीं खाना। आप कहते हो दूध मत पियो, आप कहते हो गेहूं मत खाओ, आप कहते हो चावल मत खाओ। आजकल के बच्चे से पूछो कि वो छोटे होके बड़ा कैसे हुआ है, उसको तो आपने कभी मिलेट्स खिलाया ही नहीं। वो तो यही आपकी चीजें दूध आटा चावल पॉलिश्ड राइस जो आप खिला रहे हो, उसका माइक्रोबायोटा तो वैसा ही है फिर। और जो दूध जिससे हम जीवन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो दूध ही उसका फुल आहार होता है। अगर एक दो डिजीज ना हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, तो वो हमारे लिए घातक कैसे है? सिर्फ उसका समय लेने का हमने नहीं डिसाइड किया, सिर्फ उसकी प्रकृति डिसाइड नहीं की कि कैसे लेना है। कफ बढ़ा रहा है तो हल्दी वाला लेना है, पित्त बढ़ा रहा है तो नॉर्मल लेना है, गर्म नहीं लेना है। ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एलोपैथिक से, कोई आयुर्वेद से, कोई होम्योपैथ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपने अपनी रिसर्च, कोई कहना बहुत आसान है कि रेंटिडिन ले रहे हैं, जिसने रेंटिडिन की खोज की थी उसने कितनी मेहनत करी थी। हम सब अपनी अपनी रिसर्च रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी आगे सीख रहे हैं। और भी कोई नए जब रेंटिडिन आई थी तब ओमिप्राजोल नहीं पता था लोगों को। आज आम आदमी ऑसिड भी छोड़ के पेंटोप्राजोल पे आ गया, रेविप्राजोल पे आ गया। अब लास्ट में वाइंड अप करती हूँ कि आपके अंदर गट माइक्रोबायोटा बन गया, जो आप फूड जैसा लेते थे वैसा ही माइक्रोबायोटा बन गया। अब कोई तरीका है उसको दूर करने का, उसको चेंज करने का? वो कैसे करोगे? कोई गट की सर्जरी तो करवाओगे नहीं, या जाके क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, उसकी क्लींजिंग भी होती है। उपवास रखते हो आप, उपवास रखोगे तो क्या होगा? फास्टिंग से जो हमारे माइक्रोबायोटा, जिनको भोजन नहीं मिलेगा, जो हार्मफुल हैं या लाभदायक भी हैं, वो मर जाएंगे या बाहर जब निकल जाएंगे, नई कॉलोनीज डेवलप होंगी। तो इससे आप चेंज कर पाएंगे उसको। हमारे अंदर वमन, विरेचन, वस्ती, अलग अलग तरह की क्रियाएं, शंख प्रक्षालन करवाया जाता है। व्यक्ति को पानी पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, इतना पानी पिलाया जाता है उसको नमक डाल के या उसकी प्रकृति के अनुसार, कि बिल्कुल जो स्टूल जो होता है वो पानी जैसा जब तक आने लग जाए, जब तक पूरा गट क्लीन हो जाए तब तक उसकी क्लींजिंग करवाते हैं। लेकिन वो रोज नहीं करवाते। आप कहो कि ये कारण, ये तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। उसका समय नियत है कि इतने महीने में, 1 महीने में एक बार किसी को ज़्यादा दिक्कत है, नहीं तो 6 महीने में एक बार करनी है पूरी गट क्लींजिंग। और गट क्लींजिंग करके उसके बाद आपको डाइट भी देखनी है कि आप उसकी दोबारा जो गट की लेयर्स बन रही हैं, दोबारा जो कॉलोनीज उसमें डेवलप हो रही हैं, वो कैसी हो रही हैं। आपको कैसा फूड लेना है, आप जैसा फूड लेते जाएंगे वैसी कॉलोनीज अंदर डेवलप होती जाएंगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो फैक्टर्स हैं, जैसे डाइट है, हाई फाइबर डाइट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। क्या क्या चीज़ें जो है हमारी जो माइक्रोबायोटा को उसको इन्फ्लुएंस करती हैं या ठीक करती हैं। एंटीबायोटिक्स एंड मेडिकेशंस कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ गट माइक्रोबायोटा बाय किलिंग बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल बैक्टीरियाज।
लेकिन एंटीबायोटिक हम देते हैं, पाइलोरी लेवल ज़्यादा हो जाए तो एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। फिर वही बात है कि कितने दिन के लिए दी जाती हैं, कितने डोज में दी जाती हैं, उसके बाद उनको बंद करना होता है, ऑमिट करना होता है। Stress induced change in gut microbiota can contribute to gastrointestinal disorders and immune system dysregulation. Exercise. Regular physical activity have been linked to a more diverse and healthy gut microbiota. एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हमारा गट किस पे चल रहा है? पेरिस्टलिस मूवमेंट पे तो चल रहा है। पेरिस्टलिस मूवमेंट क्या है? गट की एक्सरसाइज ही तो है, उसकी मसल्स की रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। प्रोपेल करते हैं, उसमें और एडिशन करते हैं। तो एक्सरसाइज इसीलिए भी जरूरी है। और जैसा कि पहले बताया गया था, मंडूक आसन, वज्रासन। वज्रासन केवल एक आसन है जो खाने के बाद कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वो ऐसा हमारा एंगल बन जाता है बॉडी का कि मैक्सिमम जो सर्कुलेशन है वो डाइजेस्टिव पे आ जाता है। जब हमें भोजन के बाद मैक्सिमम वहाँ पे वर्किंग की ज़रूरत है तो बॉडी अपना ऐसा बनाती है कि मैक्सिमम एनर्जी वहीं यूटिलाइज होती है, उसी पे ध्यान हो जाता है बॉडी का। इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बाद वज्रासन करना है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के आसन जो हैं वो उसमें इफेक्टिव हैं, और जो चीज़ इफेक्ट डाल रही है वही ट्रीटमेंट करेगी, वही तो ट्रीट करेगी। तो पेशेंट्स को आप आसन भी बताइए, मेडिसिन भी बताइए, योग भी बताइए, ये सभी चीज़ें एक साथ इंटीग्रेटिव जरूरी हैं। अब मुझे समय मेरे ख्याल ज़्यादा हो गया तो ये सब भगा रहे हैं मुझे। आगे जो प्रोबायोटिक फूड हैं, प्रीबायोटिक फूड्स हैं, ये हमारे घरों में पहले होते थे। दही, लस्सी, छाछ। सबसे पहले क्या होते थे? जो छाछ सुबह बना के रख दी जाती थी, उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता था, जो फैट है वो निकाल लिया, और जो यूजफुल है जीआईटी ट्रैक्ट के वो कंपोनेंट्स वो रखे होते थे और सब लेते थे घर में। जिसको दिक्कत है वो जीरे का उसमें छौंक लगा के ले लेता था, नहीं तो नॉर्मल ले लेते थे। तो छाछ क्या है? सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है। किमची जो है, ये सारे क्या है? फर्मेंटेड फूड ही तो हैं, और छाछ जो है वो सबसे बेस्ट फर्मेंट करेगी। हमारे आयुर्वेद में इतने आशा वरिष्ठ बने हुए हैं, आप ऐड भी देखने लग गए हो आजकल तो। झंडू पंचारिष्ट, 5 अरिष्ट हैं उसमें। वो क्या है? फर्मेंटेड फ्लूइड्स हैं जो हमारे लिए प्रोबायोटिक्स का काम कर रहे हैं। हाउ योगा हेल्प डाइजेशन? स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव ऑर्गन, इम्प्रूव्स गट हेल्थ, बैलेंस द मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र डाइजेशन से संबंधित होता है, नाभि के पास स्थित होता है। किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करोगे तो वो चीज़ बढ़ेगी आपकी। तो जब आप अपनी नाभि चक्र पे कंसंट्रेट करोगे तो जो आपके उससे संबंधित रोग हैं वो दूर होंगे, उसकी वेलबीइंग होगी। कैन आल्सो यूज क्रियाज लाइक वमन, विरेचन एंड डिफरेंट आसन्स। हलासन, मंडूकासन, उत्तान पादासन जो बताया था अभी पहले, डेमो आपको करके दिखाई, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन। आयुर्वेदिक अप्रोच देखी जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? जो भोजन है, अब वही बात है कि हमारे हाथ में क्या है? केवल भोजन। उसको ठीक करेंगे तो हमारा माइक्रोबायोटा ठीक होगा, उसमें ही चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या है? मात्रा, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, टाइम, मोड ऑफ प्रिपरेशन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आप साउथ वाले जो हैं वो चावल खाते हैं, आप उनको चावल खाने से मना कर दो डाइट में, प्रिकॉशन में, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए देश के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ें हमें सभी देखनी हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं जैसे सौंफ है, पानी है, मेथी है, धनिया है, जीरा है, पुदीना, मुलैठी, हींग, छाछ, तक्र, दही। ये नहीं कि मैं तो बीएससी नर्सिंग हूँ, मैं तक्र कैसे बोल सकती हूँ?
नहीं, जो चीज़ सही है वो बोलिए और पेशेंट को भी बताइए और खुद भी प्रयोग करिए। एक पेशेंट भी आप अपने आप ठीक करते हैं तो वो को सारी उम्र याद करता है। नर्सिस को तो याद भी नहीं रहते, इतने पेशेंट्स आते हैं लाइफ में उनके, लेकिन पेशेंट को याद रहता है कि मेरे एक नर्सिंग सिस्टर ने ये बताया था और मैंने किया और मैं ठीक रहा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ चलें। बहुत रिजिड नहीं होना है और सही अप्रोच होनी चाहिए आपकी, एविडेंस बेस्ड। मैं पतंजलि में काम करती हूँ तो हमारी मेडिसिन जो हैं वो एविडेंस बेस्ड हैं। प्रॉपर उसके रिसर्च जो है वो करी गई है, प्रॉपर उसके चारों जो मेडिसिन बनाने से जो स्टेजेस हैं ट्रायल्स किए गए हैं, उनके 0 फेज 1 फेज सभी किए गए हैं, उसके बाद उसको लाया गया। और मैं नमन करती हूँ स्वामी रामदेव जी को, आचार्य जी को, कि जिन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया। और हमने इम्प्लीमेंट करने से के बाद कॉन्फिडेंस जो आता है वो अलग तरह का होता है। हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही चीज़ को सही समय पे प्रयोग करना। ठीक है, आपके लिए आप पढ़ते हो कि वो लेवल ज़्यादा है तो वो ट्रीट करना है तो उसको वैसे ही ट्रीट करो, लेकिन उसके बाद तो उसे पथ्य अपथ्य बता दो। आप पेशेंट घर गया तब तो ये बताओ कि डाइट में ऐसे करना है, ये मेडिसिन आपको बंद कर रही है। कोई डॉक्टर कहते हैं 5 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना, वो कहते हैं 15 दिन बाद दोबारा दिखा देना। पेशेंट को लगता है ठीक है अब दोबारा क्या जाना है, तो यही दवा खा के काम चल रहा है। तरह की आजकल डिजीजेस पैदा कर रही हैं। जो एंटासिड्स हम लेते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वही आगे जाके कॉन्स्टिपेशन करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। समय आप सबका बहुत ज़्यादा लिया, बहुत बहुत माफ़ी। और in the end, health is a relationship between you and your body. Don't make your gut a gutter. और एक और बात, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, शतु शुद्धो समृति ध्रुवा, स्मृति लभे सर्व ग्रंथिनाम विप्र मोक्ष। आपका आहार शुद्ध है तो आपका सत्व शुद्ध है। एक अपना भी तो ऑरा होना चाहिए, अपना भी तो प्योरिटी लेवल होता है बॉडी का। तो फ्रॉम प्योरिटी ऑफ फूड कम्स प्योरिटी ऑफ माइंड, एंड फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड कम्स कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, एंड फ्रॉम कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड वन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस। हम तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये तो छोटा सा ही आनंद है स्वस्थ रहने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। थैंक यू वेरी मच मैम। हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट यहीं पे रुकिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट सर जयदीप एंड डॉक्टर सुखपाल टू ऑनर मैम फॉर हर वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्पीकर की ओर जाएंगे, आई वुड लाइक ऑल द स्टूडेंट्स टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स एंड कीप देम असाइड। और 1 सेकेंड के लिए सब खड़े हो जाएंगे जल्दी से, जल्दी से। थोड़े हाथ ऊपर करें। सुनीता मैडम आगे, सुनीता मैम आओ। सिर्फ सेकेंड का सेशन मैम, आगे ऊपर आना पड़ेगा। हाँ, yes, yes. So I could just see that everybody after food, yes, very good. Oh ma'am, Just a few seconds, we are already running short of time.
चल रहा म्यूट पे रखा था मैंने। So thank you, Surita ma'am. And now I hope no student will be on their phones. Yes, we are all going to be laughter therapy. ठीक है, सबने अपने phones पे ध्यान नहीं देना. We are talking about something very important, which is our gut health. और काफ़ी बारी जब हम स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं तो किसी का पेट खराब है या किसी को किसी चीज़ की इंटॉलरेंस है, तो लेट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर्स व्हाट वी आर गोइंग टू बेनिफिट नाउ. We are going to have the next speaker with us is Dr. Binoy Singh. And Dr. Binoy Singh is MBBS. Dr. Nancy. Okay. Nancy ma'am doesn't need actually any introduction to our students because all of you have seen her from first year, I think. World Food Day and quite many millets, very lately with millets, yes. So Dr. Nancy is Chief Dietitian and Head Department of Dietetics, PGIMER Chandigarh, and she is a doctorate from PGI Chandigarh and a registered dietitian, and I know she had been working on kidney health and diabetes. So she has a total experience of 23 years and areas of interest are clinical nutrition and major achievements. Ma'am has got so many gold medalists and merit scholarship holder. Let's clap for her. She has quite many paper publications, and then she's guide and co-guide and co-investigator for MSc, MS, PhD and DM and projects. And paper presentations has been done at national and international levels, and she is resource person for nutrition in various institutes and awarded appreciation certificates for many of them, and published many health related articles in newspaper also. She is a life member of IDA and joint secretary of Chandigarh chapter, and then she is NSI executive member, and she has got so many other things. I think we will give it to ma'am to
talk what she is all about. किधर से करना है मैं वैसे यहाँ से आगे नहीं करना है ओके ओके A very good afternoon to all of you, and thanks for such a lovely introduction, and thanks ma'am for making a happy atmosphere before I might talk, so you will digest it very nicely now, I'm sure. So I was given this topic, diet for youngsters, though it is a it is an open-ended topic. So I have tried to relate it to the gut health. Now, as the previous speaker also said that all diseases begin in the gut, and it is so true, so true. Our body gives us immense signals that all is not well with our gut. कभी सर दर्द हो रहा है, कभी regurgitation हो रहा है, कभी bloating, nausea, stomach ache, loose stools, constipation, but we are so wrapped up in our day-to-day stress that we ignore it. And definitely an unhealthy gut contributes to a wide range of diseases. So it can be due to too much of stress or overeating, frequent fasting, long gaps between meals. बहुत ज़्यादा अगर हम देर तक खाना नहीं खाते हैं तब भी, eating very fast, eating on the run, irregular sleeping hours, no exercise, too much of sugars and fats, midnight binging. I think you must have heard about this immense number of times subh se. Now, functional gastrointestinal disorders like irritable bowel syndrome and functional dyspepsia, they are very common conditions which are associated with very poor quality of life and high healthcare utilization. And they are caused by disorders of GI functioning like altered gut sensitivity, altered motility, altered microbiota, altered immune functioning, central nervous system processing. So they cause chronic symptoms throughout the gut. Pain hota hai, dyspepsia hai, altered bowel habits hai. So these are all made worse by maladaptive patient behavior, stress and psychological comorbidity. So how to manage all this? Management is the bio, psycho, social factors. So if you see the social and lifestyle factors, it's all diet, exercise, sleep, ingestion of caffeine is a part of a diet, alcohol, and psychological factors is presence of stress, anxiety, low mood, and history of eating disorders. Definitely we'll be talking about diet today. Now these, if you see all these guidelines, now these are a National Institute for Health and Care Excellence guidelines. The basic the base कहते हैं ना जो नींव वो सेम होती है. Have regular meals, take time out to eat, avoid missing meals or leaving long gaps, drink enough fluids, restrict tea and coffee, reduce intake of alcohol and fizzy drinks, and people with diarrhea should avoid sorbitol, an artificial sweetener found in sugar-free sweets, even in chewing gums and drinks in some diabetic and slimming products. So, this artificial sweetener is a new fad diet कि डाइट कोक है या कुछ भी जिसमें कि ज़ीरो शुगर है, so that is very good for health. Actually, it is opposite. It is opposite to what is being said. I'll give you a very a beautiful example of Langkawi Island. It is in Indonesia. वहाँ का जो bird है वो जो उनका national bird है, that is eagle. So because it is an island, so it hunts. What it hunts? Eagle क्या खाएगी? Island पे fish खाएगी. But then they have this they had this touring thing जिसमें कि एक boat में tourists को लेके जाया जाता है, and what the boat people do is जो वहाँ के हैं जो tourists को लेके जाते हैं, what they do is they put lots of chicken pieces in the sea and the eagles come and they eat the pieces and then they go back. So what happened, this activity was banned because what happened was after a few years eagles के जो young ones हैं they started to be deformed and the eagles died at an early age. So the only thing, what was the thing which was altered in eagles lifestyle? There was no stress, food, and second thing,
Yes, the physical activity. So these two things were altered, and if eagle can fall prey to that, what about us? Food and activity and stress and blah blah blah, so many things. So what is going to happen to us? So this is an example, and now they have banned this activity. So these are the ultra processed foods which are going inside the youth of today. You know, all the fast foods, sugary drinks, chips, candies, snacks, cookies, sweetened cereals, sauces, dressings. They are made such a way like it's like a food addiction, drug addiction जैसा होता है, वैसे food addiction होता है. You can't stop after 2 chips, or you can't stop after a bite. You know, you have to finish it off. So these are called ultra processed. They have hyper palatability. You know, बहुत ज़्यादा हमारे palate को अच्छे लगते हैं. So this is the way they are made, and of course they are calorie dense and very poor in micronutrients. So the sophisticated randomized control trial में बताया गया है, when these ultra processed foods were compared with real foods like unprocessed foods. So what happened was, it was a ultra processed diet causes excess calorie intake and weight gain. 1 month inpatient randomized control trial था. सेम उनको दिए गए थे, एक ग्रुप को अल्ट्रा प्रोसेस दिए गए थे, एक ग्रुप को नॉर्मल जो नेचुरल डाइट दिया गया था. दैट ग्रुप ऑन अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, इट गेन्ड ऑलमोस्ट 1 kg weight in 2 weeks, whereas the other group lost around about 900 grams of weight in 2 weeks. So this is how they, I mean, this study points at two mechanisms: hyperpalatability and high energy density. So this is what we are doing nowadays to our bodies. So basically, to be healthy involves getting the right knowledge of nutrition and your body. It is not about the literacy or the illiteracy level. It is about the right knowledge. Developing a direct relationship with food and its origins. Activating the body's innate intelligence about its nutrition needs so that it gives us the right signals for our makeup. And nutrition is always personal. It can't be just googled up. It is, every body is different. Every body is different, and the nutrition required for that body is different. So if you talk about the right knowledge, of course knowledge is the power. You should know कि जो हम energy खाते हैं वो spend कहाँ होती है. There are basically 4 components: basal metabolic rate, physical activity, specific dynamic action of food. Now जो basal metabolic rate है, that is the largest component of energy expenditure, which is energy used at rest. Now wonder that you are just sleeping and you are losing, you are utilizing the calories. So आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि मैं पानी भी पीता हूँ तो घी की तरह लगता है, और कोई कहता है कि यार 10 परांठे खा जाता है, इसको कुछ नहीं होता. So this is that a person who is, the basal metabolic rate is sluggish in one person, and in another person it is active. So how do you make it active? It is a, it's a magic. Magic is like, if you are physically active, if you do regular exercise, the fats convert to muscles, more muscles speed up the basal metabolic rate, and faster metabolism occurs. So the basic tips are: have more muscles, eat right amount of proteins, because India में basically यहाँ पे हमारी carbohydrate rich diet होती है. If you count your proteins, it should be around about 1 gram per kg body weight, पर वो होता नहीं है. Eat nuts, oil, seeds and fruits as snacks. And जो भी आप refined चीज़ खाते हो उसमें से 10% more energy gain होती है. सेम एनर्जी है दोनों खाने में. अगर एप्पल में 100 है और आपके बिस्किट्स में 100 है, तो बिस्किट्स में आपको 90 लगेगी, एप्पल की 60 लगेगी. सो दिस इज अ स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड. ईट स्मार्ट फूड्स दैट विल अवॉइड sluggish metabolism, as I said. Now, this was one of the study which we did in PGI, food perceptions of obese obstructive sleep apnea patients. अब इसमें patients जो हैं वो they were not illiterate, they were all literate patients. So, but it was found that 62.5% patients had high fiber biscuits a packet full as snacks, considering them to be healthy. So these are not healthy actually, because high fiber, I'll come बाद में हम इसकी भी बात करेंगे. Basically, we should not be blinded by what is written. And secondly, 2 biscuits is equivalent to carbohydrate of 1 chapati.
Some of the patients considered fresh juice to be healthier option over fresh fruits, because definitely a serving of fresh fruit will be more healthier than a serving of fresh juice in terms of fiber as well as the calorie intake. 73% patients considered refined olive oil to have fewer calories than animal fat. ऐसे लगता है कि olive oil है तो पूड़ियाँ तल के भी खा सकते, कोई बात नहीं, तो देसी घी जो है उसमें ज़्यादा मोटे होते हैं. It's not like that. They have the same calories, all the fats. So we should distinguish between what are the bad carbs and what are the good carbs. Like it is the same carbs. If you see 1/4 packet of noodles or 2 biscuits or 3 teaspoons of sugar as compared to 1 chapati or 1 cup of dal or 1.5 cup of cooked vegetable. So, but the thing is how to choose a good thing over a bad one. Now this is very interesting. Food label myths. आपने कभी जैसे किस ने आमंड ऑयल खरीदा है, आमंड मिल्क, सॉरी, आपने कभी पढ़ा है कितना होता है उसमें? भूल गए. ओके, अगर आप पढ़ते तो कभी भूलते भी ना एक्चुअली, बिकॉज इन इसमें ओनली 2% आमंड होता है, 2% to 5%, एंड इट इज रिटन बड़ा बड़ा almond milk. So these labels are very deceptive. You should always read the nutritive value. In general, words on the front of the package are often just marketing claims. Similarly, these are very famous biscuits. We know how much you love whole grains. We pack not 1, not 2, but 5. अब उस ingredients में देखो, refined wheat flour 45%. So basically you're eating maida. So you must see the all these things. You should be careful. If a food is light or light, it has no fat. This is another myth कि अगर light लिखा है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब उसमें fat नहीं है. The only thing is like Amul butter, इसमें 80 ग्राम fat है, तो Amul light milk fat spread में 65 ग्राम है, इतना फर्क होता है. So either 1/3 fewer calories or 50% less fat compared to regular version of that same food. So it can be a healthier choice over that food, but if you say कि उसमें fat ही नहीं है, that will be a wrong thing to say. Now if a label says 0 trans fats, it's trans fat free. This is also not true because it is confusing. But if a label says 0, it can still have as much as 2%. So if you eat a fewer servings, it can add up. अगर आप 0 समझ के उसको खाते जाओगे तो of course वो ज़्यादा हो जाएगा. No additives means nothing was added. कितनी बारी हम पढ़ते हैं ना, no additives, no preservatives. वो सिर्फ घर के खाने में हो सकता है, because without food additives, food will be tasteless, colorless. See this food. कहाँ पे रंग की कमी है ना, कहाँ पे टेस्ट की कमी है. So all this is full of additives and preservatives. So it can't just happen. If it is written, please read the fine print. You will definitely get it. Don't go by the face value. KFC में grilled cheeseburger खाना because I am on the diet. I'll not have fried. I'll have grilled. See the calories of grilled. It's 1 day calories 1230, and the calories coming from fat, it's 120, saturated fat, and you see 123% to 185% of the daily value. 100% से भी ऊपर jump मार रहा है ये. Cholesterol, see how much. So these are all marketing gimmicks. So you should focus on this न्यूट्रिशन फैक्ट. सबसे पहले तो ऊपर से शुरू करो. सर्विंग साइज क्या है? 1 कप है, इस पैकेट में 2 कप्स है, कितना है? सपोज जूस में हम पीछे पड़ते हैं 100 ml में 12 ग्राम शुगर है, गटागट पी लिया, पर पिया तो 200 ml है, 24 ग्राम चली गई ना. So multiply भी करना उसको. So and check calories, limit these nutrients which are given in yellow, get enough of these nutrients which are given in blue. 5% or less is low. जैसे यहाँ पे विटामिन ए आप देख रहे हो 4% है, C 2% है, आयरन 4% है, it is low. 20% or more is high, like sodium is 20%. If one has hypertension, नमक तो वो फीका खाना खा रहा है, but ऐसे खाने में he doesn't know. So what's the point? इससे अच्छा खाना अच्छे से खा ले. तो ओनली थिंग इज कि ये वाली चीज़ें भी अगर वो पेशेंट छोड़ देगा, इट विल बी गुड इनफ फॉर हिम. ही डजंट नीड टू हैव अ फीका खाना. एंड ये सब पढ़ के इफ़ यू गो एंड अगेन रीड द लेबल्स लाइक यू डिडंट रीड इन आमंड मिल्क, सो डेफिनेटली
you'll be, you'll be really shocked. If these food products were honestly labeled, they should be heart disease spread or colon cancer dog or obesity pop, ADHD flakes or diabetic drink. So इनके ऐसे labels होने चाहिए actually. So ये 4-5 साल पुराना डेटा है, बट इसमें भी बताया गया कि the trend you see in increase in consumption of cakes and confectionaries and snacks and all these sweet snacks, and in juice drinks and carbonates, right from 2006 to 2019 they have shown. So which nutrients and why needs clear rational based on health impact? Sugar, everybody knows it has negative impact on health. It's a very large negative impact, especially when consumed in beverages. Sodium, saturated fats, trans fats, energy density, all these are negative nutrients. एंड जब सेल लगती है बाय वन गेट वन फ्री, हम सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं. एंड वॉट वी आर बाइंग? ब्लड शुगर. अनदर थिंग इज माइंडफुल ईटिंग. दिस वी हैव लॉस्ट. पहले ज़माने में लोग प्रे करते थे खाने से पहले. यू मस्ट हैव सीन, बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स देखनी पड़ेगी इसके लिए. सो उसमें क्या होता था, खाने को ही प्रसाद बना देते. जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड प्रसाद? इट इज़ द सेम फूड बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव वाइब्स, इट हैज़ प्रेयर्स अराउंड इट. सो इट इज़ पायस टू हैव दैट. सो सेम वे घर पे ही हम पायस कर देते थे, बट नाउ वी डोंट इवन नो वेयर द फैमिली मेम्बर्स आर वाइल द फूड इज़ बीइंग सर्व्ड. सो द माइंडफुल ईटिंग इज वाई डू आई ईट? भूख लगी है मुझे. व्हेन डू आई ईट? व्हेन डू आई वांट टू ईट? when, I mean, what is the timing? What do I eat? मेरे प्लेट में कुछ है जो है, do I know what is it? If I'm eating momos for example, do I know किसके बने, इसके अंदर क्या है, कौन सा ऑयल है, क्या. इवन मैं बिस्किट खा रही हूँ या रस खा रही हूँ या नमकीन खा रही हूँ, do I know the composition? No. How do I eat? Am I on the run? I have a deadline to do. या मैंने लैपटॉप साथ में खोला हुआ है, या फ़ोन पे मैं कुछ देख रही हूँ, या टीवी देख रही हूँ. How do I eat? How much do I eat? Am I listening to my body when to start or stop eating, or just I'm eating because it is ultra processed food, or I'm liking it, or I'm just watching the TV and I don't even know what I'm popping in my mouth. And where do I invest my energy? मैं उस एनर्जी का कर क्या रही हूँ जो मैंने ली है उस एनर्जी का. So these are small questions. Now this is eating mindlessly. It is 600 milligrams of sodium and 100 grams of pizza. So पता भी नहीं चल रहा इस बच्चे को कि ये क्या खा रहा है. सो मिलियन ईयर्स हमने स्ट्रगल किया बंदर से इंसान बनते हुए, और ऐसे बन गए. अब एक और मिलियन ईयर्स लगेंगे शायद ऐसे बनने के लिए. सो प्लीज़ take care of yourself, all of you. And because how to heal an unhealthy gut is, first is remove offending foods and habits. It's very important. Repair the gut by eating healthy unprocessed foods. Then restore the gut bacteria flora by having prebiotics and probiotics, and get enough sleep. So I have been told to wind up, so I'll just I'll not talk about, I just wanted to talk about some kitchen pharmacy thing because it was a gut health this thing. So these are proved with scientific studies. So these help in the indigestion, flatulence, nausea, vomiting. This pudina. Then I'll just rush through this peppermint oil. It has demonstrated promise in the field of gastroenterology. In gastrointestinal spasms improved or eliminated with the peppermint oil. IBS symptoms are also relieved. Then functional dyspepsia is also relieved. Ginger, you must have heard, I mean everything is in our kitchen. So it is used as a laxative, gastric emptying enhancer, appetizer, anti-emetic and anti-dyspeptic. So tip is to chew a piece of ginger with added rock salt to control nausea and vomiting. Turmeric, it emerged as a hero in COVID times also. So because of its increased bioavailability in the GI tract, GI diseases including inflammatory bowel disease, hepatic fibrosis and GI cancers are one of the most investigated diseases, demonstrating the therapeutic potential of curcumin. And it was also found useful in healing peptic ulcers.
Then talking about jeera, everybody knows and everybody has it in home. When the baby is born, तो बड़े बूढ़े क्या वो जीरे वाला पानी पिलाते होते ना mothers को. Why? So they were greater scientists than we people. They knew what to do. So they prevented the things to happen. So GI cramps, feeling of fullness, it helps in that. It helps in nervous, cardiac, gastric complaints. It is a spasmodic GI complaints. It helps in that. Flatulence, irritable stomach, indigestion, lack of appetite. It's a gastric stimulant. And in one of the studies, it has, remitted abdominal pain, bloating, incomplete defecation, fecal urgency in IBS patients when 20 ml of this cumin seed essence was given. Then again, ajwain is so common in households. It is used to treat diarrhea, flatulence, dyspepsia, abdominal pain, shown to increase the secretion of gastric acid, bile acid, activity of digestive enzymes. And it is supposed to be, boiled in water and then had. Hing. Functional, it helps in functional dyspepsia. It is an analgesic, anti-inflammatory, and it has to be had after frying because raw hing can be irritating to the GI tract. Saunf सब खाते हैं खाने के बाद, so because it has carminative and digestive properties, and it helps relax the muscles in the body and contains nutrients that are anti-inflammatory, antioxidant, and anti-spasmodic. So basically, what is the vision for the future? To cater to the population below the tip of the iceberg of disease. एक बारी टिप पे पहुंच ही गए ICU में या एडमिट ही हो गए तो उसके बाद तो थेरेप्यूटिक यूज होता है डाइट का. So how to prevent that tip to be made? It should not be made. So what is under the tip of this iceberg? Faulty diet and lifestyle, lack of awareness, knowledge, lack of nutritional screening, implementation, GI diseases sitting on border waiting to strike as soon as they find favorable environment. Then what happens is these are घर की बीमारियां शुरू हो जाती है, constipation, bloating, nausea, acidity. Then it flares to IBD, IBS, GERD, colorectal cancer, and then the person ends up as an IPD patient or ICU setup or under a knife of a surgeon. So prevention is always better than cure. A stitch in time always saves 9. So eat right food, eat balanced diet, exercise, and all will be well. So eat right now. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम. थोड़ा गिल्ट होने लग गया सबको कहते हुए कि प्लीज़ वाइंड अप, क्योंकि इतने अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर किए हुए हैं, इतनी मेहनत से किए हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत लग रही है. मैम, वी वुड लाइक यू टू बी हियर फॉर अ व्हाइल. और इसके साथ साथ जो बहुत अच्छी बात की कि जो हमारे फोर फादर्स थे वो हमसे बहुत अच्छा जानते थे. जीरे का प्रयोग, पुदीने का प्रयोग, कितनी अच्छी बातें. मुझे लगता है PGI की हेड ऑफ द डाइटिशियन को तो ये पता ही होना चाहिए था, और उनको पता है, इसलिए PGI का इतना बड़ा नाम है. तो इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन. और उन्होंने जो बात की अनप्रोसेस्ड और नेचुरल डाइट लेने की, नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने की, मुझे लगता है इसको आप अपने साथ लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा. आप लोगों को सबको बड़ी फ्री डाइट कंसल्टेशन भी मिलती है. मैं तो बहुत फ़ोन करती हूँ. हमारे बीच में आज के क्लोजिंग सेरेमनी के हमारे चीफ गेस्ट, वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी इज हियर, डॉक्टर सुनील जोशी जी. एक बार जोरदार अभिनंदन उनका भी, और मैडम नैन्सी को हमारी ओर से एक स्मृति चिन्ह. So the next speaker for the day is Dr. Binoy Singh. He is MBBS.
honors, and he's done his MS surgery, and he's done Manipal Institute of Technology. From there, he's done yoga instructor course from the Swami Vivekanand Yoga Anusandhan Samastha. And then the vision and mission of Sir is to contribute to the ongoing paradigm shifts, which is physicality to consciousness, illness care to wellness care, and create yoga facilitated evidence-based healthcare protocols by integrating Eastern and Western visit, develop departments, institutions, research centers to deliver yoga-based integrative Medicare, and the strength is cross-domain skill set and experience. Over to you, sir. Respectful pranams to all of you. I have only two set of people here, the current thought leaders, global thought leaders, and the future global thought leaders. I have so much confidence on you, my young friends. You have no idea what is going to come on your soldiers. The whole world is so confused regarding the healthcare. You are going to guide them. Please, 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 I say some of you are talking a bit to each other and all. I very, very sincerely request you to hear me out. I have come from far distance to talk to you. I assure you that I will be giving you something to chew mentally, not physically, worthy of your neurons, worthy of your neurons. I'm talking to the younger generation, but also to younger generation sitting in the front. So first thing, thank you very much, Jaideep sir. He is like my mentor and guardian in this journey of yoga therapy, for giving me this opportunity. And I'm going to share a couple of things with you to seek knowledge. See, I'm not going to give you a lecture. All of you are worthy of seeking this knowledge. We belong to a culture which seeks knowledge, which allows good things to come from every side. We don't have, if we are not a belief system that you listen to me, you accept what I'm saying, or you're something like that. So I'm giving you pointers. Okay, and most of you might not have heard these things which I'm going to share with you, because I'm working with the cutting edge research with Harvard, MD Anderson, other institutions of the world, creating yoga. There is a guy who is the HOD of computer science in Oklahoma University, Dr. Subhas Kak. He is the global, you can say, leader in making a charge of consciousness-based paradigm. Now, what is this consciousness-based paradigm? I am going to explain a few moments, but he is the guy who is leading it, and he says, and of course my guru, Dr. Nagratna, who is MD MRCP, and Sakshat Saraswati says also that the book, the most important granth, the Shastra, across all civilizations is hardly known to the general people, and that granth is Yoga Vasisht. Yoga Vasisht, I am not requesting all of you to read it, it is 64,000 sutras, or the Laghu Vasisht will be also around 15,000 sloka, but I am going to give you the gist of Yoga Vasisht today, because the etiopathogenesis of disease, what we were knowing till now, is very limited, which I am going to demonstrate just now. And what is the actual etiopathogenesis of disease is mentioned in Yoga Vasisht. Yoga Vasisht, Bhagwan Sri Ram asks Brahmarshi Vasisht, what is disease and how it happens? And then Brahmarshi Vasisht replies that what is disease and how it happens. So I'm going to share with you those concepts which are going to be the future of Medicare, number one. Now certain ground rules, second slide, sorry.
So see, integrative approach, I'm not going to deal in detail, but certain ground rules I'm going to set here. One is that my name is Dr. Vinay. Now if somebody calls me Dr. Polite, will it be correct? No. That means proper nouns are not translated. So we should not be in the habit of translating proper nouns. Number two, Sanskrit has billions of words. English has hardly a million. Combining these two, I request sincerely to all of you, be proud, feel proud in using these Sanskrit words related to yoga or related to even the everyday life. Now, Gomukhasana is not cow face posture. Brahmanad is Brahmanad, and so on. So this is my one request, that because I am not going into the etymology of Sanskrit, which itself is a huge subject, but as kids I am assuring you that these are very, very important that you articulate these words in. Second thing, Yoga Vasist, as I told you, etiopathogenesis, so it brings us the concept of Adi and Vyadhi. Adi and Vyadhi. And classifies the disease in two broad groups, which are generated by Adi and which are not generated by Adi. So the generated by Adi is called Adhi's Vyadhi, Vyadhi is disease, and which are not caused by Adi is called Anadhi's Vyadhi. So Anadhi's Vyadhi, I am just sharing with you, are three: Ghat, Sankraman and Vish. So beautiful classification. See, trauma, toxins and infections. As we know that these are physical in nature. So why I told you here and now that my talk is not going to cover the Anadhi's Vyadhi. The total concept which I am going to share with you relates to Adhi's Vyadhi, which is constituting more than 90% of the morbidity load of the world. And this India in 2002 and 4, which was only 28%, the NCDs, the non-communicable diseases, have now become almost, we have crossed 50%. As of now, as per the latest data, we have 60% or 70%. So we are catching up with the world. So what I am going to deal with today are these concepts related to NCDs, the Adhi's Vyadhi, and how the Western approach, Western paradigm is falling short, and how the Bharatiya Vangmay is going to fill that gap. Now, third concept, I am sharing with you with full sense of responsibility that now only the Western science is reaching that point where it can start to understand what is written in our Shastras. There are hundreds of examples. I will not go into the other domains. So, knowing Sanskrit is very, very important. The whole life is in front of you. I request you, not only you start learning Sanskrit as fast as possible, you start studying the texts, the Shastras, by Padavichhed and Sandhi only. Don't go for their meanings. You are intelligent enough to have your own meanings. I did my master's in computer application at the age of 44 years, 3-year full-time course, BITS Pilani, and now I have joined a double degree course of Ayurveda through Sanskrit. So I am studying Sanskrit and Ayurveda, and if I can study, and by the way, I also topped the university in computer science also, apart from surgery and medicine. So the point I am trying to make, be committed to a lifetime of learning. So now I am coming to this aspect. This is the agenda which more or less I have shared with you. So all of you are the cream de la cream of Western medical science. Some of are here, the Indian system also. Now you answer me. I tried to go through all the review literature of essential hypertension. Why essential hypertension? What is the cause of essential hypertension? I am not interested in what happens. I want to know why it happens. The arteriolar muscle tone, the basal muscle tone of arterioles is increased. And I am telling you on behalf of the latest review articles, they say we don't know. That's why they use the word essential.
I have been kicked out from pathology classes many times because in my student life I used to ask such stupid questions. So I have been, one of the professor had banned me from whole of his semester. Okay, fine. Second, idiopathic thrombocytopenic purpura. Why? What is idiopathic? So the exact etiology of many of the adhis vyadhis, now I will use the word adhis vyadhis because this NCD itself is a nonsensical word. And I assure you, I am working with a lot of Western institutions, they don't even use the word lifestyle disorders because it will point towards something where we have the answer. So they don't even use the word lifestyle disorders, they say NCDs, fine. So etiopathogenesis not clear, cure of course not there, symptomatic suppression only. But the third is most important. These two can be debated. Somebody say, okay, fine. I ask them insulin receptor, electron microscope, by any structure, you tell me why the insulin receptor is not recognizing the insulin. Has the insulin molecule changed? Has the insulin receptor changed? No. Why the immune cells are attacking the cartilage of a joint in rheumatoid arthritis? Fine. But the third aspect, which many very serious people have documented, starting with Dr. Deepak Chopra, is the cases of self-healing. Now this self-healing in S. Vyasa Arogya Dhama, where we had a 300-bed facility, when I joined first time being from MBBS MS background, I used to get his report checked again initially. I couldn't believe that this can happen. So Deepak Chopra has documented not only the NCD spontaneous healing cases, but even cases of big tumors, cancers. They simply disappear. And these are well documented cases. Now if we were talking of a scientific discourse, even one case is there, that paradigm should explain it. If the paradigm is not able to explain, then the paradigm should say that yes, I fail. So, how we are dealing with this limitation? Worldwide, there is no effort towards stating that problem. All of you know that you are a clinician, you start treatment only after defining the problem. Can you start treatment before defining the problem? No. But worldwide you see this word integrative approach or integrative Medicare is being used or worked upon without defining the problem. What is the problem? The problem statement would have been that the Western approach to Medicare to NCDs is limited. Only then we can discuss how to fill that gap. But the vested interest, the trillions of dollars of the big pharma industry is not allowing that to happen. Fine. So what is happening? If you cannot confront, you confuse. So ad hoc mixopathy happens, which I am not going to go into the detail. There is a huge thing about it. The OSAR Center for Integrative Medicare, the Harvard facility, the OSAR initiative. Will you believe? Do you know what is cardiac coherence breathing? Anybody? What is cardiac coherence breathing? They don't use the word pranayam. It is pranayam. In Harvard, nobody uses the word pranayam. They say cardiac coherence breathing. Do you know what is non-sleep deep rest? Non-sleep deep rest. Sundar Pichai used this word just few weeks back. They use an Indian to fool us. What is this? Deep is Savasana. So they don't use the word Yoga Nidra or Savasana, they use this word in the Western world. Now they have come up with even more fantastic. 7 universities have come together, the top 7 universities. And what is the initiative called? Self-directed biological transformation. Self-directed biological transformation, SDBT. Go today and check this. You will laugh. You will laugh. They are not using the word yoga. For yoga, they are using this word. Self-directed biological transformation. Okay, I don't want to be bitter. I am fighting them, so sometimes my emotions get the better of me. Fine. So
So let us come to this. What is that limitation in the Western approach? All of us know, we as Indians, we know that it is their limitation to physical. Materialism it is called. What we can touch, see, that is all, it is the reality. There is nothing beyond this. But in NCTs, we are not able to deal with the regions only at the physical level. That is the reality. I won't go into detail, the Descartes and the I think, therefore I am and all that. Because of the paucity of time, I will go. So here, because of my background in physics and mathematics also, apart from medicine, I studied quantum paradox in detail, the quantum physics, before starting to write this book, which I am writing now. So for you, if some of you, all of you rather, I would say this one book at least you should read, Quantum Doctor. Not because it gives you something wonderful, but it leads you towards that. And this guy is honest, Amit Goswami. He is a PhD doctor, not a... But if you want to really understand quantum physics, then this Through Two Doors at Once, it is a beautiful book. Why I am telling you quantum physics? Because quantum physics or quantum physicists are more honest than the doctors in the Western world. They are at least saying paradox. They are using the word paradox. And the point is that all the quantum paradoxes gets resolved only by 2 lines of Adi Shankaracharya's Prata Smarnam. Yasminidam jagat asesam asesmurtau rajva bhujangam iva pratibhasitam vai. At 2016 Nobel Prize, the physics got on this aspect only, on a hypothesis. So rajva bhujangam iva, like the snake over a rope, pratibhasitam vai. So the quantum paradoxes collapse. But okay, fine. They want to call it a paradox. Let it call them a paradox. We have no issue on that. But what I am trying to say that the Western world, both in the life sciences and in physical sciences, they have come to a dead end. And we have the answers. You are going to give that answer. You are going to take that charge. And you can cure everything. See, in UK where I worked for some time, nurses have their own independent clinics. And when it is a non-drug approach and through yoga, every one of us can cure anything. Who is going to stop us? It is legal. In USA, this case went up to the Supreme Court that there is no FDA clearance for yoga. They lost the case because it is a non-drug intervention. It is just we are physiologically intervening in the physiological processes. This is the part of my global patent filing, my research. So, see, this is very important and I request all of you, they can give me feedback, you can give me suggestions. See, starting with temperature control in AC. All of you have used air conditioner, use 22 to 23. Suppose you do. And next day you come back, somebody has done it to 24. Do you say that my AC has gone wrong? You just bring it back to 22. Now think, this 22, 24, so you are setting somewhere. That is the affector system, the value setting system. And then there is a whole system which is effector system, means the value achieving system. Now think of a fever. Is the temperature controlling mechanism of the body gone wrong? No. It's perfect because it can adjust the temperature to the portion of a degree. What it has done only, it has been set to 102 degree Fahrenheit from 98.4. Agreed? Till now everybody is with me? Now I am telling that for 18 hours out of 24 hours, you are irritated, you are very much, you can say, itchy, shouting, angry, and your BP, when you are angry, and BP will rise, so it is suppose 150 or 160 by 100. Then you become calm down, it will come down to normal. So that is a stress and eustress. But most of the time you are irritable and angry, the BP is always higher. This is a very, very important term. Please note it down or remember. The stabilization of arousal. So the stress going up, coming back to the baseline is one thing.
But going there and never coming back to the baseline, this is called stabilization of the arousal, which Brahmarshi Vasisht will mention. I will tell you how he says that, how it is the chanting Adi. So what is happening, that please note that it is bidirectionally optimizable. So what happens, that the system thinks that out of 24 hour, 18 hour, it is 150 by 100, let it make the normal. So this branch of medicine, yoga medicine, where we are working, there are no abnormal values, there are called new normal. So the body has brought it as a new normal. That's why you take medicine, it pulls it down, but the body has set the value at this. So it is a normal for the body to take it back there, like it happens in fever. You take antipyretic, it brings it down, but body has set a figure at that, it takes up down. So this is the hypothesis. Now, coming to the Adi Vyadhi concept. But the Adi Vyadhi concept will not understand till we understand the Panchkosa. Panchkosa I will not go into the detail, just think of it as two aspects. See, in the quantum physics also and in the affector system also, it is beyond time and space. So, here I would like to share one thing with all of you, which I also suffered and I have experienced, so I am sharing with you. All of us have been brought up through the English or Western education system. Because of that, our mind is conditioned towards structural. I can touch this, I can see this. On the contrary, the total Bharatiya Vangmay, the total consciousness-based paradigm is functionality. Devatas are not some beings roaming about in their chariots. They are the processes of the nature. Vayu, Indra, all these. So they are just given names. The same way, I am not calling here the word physical. See, what I am sharing with you now, my dear students, is the anatomy and physiology of the future. So please understand, this is the anatomy and physiology of the future. In a few years, it will come in the course. We are working on that. So physicality means that out of this information base, 10 to the power 21 times every second our body is being created like a hologram. This is mentioned in our Shastras. So in one instance, I have BP, but if I am able to go into Samadhi or higher state of my being, it will normalize my BP. The next moment my BP will be gone. This is possible. Not only this much, Bhagwan Krishna put his finger here. You know that story, all of you? She was like this, bent, and she was not good looking. So put one foot on her toes, another finger here, and stretched her, she became normal. It is possible because this body which you think is the only real thing is nothing but you can say a hologram. And because I say that, oh, it is real, I can touch it, sense it. No, it is just an hologram being formed from the information base. And the functionality is the biophysiology and biochemistry is again being part of the information base. So this information base has two parts. The Manomaya Kos and the Vijnanamaya Kos, which is called the lower mind and the higher mind. These are very, very complex concepts. I am just initiating you into this, and there are very good books, but you should know these terms at least today, and tomorrow you can go deeper into them. We call it as the lower mind and the higher mind. All your memory and sanskaras, every cognitive input, even a sound, a light, from every birth till now is stored, is archived. That forms our samskaras, that forms our prarabdha, that forms our karmfal, that forms our complete vasanas, and we move like that. We move according to that, under their control, if we are just working as per the Manomaya Kos level. Ahara nidra bhaya maithunam cha. As like an animal, if we just move as per the Manomaya Kos archive. But
buddhi vishesa. As human beings, we are fortunate to have a thing called vivek. The Vijnanamay course, which we call the higher mind, is the right and wrong mind, you can say. So the word, English word mind, actually has 4 things incorporated in man, buddhi, ahankar, chittaniyam. So the man, buddhi, ahankar and chit, 4 aspects are covered only in this one word, that is mind. So that is the difference between Sanskrit and this. So this concept of a information base, which I showed here, and a system which is giving effect to that value, here it maps to the Annamaya and Pranamaya. Our physicality, that is our anatomy, physiology and biochemistry, is the effector system, and our memory, our sanskaras, etc. are the our right and wrong sense of right and wrong is the information base, is the effector system. So the affector effector system, these 2 diagrams map. So now we are coming to the Yoga Vasisht. So this Panchkosa concept is from Taittiriya Upanishad. Yoga Vasisht extends that, and then it covers the disease into 2 types, the Adhis Vyadhi and the Anadhis Vyadhi. So as I told before, we are not covering Sankraman, infection or Ghat, trauma or Visha toxins. We are covering only the Adhis Vyadhi, the NCDs. Now again, a heavy dose I am giving, but all of you are very intelligent on this slide. Please listen and see and listen carefully. What is Adhi? I tell you, even the most knowledgeable people will not be able to explain to you Adhi in the modern medical language, which I am trying to do because I am writing a book. See, all of you know sensation. It is electrical impulse. So something you see, that impulse goes. Perception, it goes, hits visual cortex. It is a eye. It is a vision. It is a something you are seeing. Then that image is compared to your memory bank. That is the cognition. So sensation, perception, cognition. This maps to Annamaya course, Pranamaya course and the Manomaya course. The physicality, the functionality and the memory bank. Now till now it is same. It is automatic. Here the branching happens. You either react or you respond. So react is most people do. Yoga is converting reaction to response. That 1 nanosecond of 1 microsecond of you, something hits you, you hold. Janam janam muni jatan karahi, antaram kahe avat nahi. It is not, you think I will hold. You won't be hold. Your mother scolds you, you lose your mind. So when it hits you, you don't have the control. So the yoga is going to have. So this, when your compulsive behavior overrules your right and wrong sense of mind, a turbulence is there, pragya aparadh it is called, there the adhi generated, accumulation of which coming to the pranamaya course disturbs the functionality like sleeping, eating, digesting and other physiological functions. That's why it is very important in yoga medicine to take this history. And overflowing from pranamaya course, when it comes to the annamaya course in the physical body, it manifests as a vyadhi. So this adhi vyadhi concept of Yoga Vasisht, Panchkosa, the limitation, so what I have covered, the limitations of the Western, the cause of that limitation, where are the answers to that limitation, the Panchkosa theory and the Adhi Vyadhi concept. So these are the 5 things I have shared with you today. And just to conclude, the techniques, which I have in the beginning on the agenda I have said that I don't have time to cover that sometime later. But this is the third aspect which is elaborated by the Param Guru of Adi Sankaracharya, Gaurapada. So he was the Guru of Adi Sankaracharya's Guru. So he has, and this whole technology of yoga medicine, and I am as a surgeon, which I was not able to cure in my previous avatar, I am curing those cases. So all these techniques are based only on one sutra,
लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः सकसायम बीजानीयात संप्राप्तम न चालयेत. So you stimulate. Once overstimulation, you calm down. By this cycle of stimulation and relaxation, sakasayam bijaniyat, the settled dot, the perfect example is your overhead tank. Water is going, clean water is coming into your tap. But can you deny that there is no dirt at the bottom of the overhead tank? So when that water is churned up, lay sambodhay chittam vikshiptam samet pusam sakasayam bijaniyat, that dirt, settled dirt comes up, sampraptam na chalayat, then using the technology you remove that. So the total base of yoga technology, yoga therapy is this, and there are techniques for every kosha, the diet, exercise. All my previous learned speakers, they have told the different aspects. The pranamaya are the breathing exercises, pranayam, etc., meditation, emotional culture for the manomaya kosha, counseling lecture for the vigyanmaya course. Most important is karma yoga, selfless service. So, tyag and seva, these are the two pillars on which our culture rests. So do some selfless work during 24 hours. This is my last request. I am going to conclude. You show that how much it will make a difference. Just give a smile to somebody, give something, do something, teach something, help somebody to do a selfless service. Thank you. Thank you so much, sir. Indeed motivating and extremely informative. We are so honored and privileged to have you amongst us. Now I would like to request Dr. Jaideep Arya ji and Dr. Sukhpal Kaur ji to facilitate Mr. Dr. Vinoy Singh. Please give a big round of applause. तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई. Now, moving ahead, we have another speaker of the day with us, Dr. Atul Padnekar ji. He is a counselor and empowerment facilitator and working in holistic healing. He is BHMS, Mumbai University, MA in philosophy, and he also did teacher training course and other holistic healing qualification. Currently, he is working as a founder director of Yoga Psychology Foundation, Mumbai. Please come and enlighten us, sir, with your wisdom. Namaste everyone. I thank Dr. Jaideep and Dr. Akshayanand is not over here, so he also sort of forwarded my name, because of which I am here. So Dr. Akshayanand, Dr. Jaideep, Dr. Sukhpal Kaur. I also thank all my previous speakers, because frankly speaking they have spoken much of it, so I don't know what I'm going to speak about, because most of the topics have already been covered. So what I'm trying to do is I'm just going to summarize and try to put it in a simple language as much as possible. Okay? Saves you trouble? No? Fine. Okay. So the definition of gut health has already been given to you. Absence of any gastrointestinal symptoms, diarrhea, constipation, etc. Healthy gut microbe, healthy gastric immune system, good levels of energy, mental health and well-being,
everything has been mentioned, but along with that, I would just like to focus on one aspect: healthy gut microbe environment. Now, any idea how many microbes are there inside our intestines? Trillions, yeah. Any number to that? Okay, so there are supposed to be around 40 trillion microbes in our intestines or in the gut. And anybody knows the number of cells in our body? That's approximately around 70 to 75 trillion. So if we see how many microbes are there, almost 50% of cells in our body are actually the microbes, and they are contributing to our balance, they are contributing to our health. So in a sense, why the microbes are so important as such? Because in a way they contribute a lot, and in a way they are almost 50% of the work is done by the microbes itself. That's one thing. Importance of gut health, two aspects. In a sense, when the gut health is not proper, or in a sense we eat the wrong kind of food, what Dr. Nancy also mentioned earlier, there are two problems that occur. One, first of all, obesity. And if you are aware, obesity is the forerunner of most of the health problems: malignancy, gout, hypertension, diabetes, hypercholesteremia. And if we have these three things, hypertension, diabetes, hypercholesterol levels, that leads to all other problems also: atherosclerosis, ischemic heart disease, stroke, renal failure. So as again most of the speakers said, why the gut health is very important? Because most of the diseases will come either from here, or on the other aspects there are the inflammatory conditions, and inflammatory conditions lead to irritable bowel syndrome, celiac diseases, Crohn's diseases, or at the same time they can also lead to nutritional deficiencies. Now, coming back to the importance of gut health also, or obesity, and what Dr. Vinay was also mentioning, how basically the medical books play with knowledge nowadays. All of you are aware that with age we get our blood pressure increases. Yes, all of you are aware about it? What do you say? What if I say it's absolutely wrong? Technically, when I was a medical student, there was an old book of Harrison's textbook of medicine. Anybody heard about that? It's our Bible basically for the medical students. And in that textbook of Harrison, there was a report, or there was a research finding which was given, wherein two tribes were studied. And in one of the tribe, the blood pressure remained constant, and in some patients, the blood pressure actually reduced with age. And in another tribe, the blood pressure increased with age. Now, obviously, if I am saying this today, it has got to do with something about today's topic. So, anybody knows what the reason could be why the blood pressure increased with age? What could be the factor contributing to that? That is what I'm saying. Food habits and lifestyle. Okay, so technically with age, if your lifestyle is good, the blood pressure should not increase, rather it may reduce in some of the cases also. And in the other tribe, where basically they were staying close to a modern city, so the eating habits had changed. They were eating most of the foods what Dr. Nancy also mentioned, the processed, so those times there may not be super processed, but obviously the processed foods with more of salt, especially in that, sugars in that, the chances of blood pressure, hypertension increased. Unfortunately, if I go to the new textbook of Harrison, for the last 4 or 5 editions, I do not find any mention of that. Okay. So, in a sense, yes, lifestyle is important, but somehow we as doctors are also not taught the importance of lifestyle, food, etc. Now, because we are talking about health, let us understand the concept of health itself. What do we mean by the word health? So,
If we can understand health simply as a state of balance, are you okay with that? Can we understand health as a state of balance? I'm just trying to keep you awake, that's all. Are you okay with this definition? Understanding health as a state of balance. So what is the opposite of health? Any name for that? Okay, so the opposite of that would be disease, what can be seen as a state of imbalance. But the problem is, if you just consider it as two, health versus disease, technically you will not understand the importance of maybe yoga or integrative medicine or anything like that. So we have to incorporate one more condition, what is called as indisposition. What is indisposition? Indisposition also is a state of imbalance. But then now, how do you differentiate between indisposition and disease? So over here, disease is a state of imbalance which cannot correct by itself. And if you don't correct it, it can be harmful, and therefore over here you need medication. As against that, state of imbalance is something which arises from a fault in our diet and lifestyle. How many of you today morning you ate something, after that you had, how many of you had kulfi or that rabdi? How many of your stomachs full? अभी चाय है क्या? चाय के साथ बिस्किट वगैरह भी होने वाले हैं, तो बहुत खा के लीजिए, रात को क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा. आपको दवाई लेने की जरूरत है? टेक्निकली यहां पर दवाई लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस कंडीशन हैज अकर्ड सिंपली बिकॉज ऑफ समथिंग रॉन्ग आई डिड इन माई लाइफस्टाइल, एंड दिस कैन बी करेक्टेड बाय करेक्टिंग माई लाइफस्टाइल इटसेल्फ. यहां पर कोई दवाई की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ the point over here is, what if I keep on doing wrong things again and again? Yes, I'm sorry, I'm not going to talk in the medical language, though I'm a doctor, because frankly speaking, medical language will make you more confused. It will not give you any answers. Okay, जो labels होते हैं unnecessary है, and I understand this is not your age, most of you are young, इसलिए आपको ये टॉपिक शायद बोरिंग भी लगता होगा. आई अंडरस्टैंड दैट, बट बिकॉज यू आर नर्सेस, टुमारो यू विल नीड टू लर्न दैट. सो आई टीच एट द योगा इंस्टीट्यूट ऑल्सो, और तभी भी यही होता था. मैं बोलता था कि अगर आपको सही में योगा टीचर बनना है, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम टीचिंग, एंड देन आफ्टर दैट प्लीज गो बैक एंड रीड फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. नहीं पढ़ते थे. बाद में जब योगा टीचर बन जाते हैं और कोई पेशेंट आ जाता है, तब पसीना छूटता है, फिर वापस पूछने आते थे. सो यू हैव एन ऑप्शन, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम द फर्स्ट ईयर? हाउ मेनी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर? रेज योर हैंड्स. सो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो अभी थोड़ा पास आउट होने के लिए आए हैं, थोड़ा अगर आप सुनते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा. So the problem over here is that diseases do not occur overnight. अगर मैं बार बार वही खाना खाते जाऊंगा, बार बार वही गलतियां करते रहूंगा, what Dr. Vinay mentioned, ब्रेन के अंदर there are, जैसे एक थर्मोस्टैट होता है, यहां पर सेट पॉइंट्स होते हैं. The word for that is a set point. अलग अलग चीजों के लिए आपका सेट पॉइंट होता है. आप जब बार बार कोई गलतियां करते हो, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हो, आपका ब्रेन का जो सेट पॉइंट है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन फॉर सम टाइम इट हैज रिमेन, लेट अस से फॉर यू वॉट एवर इज एवरेज, लेट अस से 56-60 के आसपास अगर रहा होगा, अगर आपने ज्यादा खाना खाया, आपका वजन बढ़ गया, ऑटोमेटिकली उसके बाद आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका वजन करेक्ट हो जाएगा. लेकिन एक बार या बार बार आप गलत खाना खाने लगते हैं, धीरे धीरे आपका वजन 60 से लेकर 75 हो गया. अभी आप कुछ भी करो, चेंज करने को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन ने यहां पर सेट पॉइंट डाल दिया है कि आपका नॉर्मल वेट 75 है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर वेट. एंड सेम थिंग ऑल्सो फॉर ब्लड प्रेशर. बोलो, देयर आर सो मेनी थिंग्स. कितना खाना खाना है, कभी सोना है,
कभी उठना है, कितनी नींद चाहिए, ये सबके सेट पॉइंट्स ब्रेन के अंदर है. एंड विच इज वाई देयर फोर अनफॉर्चुनेटली यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यस, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी है, लेकिन हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं. इसलिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? पॉप अ पिल. सो एज ऑफ टुडे एंड आई एम श्योर आपको 30-35 तक अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. लेकिन जब बेसिकली आप 40 के आसपास चले जाओगे तब तक आपकी सब आदतें इतनी पकड़ी गई होगी. एंड इफ यू आर रियली स्टिल प्रैक्टिसिंग नर्सिंग और सो, आपका लाइफस्टाइल जो है पूरा टॉस में गया होगा. दैट डे बेसिकली आपको समझ में आएगा, बट बाय दैट टाइम आपको चेंज करना भी डिफिकल्ट जाएगा. इतना बात ध्यान में रखिए. ओके, सो अनफॉर्चुनेटली अगेन आजकल का जो मीडिया है वो भी इसको प्रमोट करता है. एक एडवर्टीजमेंट आती है जहां पर बेसिकली एक औरत है, बहुत काम कर रही है घर में, अचानक कमर में दर्द आता है. ऑल ऑफ यू नो दैट एड. क्या होता है? आइडेक्स मलिए, आगे काम पे चलिए. दर्द क्यों हुआ? दर्द क्यों हुआ? काम कर रहे थे, तो काम करने के बाद अगर दर्द हो गया है, दैट वाज द फर्स्ट सिग्नल गिवन बाय योर बॉडी टू यू. हमको क्या करना चाहिए था? मुझे रिलैक्स करना चाहिए था, थोड़ा आराम करना चाहिए था. एडवर्टीजमेंट क्या बोलती है? हस्बैंड को, वाइफ को क्या बोलना चाहिए था? आराम करो, मैं थोड़ा काम करता हूं. रादर देन दैट हस्बैंड जो है वाइफ को गोली देता है और बोलता है काम पर लग जाओ. ओके, देन बेसिकली एक दूसरी एडवर्टीजमेंट आती है जिसमें अचानक वो समोसे वगैरह खा रहा है, एसिडिटी हो जाती है. आपको क्या करना है? नहीं, गोली खाओ, एसिडिटी दूर करो और बहुत सारा खाओ. नाउ दिस इज हाउ बेसिकली द मीडिया इज सॉर्ट ऑफ करप्टिंग अवर माइंड्स ऑल्सो, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कर सकते हो, जस्ट गोली खाओ, आप सब ठीक हो जाओगे, आपको कोई जिम्मेदारी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. दूसरा एक लड़का आता है, कुत्ते के साथ मस्ती करते रहता है, कुत्ता उसके बाद पीछे भागने लगता है, तो क्या करता है? ग्लूकोज की गोली खाता है ताकि उसको बहुत एनर्जी आ जाए. तो ग्लूकोज क्या है? एनर्जी ड्रिंक है. यहां से हमारी शुरुआत होने लगती है. एंड दिस इज हाउ बेसिकली वी ले द सीड्स ऑफ आवर ओन इल हेल्थ. अचानक नहीं होता है, कोई भी बीमारी ओवरनाइट नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, you are going to be nurses, so you may not be directly involved in the treatment unless basically what Dr. Vinoy mentioned, that because you are trained, आप योगा का नॉलेज वगैरह लेके आप हीलिंग कर सकते हो. यू कैन बिकम अ थेरेपिस्ट, नॉन मेडिकल सर्टनली. लेकिन अगर ये करना है देन फॉरगेट अबाउट अदर्स. आपको शुरुआत आपके खुद से करनी पड़ेगी. अगर आपने खुद ने कुछ फॉलो नहीं किया है, आप दूसरे को कुछ बता नहीं सकेंगे. एंड फॉर दैट रीजन मैं जो बोल रहा हूं वो आपके लिए है, बट आई स्टिल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू आर यंग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. इट्स ओके, पास आउट होने को आए, बाद में आए तो याद कर लेना कुछ बोला था. ओके, कम बैक टू द कॉलेज, प्रिंसिपल से वापस कुछ नोट्स वगैरह मिलेंगे या वीडियोस मिलेंगे तो यू कैन गो थ्रू दैट. इट्स ओके. सो वीडियो जो बनाया है आज शायद आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टोर करके रख दीजिए. 15-20 साल के बाद अगर जरूरत पड़ी देन गो थ्रू दैट प्लीज. ओके, सो इन अ सेंस एज आई सेड, बीमारियां ओवरनाइट नहीं होती, हम बेसिकली उसको क्रिएट करते हैं बट नॉट टेकिंग द केयर टुडे, एंड देन वी बिकम डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन. एंड देयरफॉर फ्रॉम इन अ सेंस व्हाट इज योगा मैनेजमेंट? योगा मैनेजमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट अवेयरनेस. एक अवेयरनेस जो था कि बेसिकली क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये एक प्रकार का अवेयरनेस हुआ. दूसरा अवेयरनेस होता है सेल्फ अवेयरनेस. हमारे पास कितने सेंसेस है? रॉन्ग.
हमारे पास हजारों सेंसेस हैं। हमारा ब्रेन जो है वो सब कुछ जानता है। योर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज टेलिंग योर ब्रेन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी। आप अगर खाना खाते हो, कौन सा खाना खाने के बाद आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है आपको पता चल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट टॉट टू बी अवेयर। हम खाते जाते हैं, तकलीफ होते रहती है। आई बिलीव आपको योगा के सेशंस वगैरह भी होते हैं, नहीं होते? ओके ग्रेट। एक छोटा सा ओके गुड, एक छोटा सा योगा करेंगे, सिंपल चीज। 2 मिनट आंख बंद करके बैठिए, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स and focus on your breath. Okay, slowly open your eyes. Now technically it was not about meditation. I just wanted to see how many of you are able to keep your eyes closed for 2 minutes. Almost 30% started becoming uncomfortable within 20 seconds. Why? The problem is we are not connected with ourselves. आंख बंद करके खुद के अंदर ध्यान देना एक बहुत बड़ा कार्य होता है हमारे के लिए। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल। जो 5 सेंसेस आप बोल रहे हैं ना, वो 5 सेंसेस हमको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा ऐसे हजारों सेंसेस है जो हमको अपने आप से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए कहां पर झांकना पड़ेगा? अंदर झांकना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। और इसीलिए बेसिकली 20 सेकंड के अंदर सबकी आंखें खुल गई, किसी किसी के मुंह पर हंसी आ गई, होता है, इट्स ओके, इट्स नॉट अबाउट यू। बेसिकली दिस इज हाउ वी आर ट्रेन्ड। तो अवर बॉडी इज ऑल गिविंग अस सिग्नल्स, वी आर नॉट ट्रेन्ड, वी डू नॉट गिव इट इंपॉर्टेंस, दैट्स ऑल। अगर आप खुद के ऊपर ध्यान रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलत किया। आपका शरीर आपको क्या सिग्नल दे रहा है, आपको पता चल जाएगा। आपने गलत खाना खाया, आपका पेट बिगड़ जाएगा। अगर ध्यान दोगे आपको पता चलेगा। आपका पेट कितना भर गया है, ये आपको स्कोपी करके अंदर झांकना नहीं पड़ता, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि मेरा पेट भर रहा है, मुझे भूख लगी है या नहीं, टी टाइम हो गया है इसलिए मुझे चाय पीना ही है, या मेरा पेट भर गया तो मुझे नहीं पीना है, बिस्किट नहीं खाने हैं। ये कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं समझाएगी। एज ऑफ नाउ यू आर यंग, आपके शरीर की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, हीलिंग अच्छा होगा, इट्स ओके, आप कर सकते हो। लेकिन आदत थोड़ी थोड़ी अगर हो सके शुरू करो, लेटर ऑन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। ओके, सो द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज अवेयरनेस। द पॉइंट एज आई सेड, आपके शरीर को सब पता है, आपके दिमाग को सब पता है, you are not paying attention to, that's your problem. And then you are inviting a disease, you are becoming dependent on a medicine, that's your problem, nobody else's problem. और योगा यही सिखाता है कि योगा makes you self dependent। खुद के ऊपर फोकस करो, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस, एंड दैट वुड देन इंक्लूड, मतलब अवेयरनेस होने के बाद क्या खाना है, कितना खाना है वगैरह, वो एक चीज समझ में आ जाएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ऑल्सो, रूटीन्स और डिसिप्लिन्स जो कुछ होते हैं, कब उठना है, कैसे क्या करना है वगैरह, ये 2 चीजें मेन होती हैं। बट देन व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको मालूम है क्या खाना है नहीं खाना है,
फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के लेक्चर से पहले आपको मालूम था किसके अंदर मतलब क्या कैलोरीज होती है, क्या खाना है नहीं खाना है? आपको सबको मालूम है. नॉलेज इज नॉट द प्रॉब्लम, यू ऑल हैव द इंफॉर्मेशन. सब मालूम होने के बावजूद भी हम इंप्लीमेंट नहीं करते. हम यूजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपना मोटिवेशन लूज करते हैं. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, टुडे यू मे नॉट बी हैविंग प्रॉब्लम्स, देयरफॉर यू विल नॉट रिलेट विथ व्हाट आई एम सेइंग टुडे. जो 30-40 के ऊपर है, दे माइट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. बाकी सबके लिए ये सर के ऊपर से जा रहा है, बट स्टिल इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर टू यू, देयरफॉर वी आर डूइंग इट. Either this is not my priority, as simple as that. Frankly speaking, health is not our priority. अगर हेल्थ प्रायोरिटी होती तो जो मुझे मालूम है कि गलत है मैं वो ना करता. अनफॉर्चुनेटली हम अपने ही शरीर को अंडर वैल्यू करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते. और अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते तो वही होगा, जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो ही जाएगा उसके अंदर. सो इट इज अवर लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अवर ओन बॉडी, अवर लैक ऑफ लव फॉर अवर ओन बॉडी, बिकॉज ऑफ विच वी आर इन्वाइटिंग डिसीजेस फॉर अवर सेल्फ. एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो देर आर मेनी टाइम्स लॉट्स ऑफ डीमोटिवेशन, मतलब कुछ एंग्जाइटी वगैरह भी होते हैं. सो टुमारो इफ यू बिकम अ नर्स, देयर विल बी लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू. योर प्रायोरिटीज विल चेंज. अगर आप चाहे तो भी खुद के ऊपर फोकस नहीं रख सकेंगे. ओके, सो टुमारो इन अ सेंस, ओके, आई डोंट नो, मे बी समटाइम्स 50% डोंट एक्चुअली वर्क एज नर्सेज. एक सर्टिफिकेट मिल गया, काम हो गया, अच्छा लगा, आराम से बैठो. 50% विल वर्क एज नर्सेज, एंड देन यू विल सी द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट गोज ऑन इन द मेडिकल फील्ड. कैसे आपको जागना पड़ेगा, शिफ्ट चेंज होती है तो कैसे क्या नींद खराब हो जाती है. 10 मिनट के अंदर खाना खा के काम पर लगो. कभी कभी खाना खाना ही मत, क्योंकि वहां पर 10 पेशेंट्स पड़े हुए हैं. अभी सब बराबर है ना? सर ने पूछा खाना किसको खाना है, ब्रेक लेंगे या नेक्स्ट स्पीकर को बुलाए? सर ने पूछा, सर ब्रेक लेंगे. आज चलेगा आपको, कल नहीं चलेगा, कोई पूछेगा नहीं. खाना खाने की बात भी करेंगे ना, नौकरी से निकाल देंगे. दैट इज हाउ लाइफ विल बी फॉर यू टुमारो. और जो हम चोचले बोलते हैं जैसे, आज सब करवा के ले लो. ओके, सो टुमारो लाइफ विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू, एंड देन बेसिकली जो नॉलेज है उसका भी कुछ काम नहीं होगा. ओके, सो इन अ सेंस लेट अस एग्री विथ इट कि आज हमको, ओके, सो माय टाइम इज एंडिंग. So, along with lifestyle management, you will also need to go through stress management. The two types, in a sense, एक psychosomatic connection रहता है. Technically, mind is supposed to be the controller of everything. मुझे क्या खाना है, जैसे कि मैडम ने बताया कि आप जो खाते हैं उससे आपका मन बनता है, बराबर, लेकिन हमारा मन तय करता है कि हम क्या खाएंगे. सो टेक्निकली ऑल द ऑर्डर्स कम फ्रॉम द माइंड. आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप. सो टेक्निकली द माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग. सो अगर आप माइंड को ठीक करेंगे, फिजिकली आप फिट रहोगे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है. और इसलिए दूसरा एक कनेक्शन होता है सोमैटोसाइकिक, एक रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं, कि जो बॉडी है वो भी आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती है. ओके, सो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब तरीके जो है, व्हाट आर वी डूइंग थ्रू दैट? थ्रू द बॉडी वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द माइंड. ओके, सो फाइनली माइंड को कंट्रोल करना है, चाहे डायरेक्टली माइंड से कंट्रोल करो या बॉडी के थ्रू कंट्रोल करो, दैट्स इमटेरियल. लेकिन अगर आप कर पाओगे देन बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है. एक रिसर्च भी किया गया वहाँ, जहाँ पर देखा गया कि एज यू डू मोर एंड मोर आसनास वगैरह प्रैक्टिस करते हो, कहीं ना कहीं मन शांत हो जाता है. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल मैम एंड एवरीबडी फ्रॉम द योगा हरियाणा योग आयोग ऑल्सो, के स्टूडेंट्स के लिए योग थोड़ा शुरू कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा.
थोड़ा सीरियसनेस आ जाता है, सिंसियरिटी भी आ जाती है, माइंड भी शांत हो जाता है, योर एबिलिटी टू हैंडल प्रॉब्लम्स ऑल्सो रिड्यूसेस. ओके, सो फाइन, थैंक यू. Thank you very much, sir, for sharing your deep knowledge about mind, yoga, and gut health. I'm sure they will definitely, our audience will inculcate the yoga routine in their daily regime. करोगे कि नहीं योग को? Yes or no? Yes. थोड़ा जोश से बोलिए भाई, करेंगे. यस, ये हुई बात. और योग, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि योग सिर्फ करने की चीज़ नहीं है, योग अपनाने की चीज़ है. ठीक है, जब तक आप जो योग की जीवन शैली को अपनाएंगे नहीं, आप उसको उसके एसेंस को आप अपने अंदर फील नहीं कर सकते. कि सिर्फ 1 घंटा आसन कर लिए, 1 घंटा थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, ऐसे नहीं. आपके व्यवहार में वो चीज़ झलकेगी तो आप खुद उसका असर देखेंगे. अगेन नाउ आई रिक्वेस्ट जयदीप सर to present memento to sir as a token of love. Big round of applause. आज हमारे क्लोजिंग सेरेमनी का क्योंकि समय हो चुका है और हमारे एक फॉरेन स्पीकर भी लाइन में हैं, तो अभी उनका स्पीच होगी और उसके बाद 10-10 मिनट की 3 स्पीच होंगी. आज हमारे साथ आदरणीय संजीव दोसांझ जी हैं. संजीव दोसांझ जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं. आप डीडी न्यूज़ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के डायरेक्टर हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो को भी कवर करते हैं. उनके अंतर्गत ये पूरी चीज़ें हैं और वो आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील जोशी जी. जब वो आपके बीच में ये दोनों हस्तियाँ आएंगी तो आपको अनुभव होगा कि वो कितनी बड़ी हस्तियाँ हैं और वो कितने समय के लिए, आप कितना प्रीशियस उनका समय और वो टाइम निकाल कर आपके लिए आए हैं. तो एक बार आपसे मेरा निवेदन है, ज़रा खूब ज़ोर से उनका अभिनंदन कर दें. और हम अनुज जी जाइए, ज़रा बुके ले आइए जरा. और हम चाहेंगे आदमी भाई हमारे दोसांझ जी का भी हम अभिनंदन करें मंच पे भी. जी आदरणीय यहाँ पर आ जाइए, ईश जी आएंगे. ईश आर्य जी हमारे पतंजलि और हमारे हरियाणा योग आयोग के सदस्य हैं. आदरणीय नरेश जी आएंगे. भाग कराइए जरा तेज़ी से, जरा स्पीड थोड़ी सी तेज़ करो अपनी, जरा दौड़ लगाने की आदत बनाओ. हाँ, संजीव दोसांझ जी का जोरदार अभिनंदन. और हम इनके साथ मिलकर अब योग की एक सीरीज़ भी डीडी न्यूज़ के ऊपर संचालित करने वाले हैं. उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है और स्मिता जी उसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले करने वाली हैं. ओवर टू यू. हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए अभी हमारे साथ यूएसए से जुड़ेंगे मैडम हरविंदर. अभी 2 मिनट उन्हें समय लगेगा. तब तक आप लोग अपनी आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दें तो आपको और अच्छा महसूस होगा. डीप ब्रीदिंग कीजिए, कुछ देर आंखें बंद कीजिए. डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल. हमारी सांस पे ध्यान देते हैं उतना हमारा मन जो है कंट्रोल में आता है. ठीक है, तो अभी जो इतनी लग रहा है कि कब तक बैठना है, अभी बहुत टाइम से आप लोग बैठे हैं, तो आप चाहें तो अगर आपका ये करने का मन नहीं है तो उठ के एक बार ताड़ आसन कर लीजिए. थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स. एक बार सभी खड़े हो जाइए. यस यस, रियली वेरी नाइस. डीपली इनहेल, ऊपर ले जाए.
साइड स्ट्रेचिंग्स इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लें बॉडी को साइड वाइज. यस, गुड. बैठ जाइए सभी. कि इनको थोड़ा सा जूम पे वहाँ पे ना बिग स्क्रीन पे आ. Now we have with us Madam Harvinder, and she is from USA. She is joining with us from USA. She is BA and BSc Nursing, worked in Oswal Cancer Hospital in Ludhiana, nursing supervisor. She is in USA since 1993 and passed registered exam in USA and working in Array County Medical Center, USA. And she has cardiac nurse experience as a cardiac nurse for 9 years and has experience in various areas. Ma'am, we welcome you in the national conference on integrated approach to gut health, and over to you. Yes, ma'am. So much. Good morning, good evening to everyone. It's good morning for us. I'm going to talk about the pre-op measures of the surgeries. I won't take that much time, but I will take the basic things. First, we, as a nurse, we have to make sure that everything is right for the patient, and we are basically the leader for the patient too. And number one, we use like a consent. If the surgery patient is going to have a surgery, so we need a consent. It means like the patient is willing to have a surgery. If the patient, and we have to make sure the patient is alert and oriented, they know what's going on. It's not patient confused and we make them to sign. And patient should ask the question. If there is a question, they get confused, or with the surgery, they don't understand, so we make sure they understand. And if patient didn't understand the procedure, and then the doctors again explain them procedure in the simple wording so they can understand what's going on, and then they sign on the consent. Then another more important stuff is in the USA, full code. DNR, DNI. DNR is a do not resuscitate. It means something happened to the patient and they're not pumping their chest to make them to survive. And DNI is intubate. Like if something happened, they're not going to put tubes in their throat. So patients have to be aware for that in case something happened in a surgery, so we know the patient's wishes. And we want to ask the patient if they already have the form, so we can take the copy of the form. And then we do the health proxy. If patient do not want to do the patient, and we have to have somebody's number who is in charge for the patient, and they know patient's willings if patient want to do it or not. So they sign on the health proxy, and they can make a lifetime decision for them. Then anything is HIPAA law, so we always talk to the person who is in charge, whoever patient believe on that this patient will do right things for me, so we appreciate to them and we do make a decision with them. And then another important thing is history and physical.
when we have to understand that we know patient's history, what kind of disease they have, and what kind of allergies they have, and what kind of meds they have. Because some of our meds, they can get allergic reaction if we give each together. And we make sure that patients not on a blood thinner medicine. That's very important. Anything over the counter they buy, we have to make sure that if they're taking any blood thinner to thin the blood, so they have to stop 1 week before the surgery or any kind of procedure. And a lot of patients we are seeing, people are allergic to the latex. Myself, I am allergic to the latex too. I was using it a long time, I work in the OR in India. So we were using, but now I am allergic to latex. I think it's keep on developing that. And also, it is very beneficial to know the patient have any past reaction to the anesthesia. That's we make sure that if they have anesthesia and that happen, so we can use different kind of meds and different approaches to that. And another thing for the patient, we have to make sure that if patient is having pacemaker or patient have ICD, because a lot of medicine or for the lower the blood pressure, if we have to shock them in case something happen, so we want to know these things, so we're not damaging these things for the patient. We want like patient comfort and less the mortality rate for the patient. And another thing we have to, in addition to history and physical, we want to make sure the patient have all their pre-labs. So they check for the for all labs for the basic things, and they want like a liver test because of liver is the first one if somebody's liver function is high. So with the anesthesia, they can go in a coma. So this is very important to make sure that they have a blood work done, and we do EKG, X-rays, SGI. So we have to make sure they already took a prep for the before the surgery, because they want to clean the bowel. So then so they can operate the patient very right way. And patient education is very important, and that's get provided by the doctors and nurses. We educate the patient about the risk and benefits of the procedures. This is very important to explain them, so they are like mentally and physically they are prepared for that. They also includes the teaching the patient about post-op intervention. So when the pre-op surgery, so we start preparing them for the post-op to decrease the complication for the patient. We do like a yoga, we do like exercises as yoga exercises, deep breathing exercises. So we do deep breathing exercise, we train them with that, and we have one, we call it integrative spirometer. So that's you blow the air into that and hold it. So it's basically we do yoga with the patient with that one too, before they go for procedure. And it is very hard to understand them sometimes, and we give them pamphlets. So we have a pamphlets in a hospital with the pictures. So we show them the pictures, how this procedure will happen. So then they are prepared for that. Some examples we can teach them pre-op time for the post-inventions too. So we teaching them for the basic is if somebody's having chest surgery, so we have to teach them for the breathing exercise that they don't get any pneumonia. It's also recommended for the patient to take the medication prescribed as do at the range, and we make them to move their legs and make them so they're doing exercise for the legs so they don't have any clot in the legs. And another thing, we have a pre-op checklist. We have to make sure that we go through the checklist, and we have to make sure patient have everything. This is very responsibility. So it's a doctors and nurses, we work together as a team so that both can do the nurses check before they send patient to the OR. So we check the basic checklist. However, it depends on the type of surgery. If it's GI surgery or another kind of surgery. Some of the stuff is a little bit, like for the GI, I said that the patient have a colon prep. So they drink the medicine
before the surgery, 24 hours we have policy. We do that, and we make sure the patient's GI system is get clean and they get a clear diet before the surgery. And before 24 hours, we do nothing by mouth. So we don't want patient, aspirate with the anesthesia. Then it's all about patient safety. We want to make sure the patient had followed the instruction, whatever the instruction was given to the patient, to prep their area at home, take a shower, and clean their body parts where they're going to have a surgery, and it get prepared with that. And we make sure the patient didn't eat anything, so it's no cheating there. Especially the surgeries are require anesthesia, so we have to make sure that patient don't die on the table for you. And then just before the surgery, we still not done with them, and we still do the timeout. This is very, very important for us to do the timeout. It's doctor or nurses. Anybody can do the timeout. It's doctors or nurses. So in a timeout, we make sure that patient have, we read the patient name and their medical numbers we have, and they have the name bands. So medical numbers, patient name, date of birth is written on the band. So one person read the medical numbers with the chart, and then other person make sure that the name band is right and it's the right patient, and we ask the patient too that this is your name and what's your date of birth. So we make sure that these things are patient safety is get done. Then if everybody is okay, if anybody else have question in the OR, so then they don't do until everybody's agree with that. And we make sure that which part is they're going to operate, and then they mark the part, and then they proceed the surgery. So these are the general things we do before the surgery. So we basically prep the patient for post-op to decrease the complication, so they don't get pneumonia or they don't aspirate. So it's like a less timing they stay in the hospital and decrease the mortality rate of the patient. And that's all basically we do before the surgery. If anybody have question, I can answer for that. And thank you so much for having me. Hello, audience. Any questions you want to ask from ma'am? Okay, thank you so much, ma'am, for sharing your words of wisdom with us. Thank you so much. You're welcome. Thanks for having me here. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, Jo, Harvinder Triwana, ma'am. Harvinder Tiwana ji, very thankful to you. You have spared your. आप तक आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? आपकी प्रिंसिपल मैडम ने आते ही मुझे सबसे पहले कल एक ही बात कही कि आपका योग सेंटर बनना चाहिए, और उसमें तो इसका मतलब आपके लिए कितनी केयरफुल है वो, है ना, एक प्राचार्य भी और एक माँ भी और एक गुरु भी। जब पहले ऐसा लगता है कि बहुत सख्त हैं, परंतु जब आप प्रिपेयर होकर बाहर जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि कितनी पीजीआई का आप नाम रोशन कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि चाहे बहन डॉक्टर नीना जी हों, चाहे उनकी टीम हो, दे ऑल आर 100% डिवोटेड टू देयर ड्यूटीज़। तो आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में जो भागीदारी किया, हम समापन की ओर हैं। कुछ आसन करके बताएंगे बालाजी।
क्या बात। योग की यही खूबसूरती है कि इसको कोई भी एज में कर सकते हो आप, है ना, लाइफ लॉन्ग कर सकते हो आप इसको। तो कई गेम्स होती है, गेम्स तो हमें रिटायरमेंट लेनी पड़ती है उसमें, लेकिन योग जो है हमें हमेशा स्वस्थ रखने के लिए बिना किसी खर्चे के आपके साथ रहता है हमेशा। अगर आपने एक बार करना शुरू कर दिया, आप इसके बगैर रह नहीं सकते। यही ये चीज़ शो करता है। बहुत बढ़िया। देखिए, योग के लिए ना कोई ज़्यादा साजो सामान की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक मैट चाहिए हो और आपका मन हो तो आप उसको कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत बढ़िया। ये आप सभी जो अभी हमारे यंगस्टर हमारे साथ बैठे हैं, आपके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप कोई ये नहीं सोचे कि भी अब हम क्या करेंगे योग करके। योग आप कभी भी कर सकते हैं। अभी आप करने वाले हैं मयूर आसन, ठीक है। ये एडवांस आसना के बीच में आता है। बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है। अक्सर जो है लेडीज उसको करने में डरती हैं, लेकिन इसके अपने बेनिफिट हैं इस आसन को करने के। सो थैंक यू सो मच बाला मैम, आपका। ठीक है जी, वेरी नाइस। एक बार जोरदार तालियां। Now I request Dr. Pramod Avti ji from Department of Biophysics, PGI. Please give a big round of applause. सर यहाँ से ना, यहाँ से आगे करना है आपने। यहाँ से आगे आगे करना है। यहाँ से? हाँ जी। ठीक है। Okay, so at the onset, I'd like to say good evening all, one and all, and thank you for giving this opportunity. Thank you for giving this opportunity. I would like to once again thank the entire team of Haryana Yoga AAYOG, then 9, as well as the CCRYN Collaborative Center for Mind-Body Innovation through Yoga, which is situated at the Research B block. The Research B block, which is close to post office, where you see, I mean, most of you are aware of, and has most of the speakers since morning has already given you about the gut health and the integrative approaches which can be used to have appropriate the health condition of the gut, which would help not only about your physical health, but as well as that would also support for the mental health. And that is where most of you can look for this yoga department or the yoga center, which is at Research B block. And this has been set up in 2021, 26th of January, 2 years back. I mean, it's almost been more than 2 years back. And across the center, and the then director, the able leadership of the ex-director of PGI, Dr. Jagat Ram, and the Guruji, Dr. HR Nagender,
the center was established and started, and from then on, the center, a lot of activities have been carried out. Unfortunately, today, Dr. Akshay Anand, who is the main professor in charge for the center, could not make it, else he would have addressed this gathering affluently. But in his place, I would like to say that on behalf of this center, we would extend our support to all those who are interested to carry out the yoga related practices. Most of you may or may not be aware of that we do have a yoga center at PGI in the 6th floor, which is situated in the office of 6004 on the 6th floor of Research B block. And at present, we are having a team led by Professor Akshay Anand, then myself, and we have one more faculty, associate professor from the secretary department. And this is how the center looks like. Of course, I'm not going to give you an elaborate discussion about the gut health and the integrative approaches, but I'm going to show you the way that how you can actually achieve this by getting to our center. So I hope this would not be the routine lecture, as most of the eminent speakers since morning had given a lot of information on, but I'm just going to provide you the details where you can directly approach the center and can start practicing your yoga. And this is how it looks. This is the recent makeshift center, which is on the 6th floor of Research B block, room number 6004. Whoever is interested can, we will be leaving out some contact details, email addresses and telephone numbers where you can approach and you can look into the concerned, if not the faculty, the yoga therapists, etc., where I'm going to leave some information for all of you. So at this center, we do have the guest faculty from all over the world, and they provide from time to time the feedback to the center in terms of not only the different types of the modules, what should be carried out, how they should be carried out, for the people who are interested, for the patients, as well as the attendants who are attending the patients in their leisure time. They can also come and join the center. Apart from that, there are many other activities which we are carrying out since 2001, January 2001. It's been more than 2.5 years now, or close to 2.5 years, I can say. And we have carried out large number of activities. I'm not going to elaborately show all those activities, but I'm going to briefly highlight what are the different kinds of activities which have been carried out. And as you can see in our panel, guest faculty panel, you see different faculties from all over India as well as across the globe. They are in touch with us and we are in touch with them, and we are trying to develop different modules, and those modules benefit the requirements of the common people, the patients, depending on the type of the disease, what kind of the different yoga protocols should come up, etc. And based on that, we have carried out some of the recent activities with the help of some of the staff, where in this center we do have research officers, 2 of them, yoga therapists, 2 yoga therapists, and we have 4 spokes as well as 1 MTS. And it's not just this, but very soon we will be having the increase in number of our staff at the center, where research officers number would be increasing, yoga therapist number would be increasing, as well as the spokes number would be increasing. And hopefully very soon, maybe within next 2 months, we see that the spokes number would be increasing very soon, and the approval is already in place. And routinely on a daily basis, you see the list of the activities what are being carried out at the center. And
Not only about the yoga practices, we do carry out the research activities related to the yoga, and the center has funded 5 projects which are being carried out at different departments at PGI. Not only that, the MD thesis are also being carried out and using yoga intervention. So these are some of the photos and the activities what we have carried out over the last couple of years. And this is what we have carried out the last year, the yoga event on the International Yoga Day. And whoever is interested can join some of the online courses as well, and the classes which are being carried out on the Yoga Scholars link. And you can reach us through Facebook as well as Instagram. And this is our center's website where anyone interested can go through that. And we are also carrying out a journal which would publish the yoga related research. Whoever is interested in carrying out the research, and once they have their results of the yoga related research, they can even get their studies published through this journal. Yeah, so this would be the next event where we'll be focusing more on 21st of June next month. Okay, thank you. Thank you, sir, for sharing your views. Now I would like to request Dr. Aruna from Yoga Department of CCRYN, PGI. Ma'am, you have to complete the lecture in 5 to 7 minutes. So good evening, everyone. Thank you very much, the organizers, for inviting me to this platform. And I'll really not take much time. So the eminent speakers since morning have spoken so much about gut health and holistic approaches that just consider my presentation as a summary of these things and few points that I would like to emphasize. So Dr. Sapnananda in morning emphasized on gut-brain axis, and stress is the part of our daily lives. And due to stress, either it's in psychological form or in a disease form, is leading to many gut diseases. So as an old saying says, prevention is better than cure, but these days our balance is more towards the curables and not the prevention. So we are focusing more on the cure than prevention, and that has been emphasized all through the morning today. So cure considers, modern days medicines, homeopathic, Ayurvedic medicines, and even the stem cells, which is my field currently. And prevention includes yogic science, Ayurveda, and healthy habits, healthy food habits, and healthy living habits. So yoga science is very important, and as Dr. Pramod has already pointed out that we have this yoga center in PGI itself. All of you are most welcome to join in for different yoga classes as per your time suitability. And this figure is just showing that how to balance your solar plexus chakra for digestion by different yogic postures, and that can be easily taught. So Ayurveda, as has been emphasized again, so Ayurvedic diet, considering as many speakers pointed out, the sattvic diet and all, and the compatible and incompatible foods, the combination, for example, protein and carbohydrates. So we have to take these things separately, as for example, carbohydrates are digested very quickly and proteins are not. So we should have this realization what foods to be taken together and not. So in the curative therapies, stem cells play a great role these days, and stem cells therapies are going on, and many clinical studies are concentrating on using mesenchymal stem cells in immune regulation, damage repair, when the system is not working fine, the digestive system. And as Dr. Atul also pointed out about the gut microbiome, stem cells are contributing to
having a balance in the gut microbiota. So what my emphasis right now with this presentation today is, many of the students here must be working on some projects and might aspire to work on some projects using integrative medicine and different disease states. So we have this journal that is led by Dr. Akshay Anand, and I'm the managing editor of the same journal, Integrative Medicine Case Reports. We welcome the latest case reports in the field of science. And the beauty of the journal is that, you can just submit a case report which is on a person-to-person basis. You are doing something, some, yoga asana or Ayurvedic medicine or any integrative medicine, holistic approach. You can test it on someone over a period of time, document it and publish it. How to publish it? Just go to MCR website, and the structure, follow the general structure of abstract, introduction, case presentation and discussion. So incentives of such a thing is that, there's an awareness and scientific justification of integrative approaches. Nowadays, you tell somebody do this, they ask for a logic towards it. And it is very important to note these findings and publish it. So we, through PGI, provide this platform in the form of this journal, Integrative Medicine Case Reports, to publish your findings. And we have no article processing charges as of now, and the decision of accepting or rejecting the article is done within 2 weeks. And we have a vast editorial board which consists of international members, and many of them we have, talked and heard today also. Yeah, so this is all I wanted to say. I encourage all the audience and especially the students here to publish their findings in the journal. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable views. Now, I would like to request Dr. Anupama Kaushal. She's working as a yoga instructor at Government College of Yoga Education and Health. She has 20 years of yoga teaching experience and delivered lecture in yoga in many esteemed institutes. Anupama, ma'am. थैंक यू डॉक्टर जसप्रीत। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी कि मुझे इस मंच का हिस्सा बनने का मौका दिया, और आप सभी सुबह से बहुत पेशेंटली बैठे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय आप सुबह से इस तरह से एंगेज्ड हैं, और बहुत सारा ज्ञान आपको गट से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, एमिनेंट स्पीकर्स हैं, उन्होंने आपको कोशिश की है इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देने की। तो मेरा आज का टॉपिक है नेचुरोपैथी। तो कोई भी जो शुरुआत होती है हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग, वो गुरुओं का धन्यवाद करने से होती है। तो आंखें बंद करके एक श्लोक के साथ आप इसका मनन करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च केन वैद्य योपाकरोतं प्रवनं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिं नातोऽस्मिन्। इस श्लोक में हम अपने गुरुओं का धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने व्याकरण के थ्रू हमें जो है भाषा का ज्ञान दिया, औषधियों के रूप में हमें वैद्यों ने औषधि के रूप की जानकारी दी। ठीक उसी तरह से पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने हमें सूत्रों से योग का ज्ञान दिया। तो उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इससे। हमारा जीवन में जो है हेल्थ की अपनी इम्पॉर्टेंस है, और उसके साथ खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि हमारी हेल्थ किसी भी रीज़न से ख़राब होती है तो हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते। तो इसीलिए हेल्थ एंड वेलनेस जो है हैंड इन हैंड चलती है। और
हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है, योर हेल्थ इज़ एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। आपको कुछ भी चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी पैथी, कोई भी थेरेपी, कुछ भी अपना रहे हैं, चाहे वो आपका आहार ही है, अगर आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको खरीदने हैं, तो उसके साथ मोल भाव बहुत ज़्यादा नहीं करें, उसकी इम्पॉर्टेंस देखें कि डॉक्टर के खर्चों से या बीमार होकर जब हमें कोई हमारे गलत खान पान की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी व्याधियाँ आ जाती है, तब भी हमें खर्चा करना पड़ता है। तो यदि हमारी डाइट पे हमें खर्चा करना पड़ रहा है, हम अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए खर्चा करना है, तो वो खर्चा काउंट नहीं होता। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। लाइफ स्टेजेस में आहार की बहुत ज़्यादा, राइट फ्रॉम फीटस टू ओल्ड एज, सभी स्थितियों में हमारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ हर एक एज स्टेज पे चाहिए, ठीक है। और हमारा यहाँ नेचुरोपैथी में कहते हैं कि पंच तत्व शरीर है, यानी कि हमारे शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से बना है और इसी में वापस विलीन हो जाएगा। तो यदि हम देखें कि अगर नेचुरोपैथी में हम मानते हैं कि 70% हिस्सा जो है वो वाटर का है, तो वाटर हमारे शरीर में कैसे है, जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर वो वाटर को डिनोट करते हैं। और जो पृथ्वी तत्व है वो सॉलिड बॉडी फ्लैश जो है उसको कह सकते हैं। श्वास जो आ जा रही है वो हमारी एयर एलिमेंट को दिखाती है। और स्पेस एलिमेंट हमारे जितने भी हॉलो स्पेसेस है बॉडी के अंदर, जैसे हमारा हार्ट अंदर से हॉलो है, या जितने भी ऑर्गन्स होंगे, बोन्स एंड अदर, जितने भी वेन्स एंड ऑल टिश्यू है, जहाँ पे भी स्पेस का एलिमेंट होगा वो स्पेस को, आकाश तत्व को दिखाता है। और अग्नि हमारे शरीर में 13 तरह की होती है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं गैस्ट्रिक फायर से, कि भूख लग रही है या अब कम भूख लग रही है, तो उससे आपको पता चलता है। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न रूप से स्थापित है, और जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तभी रोग की इसके अंदर आता है। जैसे कि डॉक्टर विनय ने बहुत अच्छे से पंचकोशास के साथ बॉडी, माइंड और स्पिरिट को रिलेट किया कि हमारे शरीर में 5 शीत हैं, जिनको हम कोशास भी कहते हैं योग की भाषा में। और अन्नमय कोश, अक्सर लोग जो हैं अन्नमय कोश पर ही सीमित रह जाते हैं कि भी हम जो मोटे हैं उनको पतले होना है, जो पतले हैं उनको वेट गेन करना है ना। तो आइडियली हम उस पर बैलेंस ही नहीं हो पाते, हम हर वक्त खाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हम अन्नमय कोश को स्वस्थ करते हैं, योग को अपनाकर, अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर, तो हमारा प्राणायाम और इसमें और हेल्प करता है ऑक्सीजन को एनरिच करने के लिए। और जब हम योग और नेचुरोपैथी को कंबाइन करके चलते हैं तो हमारे को मनोमय कोश को स्वस्थ रखने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है, और उससे विज्ञानमय कोश शुद्ध होता है। और फिर अल्टीमेट ब्लिस, यानी कि खुशी नहीं, खुशी का तो फिर दुख है, द्वंद्व, लेकिन हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो बॉडी में जनरेट होती है। नेचुरोपैथी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। देखो, ये एक प्रिवेंटिव वो है, थेरेपी में आती है, प्रिवेंटिव होती है नेचर में, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें ज़्यादा आपको घर का आहार ही अगर आपकी औषधि है तो आप ज़्यादा समय आपको नहीं लगता, क्योंकि घर का खाना ही अगर आपका अच्छा है तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, नॉर्मली नेचुरोपैथी में लोग तब आते हैं जब वो सभी पैथीज को यूज़ कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट आप लें, चाहे एलोपैथी लें, चाहे आयुर्वेदिक लें, एक्यूप्रेशर या एनी अदर पैथी यू वांट टू डू, तो उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो या उसको अपना उसका इफेक्ट देखना चाहते हो, तो उस पर फेथ ज़रूरी है। जब तक आपका फेथ नहीं बैठेगा तब तक आप उसमें उसका इफेक्ट नहीं ले सकते हैं। अब बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के लिए हमें आहार अच्छा चाहिए, माइंड के लिए हमारे जो है नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर नहीं हो, स्ट्रेस लेवल कम हो, और स्पिरिट में हमें गोल पता हो लाइफ का कि हमें करना क्या है। और अक्सर जो है फिजिकल हेल्थ को ही माना जाता है कि बॉडी में डिजीज़ आ गई है तो आप बीमार हो, लेकिन आपका सोशल सर्कल भी हेल्दी होना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है, आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी है। आप बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन आपके विचार नकारात्मक हैं या दूसरों को किसी तरह से डिस्ट्रक्टिव सोच का रखते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आपके शरीर और आसपास के समाज पे पड़ता है। तो सोशल हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है और इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी
उतनी है। और इमोशनल हेल्थ तो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग छोटी छोटी बातों पे सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें जनरेट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका आहार शुद्धि नहीं है, उनका विहार और आचार विचार शुद्ध नहीं है। हमारे यहाँ के 4 प्रिंसिपल्स हैं, इसके 4 पिलर्स माने जाते हैं। यदि आपका राइट कंडक्ट, आपको सही एक्शंस, आपको पता है लाइफ में क्या करना है, तो आप बीमार नहीं हो सकते। ठीक है, आपके विचार, आपकी सोच सही है, थिंकिंग सही है, बुद्धि सही से कार्य कर रही है कि क्या सही है क्या नहीं करना है, तो आप बीमार नहीं हो सकते। ऐसे आहार की शुद्धि राइट फ्रॉम फार्म टू फोक, यानी कि किसान जब से खाना वो उगाता है वहाँ से लेके आपके घर तक जब वो पहुँचता है, उसमें शुद्धि की प्रक्रिया रहनी चाहिए। तो जितना शुद्ध आप आहार ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा आप बीमारियों से दूर रहते हैं, ऐसा नेचर केयर कहती है। और विहार आपकी डेली रूटीन का बहुत महत्व है। यदि आपको अभी पूछा जाए कि सुबह कितने बजे उठते हैं, तो मोस्टली आजकल हेक्टिक शेड्यूल है, किसी की नाइट शिफ्ट है, ये क्या है, तो वो सर्कल डिस्टर्ब होते जा रहे हैं ऋतुचर्या और दिनचर्या के। लेकिन जब आप इसको हेल्दी अडॉप्ट करते हो तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हो। ठीक है, और इसी तरह से फूड की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब तक हम गट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम गट में डाल क्या रहे हैं, हम खाना क्या चाहते हैं। हम खाने की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारी सेंसेस, उनका भी आहार है। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या चखते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, तो ये सब भी हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। जैसे इंद्रियों का आहार है जो, उसके ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। आप एक वायलेंट मूवी देख रहे हैं और साथ में आप खाना खा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिव ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस के साथ मिक्स हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप चुगलियाँ कर रहे हैं, बैठे गॉसिप कर रहे हैं कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, उसके साथ उसने ऐसा कर दिया, तो आपको आपने जब खाना खाना है तो कहते हैं कि भाई 100 काम छोड़ के सिर्फ भोजन के ऊपर उसको वो प्रसाद की तरह, जैसे मैम ने भी बताया कि नैन्सी मैम ने, कि भाई प्रसाद की तरह ग्रहण होता था, उसमें बोला नहीं जाता, बातचीत नहीं होती, उसमें माइंडफुल ईटिंग होती है। तो माइंडफुल ईटिंग का इम्पैक्ट तब होगा जब आप अपने विचारों को, अपनी सेंसेस के फूड पे भी ध्यान देंगे कि मुझे खाना खाते समय क्या खाना है। ठीक है, आहार 2 शब्दों से बना है, अ मीन शरीर और ह्री जो है संस्कृत धातु है, जिसका मतलब है कोई भी चीज़, वस्तु बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करना। इसीलिए हेल्थ को वेल्थ कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में सप्त धातुओं के बारे में बोला जाता है, और वो तब नरिश होती है जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग है। अब बेसिक प्रिंसिपल मानती है नेचुरोपैथी कि आपके अंदर सर बस 2 मिनट में फिनिश करूँगी, कि जब तक आपके अंदर टॉक्सिक मैटर अकामुलेट हो जाता है तो आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से 10 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसमें वो रोग को ही कीटाणु ने, और एक्यूट डिजीजेस को वो नहीं मानते कि दस्त हो गए या उल्टी लग गई, या तो आपको ये उसका फ्रेंड मानती है नेचर, कि आपके अंदर कोई भी कीटाणु रहे नहीं, तो फ्रेंडली आपके साथ फीवर वगैरह हेल्प करते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, मेनी मेथड्स, जो हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी आदि से हम इसमें वो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे छोटे छोटे रोगों की जो हमारा घर में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे माउथ अल्सर है तो एलोवेरा जेल उसमें बहुत इफ़ेक्टिव होगी। अगर आपके टूथ में कोई भी कीड़ा लग गया या दर्द बहुत हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने के रात को टाइम नहीं है, तो आप गार्लिक को क्रश करके, सेंधा नमक घर पे है तो उसको लगा लेंगे तो आपको उससे राहत मिलेगी। और इसी तरह से अभी बहुत टाइम की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो आई एम जस्ट रीलिंग कि आप देख पाएँ कि हिकअप में अगर आपको बहुत किसी को हिचकी लग जाती है और ठीक नहीं हो रही है पानी पीने से भी, तो अदरक चूस सकते हैं। नहीं तो देसी घी होता है ना, गाय का देसी घी, उसको कोसा सा 2 चम्मच आप पी लेंगे तो किसी की भी हिकअप की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हाइपर एसिडिटी के 4 कारण होते हैं, बहुत हरिड मील खाना, स्ट्रेसफुल खाना, और स्पाइसी फूड खाना, और खाते ही लेट जाना। ठीक है, अगर आप इनको हटा लेते हो तो आप हाइपर एसिडिटी जो आगे चल के अल्सर का कारण बनती है उससे बच जाते हो। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है अपने आप में बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का घर है, और इसको दूर करने में नेचुरोपैथी में बस्ती सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, नेचर के पास रहें जितना ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। ओके, थैंक यू।
Thank you, Anupama, for the information. We have a last talk by Mr. Harshit Bansal. He's a scholar and a chief yoga faculty at Lebasna IAS Academy in Mussoorie. Had 2 world records at the Golden Book World Record, represented India in BRICS meet at China 2017, given a title of Young Yoga Ambassador by Government of India. I welcome you. ओम नमस्ते। पहले ही सबकी ओ निकल गई थी। आप जब सभी खाना खाते हैं तो उसका जो लास्ट पीस बच जाता है, यदि तो वो खाना फेवरेट है तो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा नहीं है, फेवरेट नहीं है, तो बहुत भारी हो जाएगा उस ग्रास को खाना। तो मैं लास्ट ग्रास हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट है कि नहीं है। चलिए, बिना किसी फॉर्मेलिटी के ऊपर जाते हुए, थैंक यू सो मच हरियाणा योग आयोग 9 PGI to inviting me here, and a very good evening to the all members present here. जो विषय था वो था रिसर्च ऑन योग, emerging trends in research in योग। एक वाक्य आप सभी के मन में आया होगा, अभी नहीं है तो आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल बाद आएगा, और हर व्यक्ति उस फेज से गुजरा है, हर व्यक्ति एक रिसर्चर है। कोई बता पाएगा ऐसा क्या टॉपिक है, ऐसा क्या विषय है, आप सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा? चलिए, हु एम आई। जो 50 से ऊपर हो गए हैं उनका आ गया होगा ये रिसर्च टाइटल, जो होने वाले हैं उनका आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रिसर्च टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, जो हम लोग अमूमन एक आम व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कि हु एम आई। यहाँ से शुरुआत हम लोग कह सकते हैं कि रिसर्च की होती है, और यहाँ से आते आते आज हम किस तरह से साइंटिफिक रिसर्च पर पहुँच गए हैं, एम्पिरिकल स्टडीज़ पर पहुँच गए हैं, लिटरेरी स्टडीज़ पर पहुँच गए हैं, वहाँ तक हम लोग बात करते हैं। बहुत स्पेसिफिकली बात करेंगे सिर्फ योग के विषय में। 2 कंटेक्स्ट होते हैं व्यक्ति की उम्र जानने के। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो अमूमन जन्म से हम लोग मानते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ। दूसरी होती है बायोलॉजिकल एज, जहाँ पर आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मानते हैं इस बात को? योग बायोलॉजिकल एज पर ज़्यादा काम करती है। क्रोनोलॉजिकल एज के लिए तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो योग बात करता है, योग रिसर्च की बात करते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल एज की बात करें। मुझे देख के कोई कह सकता है मैं 28 साल का हूँ। योग इस विषय पर बात करता है कि आपके भीतर आपकी फंक्शनिंग कैसी है बॉडी की, और उस फंक्शनिंग से आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा है। योग रिसर्च उस विषय पर बात करता है। अगला मैं बिंदु लूँ तो बहुत सारे योग के आजकल डायमेंशंस हो गए हैं। मेजरली आजकल हम लोग जो देख पा रहे हैं वो एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, सोशो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, लिटरेरी रिव्यूज़ हैं। तो शुरुआत तो बहुत बेसिक लेवल से हुई थी। आज हम प्रयास करते हैं कि यदि मैं ताड़ासन कर रहा हूँ तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी, मेरे स्पाइन कैसे स्ट्रेच हो जाएगी, मैं कोई सूर्यभेदी प्राणायाम कर रहा हूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल कैसे कम हो सकता है, मंडूकासन कर रहा हूँ तो गट हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय के साथ साथ शुरुआत में तो हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट था, बहुत सारे ग्रंथ थे जो इन सब चीज़ों के बारे में बताते थे। लेकिन वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर यदि हमें ये सब चीज़ें कम्यूट करनी है, वहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो कागज होने हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं। हमारे तो गृह मंत्री जी ने भी कागज मांग लिए, तो हमारे तो बहुत ज़रूरी है हमें प्रेजेंट करना कि हम एक रिसर्च प्रूवन एस्टेब्लिशमेंट अपनी फील्ड की लेकर आएँ, रिसर्च को लेकर आएँ। एक फिगर मैं बताता हूँ कि 2021 जुलाई में 6025 रिसर्च पेटेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या मैं कहूँ कि भारत देश ने ग्लोबल लेवल पर पेटेंट किए। ये जुलाई 2021 का रेशो है। पबमेड करके एक हमारा जर्नल होता है, इंटरनेशनल जर्नल है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो रिसर्चेज होती हैं वर्ल्ड वाइड वो वहाँ पर पब्लिश होती हैं। तो ये जो 6025 रिसर्चेज हैं ये 2021 की थी, और अभी 3 दिन पहले आप योग का पबमेड पर रिसर्च डालिए, उन्होंने 13,000 योगा थेरेपी के रिसर्चेज क्रॉस कर लिए हैं अभी 3 दिन पहले। तो आप एक ग्राफ देखिए कि जब हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि 2000 से लेकर 2021 तक 21 साल में जो सिर्फ 6000 रिसर्चेज हुई, और अभी लगभग 2 साल के अंदर, 2.5 साल के भीतर भारत देश ने 13,000 रिसर्चेज पूरी कर ली हैं सिर्फ योग थेरेपी को लेकर के। योग हिस्ट्री लिटरेचर रह गया, वो सब अलग हैं, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली थेरेपी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं तो लिटरेरी रिव्यूज़ आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि योग को लाइफस्टाइल में बदलाव करने के लिए बहुत सारी रिसर्चेज आपको मिल जाएंगी।
लेकिन योग जो पुस्तकों में लिखा हुआ था वो भी तो हमारा एंशियंट हमारे पास एक एसेट है, ग्लोबल एसेट है, उसको हम जब तक रिसर्च प्रूवन नहीं करेंगे, साइंटिफिकली प्रूव नहीं करेंगे, तब तक उस ग्रंथ का, उस टेक्स्ट का वो हम उसको वैश्विक स्तर पर नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो इसलिए एक ये फील्ड ऐसा है जो अभी भी थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन आने वाले समय में पीजीआई जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो साइंटिफिक कोलैबोरेटिव स्टडीज़ तो कर रहे हैं, इंटीग्रेटिव अप्रोच तो हमारी है, लेकिन थोड़ा सा लिटरेरी रिव्यूज़ में हम लोग लैग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे साथ हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सुनील जोशी जी जैसे बहुत आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हम लोग जब पढ़ते थे, मैं योग का विद्यार्थी जब रहा था शुरू में, तो इनका नाम हम लोग बड़े आदर से लिया करते थे। हमारे टीचर थे वो मर्म सीख कर आए थे, मर्म चिकित्सा, तो वो जब बताया करते थे कि डॉक्टर सुनील जोशी ऐसे हरिद्वार में एक टीचर थे मेरे, जिन्होंने पूरे देश में जो फाइनेस्ट मर्म चिकित्सक यदि हम किसी को कहेंगे, द फाइनेस्ट योगिक प्रैक्टिशनर एंड द फाइनेस्ट पर्सन इन द योग फ्रेटर्निटी इज डॉक्टर सुनील जोशी जी एंड डॉक्टर जयदीप आर्य जी। तो ऐसे दो बहुत बेहतरीन लोग हमारी फील्ड के हमारे बीच में हैं। आप लोगों को शायद अभी हो सकता है ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं विषय से जुड़ा हूँ, फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मैं ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा बेहतर रूप से जान सकता हूँ कि ये जो लोग हैं। इसी के साथ हमारे डॉक्टर विनोय जी, सर ने, मैं सर का लेक्चर सुन रहा था, तो सर ने कहा कि अभी गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी ने कहा कि डीप अवेकन डीप योगा, कुछ ऐसा उन्होंने कहा, नॉन स्लीप, वो योग निद्रा, ये सब आसन की बात करें, तो ये जो टेक्निकल टर्म्स सर ने कही, योग निद्रा, ये हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है, इसको हमें पेपर पे लाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट सर की उस बात पे करता है कि जो हमारे ग्रंथों में जिस नाम से, जिस टेक्निक से हमारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको हम किस प्रकार पेपर पर ला करके वैश्विक स्तर पर लेकर जाएं। बेसिकली योग को हमने बना दिया है सिंगल योगा पिल फॉर ईच इल। ताड़ासन करें, ताड़ासन से सब कुछ हो जाएगा, मंडूकासन करें, मंडूकासन से सब कुछ हो जाएगा, पवन मुक्त आसन कर रहे हैं उससे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा ना करते हुए आप डिस्प्रिन पेट के दर्द वाले को नहीं दे सकते ना, स्लीपिंग पिल किसी को हाइपर टेंशन है उसको नहीं दे सकते। तो इसीलिए हर मर्ज की हर एक अलग दवा होनी चाहिए। ये ठीक है, उसके बाइफर्केशंस, उसके डिविजन्स अलग अलग हो सकते हैं, परंतु योग को इस विषय में लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम लोग मानते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडीज़ की गई, साइटर, अभी सर ने भी बताया कि साइटर करके एक डॉक्टर आनंद बाल योगी जी का सेंटर है, तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि योग में रिसर्च की कितनी ज़रूरत है, और आप विश्वास नहीं करेंगे 99.7 जो रेशियो आया वो पॉजिटिव आए, और सब लोगों ने कहा कि योग में थेरेपी के साथ साथ में योग लिटरेचर को रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थेरेपी को करने वाले बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, परंतु योग लिटरेचर को लेकर के आगे बढ़ने के लिए अभी 99.7% का रेशियो उन्होंने बताया कि इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डायमेंशंस हम लोग रिसर्च के कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली हमारे मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन सभी डायमेंशंस को जोड़कर हमें रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च हो रही हैं, और क्योंकि आप सभी एक मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं और आज योग के कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो मैं सभी से आशा करता हूं एंड आई विश दैट एवरीबॉडी फ्रॉम यू कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे योग को इंटीग्रेट करके, उसको इंटरकनेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके और योग पर रिसर्च किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज़ का समय नहीं है, समय अपनी गति से भी ज़्यादा तेज भाग रहा है, और आपकी चाय भी इंतज़ार कर रही है। तो कितना अच्छा लगा है चाय, ओहो, टी टाइम। और अब मैं और किसी औपचारिकता के बिना सीधा अपने दो हमारे स्पीकर्स हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर संजीव दोसांझ जी, जो ऑल इंडिया रेडियो को जिन्होंने लीड किया, डीडी न्यूज़ को, डीडी आज, इस पूरे रीजन को यदि वो लीड कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को। आपका जो यहाँ का कार्यक्रम है, इसको तो खैर एक हाइट मिलेगी उनके माध्यम से, पूरे कार्यक्रम की उसकी प्लानिंग, वो कई कंसेप्ट से उसको प्रेजेंट करेंगे, केवल न्यूज़ में ही नहीं, उसके ऊपर हो सकता है आधे घंटे का एक कार्यक्रम जाएगा। तो उसमें आप सब लोगों के चेहरे जाने वाले हैं, तो आप लोग यदि ऐसे मुरझाए हुए लगेंगे तो कितना लगेगा पीजीआई की हमारी जो सिस्टर्स हैं कितनी डल सी, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ही नहीं है इनके, तो थकी हुई सी, ऐसे बस पता नहीं सुबह से किसी ने पीट के बिठाया हुआ हो, ऐसा तो लग रहा है।
तो ऐसा ना लगे, तो अब आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में डॉक्टर संजीव दोसांझ जी, डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन, डीडी न्यूज़ एंड ऑल इंडिया रेडियो। Thank you, Dr. Jaideep Arya, Dr. Sunil Joshi, Dr. Vinoy Singh, Dr. Nancy Sahni, Dr. Vinay, and other members of the faculty, dear students, and all the academicians. Good evening. We are towards the end of the day today, so I am not going to take a lot of time from all of you. But very briefly, I would only say, Yoga kya hai? Yoga is a combination of mind and body. The entire universe today is running on energy, E is equal to mc square. And as we are able to increase our horizon, increase our consciousness, all ailments would be set aside. Now, how to increase this consciousness is yoga. आप कहें मैं बीमार हुआ और अब मैंने आज योग किया, कल मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं. Make it a part of life. You'll say it's difficult, I don't have time, I'm very busy. क्या आप बाकी दिनचर्या भूल जाते हैं? Don't you have your meals? Don't you sleep? If you can do all that, please, for heavens, try and inculcate a little time for yoga, and you'll see the results within years. There is a place where science ends today. Tomorrow that level will be higher, but today, where science ends, intuition begins. And what is intuition? All our rishis and great yogis had given a way of life, or given yoga through that intuition. And slowly, as my dear friend had just said, that we are progressing on the way of research. आज जो हम research कर रहे हैं scientific, कुछ principles उस पे हम base करके उनकी results निकाल रहे हैं. आने वाले समय में, I'm sure, this science will progress further, but to capture the entire universe and the entire consciousness, it'll take years and years, and perhaps it's something which is beyond imagination. So keep progressing, have faith, and make it a way of life, and you will see the results automatically. It's a great pleasure to be talking to all the youngsters. और आप सभी nursing students हैं. आपने देखा होगा कुछ patients, it's a medical institute, कुछ physiological है, कुछ biological है, कुछ neurological है. अगर सभी हमने देख लिया, उसके बाद भी there is the patient doesn't get well. Why? I mean, that X factor, that factor which we do not know today, is captured by yoga. So once you inculcate yoga, all those factors which are beyond science today, you'll be able to have them in your hands. Try that and you will enjoy. So this is one aspect. Now, as a broadcaster, when you speak to audience, when you interact with people, when you see their faces and the smile, that is also a way of interaction, a way of getting a reward. So try that in life. बोल के देखिए किसी के सामने. बहुत बहुत बड़े बड़े लोग जब माइक पे आते हैं तो घबरा जाते हैं. तो आप सभी स्टूडेंट्स भी do that in your life and you'll get that confidence. It's a kind of meditation. So another form of yoga is making your mic your friend. So once you do that, you'll see the results once again. Best of luck, dear students. It was a real pleasure to talk to all of you. And now I will not take much of your time. We have another esteemed speaker, Dr. Joshi. Let's hear a few words of wisdom from him. Thank you. Namaskar. Grateful for your words of wisdom, Dr. Dosanjh, and very grateful you have not too much of time also. On behalf of all the sisters, thankful to all of you. And now I request our chief guest of our valedictory ceremony, डॉक्टर सुनील जोशी जी. मरम चिकित्सा के नाम से उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं.
जिसे आप इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं, ऐसी ही एक हमारी भी एक मेडिसिन है योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के जाने माने विद्वान हैं, और आप वाइस चांसलर हैं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर जयदीप आर्य जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सामने इस अवसर पर उपस्थित हो सकूं, उनका बहुत बहुत हृदय से आभार। हमारे मंच पर मिस्टर संजीव जी जो डायरेक्टर हैं दूरदर्शन के, डॉक्टर विनय मैडम, और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे छात्राएं। इट्स माय प्रिविलेज to share my views regarding the interrelationship between the yoga and the marma. Whenever we are talking about the yogic sciences or the yogic postures, we don't have the scientific explanation of the efficacy of the yogic postures. यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि whenever we are doing any yogic posture, how it is working on our different systems, तो बहुत सारी बातें लोग कहते हैं कि भाई इसको यदि हम खाना खाने के बाद यदि एक ही आसन है वज्रासन करते हैं, तो यदि हम उस पर बैठते हैं तो ये पेट के लिए अच्छा होता है। तो ये कैसे काम करता है, हमारे पास कोई इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदिक सर्जरी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी, और मैंने लगभग 35 साल तक लगभग सर्जरी का काम किया है, एंड ईच एंड एवरी सर्जरी आई हैव परफॉर्म्ड ईच एंड एवरी सर्जरी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हम कैसे इसको जान पाएँ कि कैसे व्हेनेवर वी आर एडॉप्टिंग एनी पोस्चर कैसे काम करती है, एंड स्पेशली इन रिलेशन टू द गट जो हमारा डिजीजेज है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू ट्रिक्स जस्ट यू कैन आइडेंटिफाई, और उसको आज समझ सकते हैं कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी मैनेजमेंट। जैसे अभी जयदीप आर्य जी ने कहा कि कैसे हाउ वी आर मैनेजिंग द इमरजेंसीज, तो हम मानते हैं कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस में इमरजेंसी का ट्रीटमेंट होता है। यही कहा जाता है कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस से ही इमरजेंसी का मैनेजमेंट होता है, जबकि जो वैदिक मेडिकल साइंसेज है उनसे इमरजेंसी मैनेज नहीं होती। तो मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी कहाँ होती है? खेत में होती है, खलियान में होती है, घर में होती है, फैक्ट्री में होती है। Whenever we are coming to the hospital, just we are managing only the symptoms of the post-emergency complications. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Being a student of the nursing, जब भी किसी को हार्ट अटैक होगा तो कहाँ पे होगा? अस्पताल में नहीं होगा। कहाँ होगा? फैक्ट्री में होगा, कहीं दूर जगह होगा, 3 घंटे बाद आपके पास आएगा। या ब्रेन स्ट्रोक होगा या कोई भी इमरजेंसी होगी तो ही इज कमिंग टू द हॉस्पिटल आफ्टर टाइम। गोल्डन हो सकता है कि गोल्डन पीरियड के बाद भी पेशेंट इज कमिंग टू यू एंड जस्ट यू आर मैनेजिंग the complications of that particular emergency. But if you are knowing the actual yogic postures or the जो Vedic essence of the Vedic medical science in terms of the marma therapy, definitely just you can help a lot during the emergency. देखिए इमरजेंसी इसको कहते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट, कि जब यदि कहीं आग लग जाती है और वो आग से पूरा का पूरा घर जल जाता है, थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है और हम उसको आग को बुझा लेते हैं, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं है। इमरजेंसी मैनेजमेंट वो होता है कि यदि इमरजेंसी हुई, इंस्टेंट आपने उसको बुझा दिया और उसके बाद कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ या उसका कोई पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, तो वो हम इमरजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जस्ट यू कैन हेल्प ए लॉट विद द एसेंस ऑफ दीज मेडिकल साइंसेज, जस्ट वी आर नोइंग एज द वैदिक मेडिकल साइंसेज। तो आपने देखा होगा कि UVWXYZ होता है ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी V कैसे आता है? पहले आता है, W बाद में आता है। तो वैदिक मेडिकल साइंसेज पहले आती हैं और वेस्टर्न मेडिकल साइंसेज पीछे आती हैं, बट वी हैव टू नो द एसेंस ऑफ दीज मेडिकल साइंसेज। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है। जस्ट एक हम लोग कहते हैं कि ये हर व्यक्ति को आना चाहिए, स्पेशली फॉर आवर सेल्फ वी हैव टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मर्मा पॉइंट्स, क्योंकि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्मा साइंस, इट इज़ द मर्मा साइंस एंड द योगिक साइंस आर द 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। जब भी हम किसी मर्म चिकित्सा की बात करते हैं या यौगिक की चिकित्सा की बात करते हैं, तो एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, कि जब भी कोई चीज़ हम लोग कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वेन एवर वी आर टॉकिंग कि भाई आपको यौगिक पोस्चर्स करने, तो ये है मर कर के स्वर्ग ऊपर में जाना। यदि आपको स्वर्ग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको मरना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको बिना मरे स्वर्ग जाना है तो
आपको उसका कोई दूसरा आपके पास उपाय होना चाहिए। तो जब भी हम किसी को मर्म की बात करते हैं कि मर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जैसे अभी बहन जी कर रही थी, ये यौगिक पोस्चर्स कर रही थी, यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पाता उसके बेनिफिट को हम कैसे दे सकते हैं, ये हर योग के विद्यार्थी को आना चाहिए कि ये यदि कोई वज्रासन नहीं लगा सकता, इफ देयर इज सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द नी जॉइंट, तो क्या होगा, पेशेंट कैन नॉट सिट इन द वज्रासन, बट व्हेन ही नोज कि whenever we are sitting in the Vajrasan, what point is going to be stimulated, directly just we can stimulate the point to give the stimulation to the other person who is not able to do this asan, उसको सीधे हम stimulate कर सकते हैं। तो ऐसी विधा को यदि आप जान सकते हैं तो बहुत सरल है। जो मैं इसको conclude करूंगा in relation to the gut, ये आप लोग जानेंगे तो आप अपने लिए पहले इस्तेमाल करेंगे, then you are getting the benefit of it। तो हम आपको सिर्फ गट मैनेजमेंट की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मर्मा साइंस। जस्ट यू कैन पुट योर थंब ओवर दिस एक्सटर्नल नोच, करके देख लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग दिखा रहा हूँ। गट आपके क्या करना, एक्सटर्नल नोच पे आपने थंब को रखा, एंड देन यू कैन सी द कहाँ पे पहुंच रहा है, जीफ स्टर्नम पे। आप देख रहे हैं जीफ स्टर्नम पे फिर थंब रखेंगे तो कहाँ जाएगा, ये अम्बलाइकस पे जाएगा। मोटे आदमी ट्राई ना करें इस पे, ठीक है। अम्बलाइकस, मोटे आदमियों की 2-3-4 उंगली ऊपर रह जाए तो अम्बलाइकस पे जाएगा, और अम्बलाइकस पे रखेंगे थंब तो कहाँ जाएगा, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाएगा। तो जस्ट वी कैन डिवाइड द होल गट इनटू द 3 पार्ट्स। जो डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा है, और ये डायफ्राम से और अम्बलाइकस के नीचे का हिस्सा, और उसके नीचे के हिस्से को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज ऑल दी सिम्टम्स। यदि अपर में होगा तो क्या, GERD हो सकता है, इसोफेजाइटिस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनके लिए क्या मैनेजमेंट है, छोटे छोटे से पॉइंट से यदि आप जाने तो अपने लिए करके देखेंगे तो देन यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। और आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी मरीज आपके पास आता है, जब तक डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी हो रही है, इंस्टेंटली जस्ट यू कैन गिव द स्टिमुलेशन टू दिस पॉइंट एंड यू आर गेटिंग इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ इट। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इतना हिस्सा है, इसके लिए क्या करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कोहनी को लेते हैं, कोहनी के ऊपर के 4 हिस्से, 4 उंगली ऊपर हिस्से को आप ऐसे दबाएंगे तो आपको यदि GERD की प्रॉब्लम है तो आप अपने में करके देखिए, तो मैं समझता हूँ कि विद इन ए वीक आपको इन दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी चीज़ और बहुत है कि आप यदि ये ओलिक्रेनिन प्रोसेस पे अंगूठा रखेंगे, ओलिक्रेनिन प्रोसेस पे अंगूठा रखेंगे, ये रिस्ट पे, ये कि जो हमारी क्रीज है, क्रीज पे उंगली रखेंगे तो बीच की उंगली जहाँ पे जाती है, इसको हम कूरपर मर्म कहते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो इट इज़ गवर्निंग द ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। तो चाहे हमारा डिस्लिपिडीमिया हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे यूरिसीमिया, कुछ भी हो, उन सभी के लिए ये जो दो पॉइंट होते हैं जिसको हम कूरपर कहते हैं, इसको यदि आप ऐसे ऐसे दबाते हैं तो डायबिटीज़ ठीक होती है, 100% ठीक होती है, डिस्लिपिडीमिया ठीक होता है, और बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। इसको रेगुलर करने की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ विद इन 15 डेज और 30 डेज में आप इसके रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट 4 फिंगर्स बिलो दिस, 4 उंगली इससे नीचे, ये जितने भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट है, जो हमारा यूट्रस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी रेक्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो ठीक होती हैं। तो 15-20 बार दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इंस्टेंटली जस्ट यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स। 40-50 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं जिनको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, और जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो जस्ट यू कैन सी कि रिमेनिंग सम रेजिडुअल यूरिन इज देयर, वहीं पे खड़े रहिए और उसी समय इसको 15-20 बार ऐसे दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, और देखेंगे इंस्टेंटली जस्ट यू आर पासिंग 20-30 ml ऑफ यूरिन इंस्टेंटली। तो ये इतनी तेज काम करने वाली चीज़ें, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ जो इमरजेंसी है। ये प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। एक बात जो डॉक्टर विनय जी ने कही थी कि जो योग के शब्द हैं या वैदिक साइंसेस के टर्म्स हैं, उनको हमें उसी रूप में उपयोग करना चाहिए। एंड यू कैन नॉट ट्रांसलेट इन ए एक्चुअल वे। आपको मैं एक शब्द देता हूं जिसमें हम लोग कहते हैं कि आंटी, आंटी होता है शब्द, आंटी किसको कहते हैं? चाची को, ताई को, मौसी को, बुआ को, सबको हम आंटी कहते हैं ना। लेकिन उससे कुछ पता चल रहा है? व्हेनेवर वी आर, हम यदि चाची कहते हैं तो इसका मतलब क्या, हमारे पिता के छोटे भाई की पत्नी को हम चाची कहते हैं, पिता के भाई की, बड़े भाई की पत्नी को हम क्या कहते हैं? ताई कहते हैं। माता की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। पिता की बहन को क्या कहते हैं? और उसमें क्या कहते हैं हम, इसमें सब में सबको क्या कह रहे हैं? पड़ोस की भी आंटी। तो हमारे जितने भी वैदिक शब्द हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर विनय जी ने जब ये बताया कि जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैदिक लिटरेचर और एनी
term used in the yogic practices or any Vedic sciences, we have to take the same term which is written in our text. मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जयदीप जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of wisdom. Now we'll start with the felicitation ceremony. Now I would like to request Dr. Jaydeep Arya ji, Chairman of Haryana YOG AAYOG, and Dr. Sukhpal Kaur ji to please felicitate our Honorable Chief Guest. I would request our speakers to please join the dignitaries on the stage. तालियां तो बनती हैं. Round of applause for our chief guest. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर हरीश चंद्र जी को, रजिस्ट्रार हरियाणा योग आयोग, टू फेलिसिटेट मिस्टर संजीव जी, डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़. A round of for our guest of honor, please. Now I would like to request our Honorable Chief Guest to felicitate the speakers. Dr. Aruna ji, Dr. Pramod, Dr. Anupama Vatish, and Dr. Harshit Manav ji. Please join us on the stage. Dr. Anupama ji. Okay. Now Dr. Harshit Manav ji. Now I would like to request Dr. Harish Chandra ji to please say votes of thanks. And I would request all the dignitaries to please be seated. डॉक्टर जसप्रीत जी, आज के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी, वाइस चांसलर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर जी प्रिंसिपल, डॉक्टर ऑल इंडिया रेडियो, मानव जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये सारी की सारी जो कॉन्फ्रेंस है सिर्फ 5 दिन में ही
गृह मंत्री के साथ हमारा 16 मई को एक मीटिंग हुई, उसमें एक प्रस्ताव रखा था कि हम नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस पीजीआई के साथ मिलकर हम करवाएंगे। 16 को मीटिंग हुई और शायद पिछला वीक शायद मैडम प्रिंसिपल मैडम के साथ मीटिंग हुई और आज ये 25 तारीख को आपके सामने ये नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस आपके साथ आयोजित की गई। इसमें 600 से भी ज़्यादा ऑनलाइन जुड़े और 350 से भी ज़्यादा इसमें ऑफलाइन इसमें ज्वाइन किया है। तो बहुत बड़ा आप सभी की इसमें भागीदारी रही। तो सारा का सारा श्रेय वो असंभव चीज़ क्या होती, कोई नहीं होती डिक्शनरी में। डॉक्टर जयदीप जी आदरणीय चेयरमैन हरियाणा योग आयोग ने 5 दिन की मेहनत से ये सारा का सारा ये संभव हो पाया है। आज के जो स्पीकर भी हैं, हमारे रेस्पेक्टेड जो स्पीकर हैं, अनुराग जी रहे हैं, मंजीत जी रहे हैं, डॉक्टर ज्योति आर्य जी, डॉक्टर नैन्सी साहनी जी जो डाइटिशियन पीजीआई से हैं, डॉक्टर विनय सिंह जी, डॉक्टर अतुल जी, हरियाणा जी, अनुपमा बत्तीस जी और अर्शिद मानव जी, प्रमोद जी, अरुण जी, सभी स्पीकरों ने अपने वैल्यूबल अपने स्पीच इन्होंने दिया। नेचुरोपैथी और योग के बारे में एक अलग से टॉपिक जो मैडम प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि जैसे गट के बारे में, जैसे गट फॉर हेल्थ, इसके बारे में कभी बात ही नहीं की जाती थी। जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी मोस्ट प्रो अस्थमा पर है या डायबिटीज़ पे है या फिर उस पर हाइपर टेंशन पर होती थी। ये शायद पहली बार है कि जो इस पर ये कॉन्फ्रेंस इसमें हमारे गट हेल्थ पर इस पर ऑर्गेनाइज की गई। मैं सभी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट जो आज सुबह से बैठे हुए हैं, सभी नर्सिंग का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने पूरा समय देकर आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हरियाणा योग आयोग की ओर से हमारी जो टीम थी, डॉक्टर जसप्रीत कौर जी, इन्होंने रात को 12-1 बजे भी इन्हें जो लेटर टाइप कर रही थी, पूरी की पूरी सोई नहीं 3 दिन से। और उनकी टीम का डॉक्टर जसप्रीत जी, प्रेम प्रकाश जी, प्रियंका जी, निशा जी और हमारे नीरज जी, जो पूरी हरियाणा योग आयोग की टीम, इसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और नर्सिंग की ओर से जो टीम है, नीना, डॉक्टर नीना जी, भीम सिंह जी, इनका भी हमारा विशेष सहयोग रहा, इसका भी मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूं। और योगा डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़ से जो डॉक्टर अक्षय कुमार जी हैं, उनकी भी टीम, डॉक्टर मोनिका जी, डॉक्टर अतुल जी का भी धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर अक्षय जी हैं, किसी वजह से नहीं आ पाए, उनकी सर्जरी हुई है तो उन्होंने भी आना था, तो उनका बहुत बड़ा इसे सहयोग रहा है इसको सफल बनाने में। जी जी। हरियाणा योग आयोग को मात्र बने हुए 3-3.5 ही साल हुए हैं। हरियाणा योग आयोग ने मात्र 3 साल में डॉक्टर जयदीप आर्य जी चेयरमैन हरियाणा योग आयोग के नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग में कैरिकुलम में है, योग को शामिल करवाया एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के विषय में। भारत में पहला राज्य बना जो पहली क्लास से लेकर 10 तक इसको योग को हमने शामिल इसमें करवाया है। आदरणीय चेयरमैन साहब के ही प्रयासों से हरियाणा में 1000 से भी ज़्यादा योग सहायकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा सैलरी उनको मिली है। तो इनको प्रयास से 1000 योग सहायकों की नियुक्ति इसमें हो पाई है। अभी हरियाणा योग आयोग IDY की तैयारी के लिए सभी व्यायामशालाओं में 1 मई से ले भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और हमने ITBP के साथ मिलकर भी हमारे ट्रेनिंग जो TOT वो भी अभी चल रही है। तो हरियाणा योग आयोग के काफ़ी इसको योग को प्रचार प्रसार के लिए आदरणीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व में दिन रात एक करके हम आगे योग को आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी जो भी इस ऑनलाइन ऑफलाइन भाग लिया, सभी स्टूडेंट का, सभी ऑर्गेनाइजेशन का, सभी का मैं हरियाणा योग आयोग की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट को डॉक्टर जयदीप आर्य जी के मोमेंटो बैठ करें। आदरणीय चेयरमैन साहब डॉक्टर जयदीप आर्य। हमारे इस पूरे आयोजन में हमारी 9 की टीम का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं जो 9 के हमारी बहन वीना जी, भीम जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर आएँ। मैं उनके लिए कह रहा था कि उनका हमें अभिनंदन करना है। प्लीज़ प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन द डायस। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैडम लाफ्टर मैडम, नाम ही रख दिया आपका लाफ्टर मैडम, प्लीज ज्वाइन अस। बहुत अच्छा आपने, प्लीज
पीएचडी मैडम है और बहुत देखो क्या है सहजता और सरलता के साथ, सौम्यता के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी इन लेक्चरर्स का, प्रोफेसर्स का, जो अपने कॉलेज को एक अलग स्टेज पर ले जाने का इनका बड़ा योगदान रहा है। मैडम सुखपाल जी की ये मैंने देखा कि पूरी एंथुसियास्ट टीम है, दिन रात इन्होंने भी, जैसे हमारी टीम ने मेहनत की वैसे इन्होंने भी मेहनत की। ऐसे ही हरियाणा योग आयोग की टीम भी पूरे मंच पर आ जाए एक साथ एक ज्वाइंट फोटो के लिए, और इनको एक मोमेंटो भी भेंट करेंगे जी। और आज हमारे साथ डॉक्टर अक्षय जी की टीम, जो योगा डिपार्टमेंट पीजीआई है, वो ये अजय प्लीज मोमेंटो। सौरभ जी और मीनाक्षी जी, मोनिका जी, डॉक्टर अक्षय जी की टीम से इन्होंने भी दिन रात मेहनत की है इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में। अच्छा अच्छा, वो इनको देख के एकदम बेटा मोमेंटो एक ही रहेगा, आप लोगों को बस पूरी टीम को मोमेंटो मिल रहा है। ले आओ बेटा जल्दी प्लीज, थोड़ा तेरी तक मोमेंटो जाओ, पकड़ा दो। आप क्यों यहाँ खड़े, बताओ। आओ जल्दी। ईश आर्य जी पतंजलि योगपीठ से आएंगे, जल्दी आ जाइए आइए। और भारतीय योग संस्थान के जो पतंजलि की सारी टीम भी आ जाए। सुधा जी, सारे बच्चों के साथ एक ज्वाइंट फोटो हमारी होनी है, आपके साथ हमें एक फोटो लेनी है। आर यू रेडी? तो आप आगे खड़े होंगे, हम एक ज्वाइंट फोटो लेंगे। कल्याण जी रह गए, यू विल ज्वाइन विद द हरियाणा योग आयोग टीम। अब लोग आप यहीं खड़े रहिए, केवल आप आगे आ जाइए और सुखपाल मैडम आगे आ जाएंगे, दोसांझ जी आगे आ जाएं। एक फोन, जल्दी आओ फट फास्ट। ईश जी जल्दी आ जाइए आप आगे, एक मोमेंटो दीजिए। आप इधर आ जाओ ना, आप हरीश जी इधर आ जाओ, हरीश जी इधर जरा चलो, आप भी हाथ चलो। धन्यवाद। अब मैं भारतीय योग संस्थान को आमंत्रित करता हूँ। आप पतंजलि की टीम, भारतीय योग संस्थान। देखिए वो, आप ये ना सोचिए कि मोमेंटोस कम है, हृदय बड़ा है। एक बार जोरदार अभिनंदन भारतीय योग संस्थान का भी। ये लोग वो लोग हैं, पतंजलि की टीम, भारतीय योग संस्थान, ये 3 बजे 4 बजे अपनी गाड़ी लेकर, अपना पैसे, अपने पेट्रोल, अपना डीजल लेकर, विदाउट टेकिंग इवन ए सिंगल पेनी ऑफ मनी, दे आर सर्विंग द पीपल एट लार्ज। ये बहुत बड़ी बात है इनका। और अब हरियाणा योग आयोग की टीम को हम आमंत्रित करते हैं, हमारे सभी साथी जिन्होंने बहुत मेहनत की है। अब आपको जरा बैक हैंड पे काम करती है, जरा पता चले आपको कि क्या कौन सी टीम है। आप दोसांझ जी जरा इधर आ जाओ पास में, बाकी सब लोग आगे हो जाओ ना, उस तरफ आगे हो जाओ। हाँ, हरियाणा योग आयोग से हमारे सदस्य भाई नरेश पूनिया जी, और हमारे कई सदस्य आज नहीं आ पाए, लगभग 10 सदस्य हैं हमारे।
थोड़ा सा नजदीक आ जाए। दो कदम आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। मोमेंटो दीजिए भाई, मोमेंटो दो। मेरे वाला मोमेंटो दो ना। एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। आप स्थान लेंगे नीचे। भारत विकास परिषद, भारतीय योग संस्थान भी नीचे जाएंगे, हरियाणा योग आयोग के सभी सदस्य भी नीचे जाएंगे और 9 के बाकी मेंबर्स भी नीचे जाएंगे। हाँ, और एक ग्रुप फोटो के लिए हम जब बुलाएं उससे पहले हम चाहते हैं कि योग 2 मिनट की हो जाए। आइए जल्दी जल्दी। इनके वॉलंटियर्स प्लीज। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है जी, नर्सिंग एजुकेशन। आप आगे आ जाओ। मैडम प्रिंसिपल हैं सुखपाल जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैडम डॉक्टर सुखपाल कौर। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियां रुके, यदि खड़े होकर अभिनंदन कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हमारी बहन के लिए और हमारी सारी नर्सिंग टीम के लिए। ये आपका सम्मान है, ये सुखपाल जी का सम्मान तो है ही, एक इंस्टीट्यूट का सम्मान है। सबसे रिकॉर्डिंग करिए और अपने सोशल मीडिया पे डालिएगा प्लीज। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो
मुझे और होने। Thank you, Manisha ji, for awesome performance. Now I will request everyone to please stand up for the national anthem. यमुना गंगा उछल छलती तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए